यार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सोच रहा हूँ। My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is क्या worse than not carrying one at all. बहुत ज़्यादा फ्लैट दिख रहा है यहाँ। ऐसा करने का आइडिया किसका था? किसने बोला ऐसा करने? हाँ अभी थोड़ा बेटर दिख रहा है, पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में, मतलब ऐसे में मेरे को अच्छा ठीक ही लग रहा है। ऊपर का ब्लैक दिख रहा है क्या उसमें? चलो यार माइक चालू है, गेम का साउंड आ रहा है, मेरे को बजिंग साउंड नहीं आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। Oh, um, कमीना वाले साउंड से पूरा दिमाग खराब हो जाता है। ओके गेंशन 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 अलग सा दिख रहा है थोड़ा। चल I छोड़, do इसको love पलटाता हूँ। Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? HDM I do. निकल जा भाई तू ऐसे। ना ना मैं लाइव गया हूँ। नोटिफिकेशन My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. ना ना Oh, oh, um, mm. इसमें क्या लॉगिन लगे रहने का पैसा I लगता है क्या? really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. I do love Spina di Rosula's ओके logo. चल ठीक है। It was designed by my mother. Have you noticed? मैं शायद तक It's shaped like a... मेंटेनेंस शेड्यूल के बाद लिया नहीं था। मेरे को ये मिला है भाई, मेरे को ये मिला है तो मतलब बहुत टाइम हो गया है सच में। अगर ये मिल रहा है तो बहुत टाइम हो चुका है। आज 13 दिन गिनेगा वो। डबल एक्सपी वगैरह मिलेगा, चल ठीक है कुछ तो अच्छा है। नया मैप का है, नया एरिया है क्या? क्या क्या है भाई?
थोड़ा अलग दिख रहा है मेरे को ना, सब सही है। मेरी आंखें खराब है ना। अच्छा है मैप का एरिया कुछ नहीं आया है। नाइन डेज 1 डे रिमेनिंग। ये क्या है? फ्री कैरेक्टर, गिव हर हैप्पीनेस। 1 डे रिमेनिंग है। एक और बार देखते हैं, रुक जा। फ्री कैरेक्टर वाले इसमें मिल जाएगा। ना विश इवेंट कब आया है भाई? 13 दिन मतलब अभी के आसपास ही आया होगा। इसके पहले कौन सा कैरेक्टर था? क्या करना है? कितने प्राइमोस है मेरे पास? 44,000। कम है, कम है। पागल समझा है, कम नहीं है। चल यार इवेंट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। इवेंट से स्टार्ट करते हैं और इवेंट ही करेंगे ये वाले और इसमें और दूसरे वाले में। क्या नया इवेंट आया देखते हैं। पाइमॉन। पाइमॉन की आवाज। भाई मेरा सुमेरो एक्सप्लोर कर देगा भाई। भाई मेरा कुछ नहीं हुआ है, इतने टाइम से नहीं खेला है, मैं कैसे एक्सप्लोर कर देगा तेरा? यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करके मांगूंगा देखो, मतलब मेरे को एक्सप्लोर तू कर दे, मैं ये बोलना चाहता हूँ। Hey there! What are you guys talking about? नथिंग। थोड़ा ये साउंड का इशू ले रहा, पता है? कैसा है भाई गिरमादा? कैसा चल रहा है? क्या कर रहा है? वो सब छोड़, तू बता तू कैसा है? हेलो नरेश भाई, कैसा है? रुक जा यार, इसका आवाज का क्या मेरे ठोकेगा क्या कोई ना मेरे को ये? Yep, festivals are always the to come back and hang out with all of our friends. ना। Guess we came at the perfect time. A grand हेलो नरेश, celebration कैसा है calls ब्रो? for even more. Like, what were you gossiping about? डबल क्या? ये इसका हो गया टाइम, पता है क्या? विदाउट साउंड खेलना पड़ेगा मेरे को। विदाउट साउंड एनालॉग से शिफ्ट कर देता हूँ, हो जाएगा। Keep talking like this until the festival ends. So what exactly are you? मैं ठीक हूँ यार, सही चल रहा है। सही चल रहा है, अभी तक तो चल रहा है। उम्मीद है आगे भी चलता रहेगा। Yeah, put us to work. Now that we're कंट्रोल no trouble at all. We're more than happy to help.
कंट्रोलर से आवाज क्यों नहीं आ रहा भाई मेरा? This is gonna be the best Oh, right. Paimon almost forgot. Gotta keep it a secret. Ta-na-na-na-na. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. अब भी चल रहा है। मेरा आवन अड़ गया। Can I make a wish to lessen your personality for some? इसको कितना टाइम है? घोड़ी चैलेंज कितना है? ये कब आया? 25 दिन बचे शायद, तक एक मैंने मिस किया होगा। एक अभी आया ना। तूने कौन सा किया है? अभी कुछ आ रहा है क्या इसमें नरेश, तेरे को कुछ पता है? हेलो प्रतीक, कैसा है ब्रो? क्या चल रहा है? मैं इवेंट ट्राई कर रहा हूँ, इवेंट कर रहा हूँ मैं, बहुत दिन से कुछ किया नहीं है, लॉगिन नहीं मारा है। बस कैरेक्टर निकालते हैं थोड़े, जितने प्राइमोस निकलते उतने मतलब पूरा ही निकालना पड़ेगा। ये वाला वेपन अच्छा है क्या नाविया पे? कौन सा जो अभी इवेंट पे चल रहा है? मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ? मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। नाविया का गई अपनी, बहुत दिन बाद दिख रही है। सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट। मेरे को लगा मैं दूसरा वाला यूज कर रहा था ये वाला यूज कर रहा था पहले, लेकिन फिर बाद में मैंने इस पे यूज किया है। अच्छा है वाला, मैं ये यूज करता हूँ। मैं उसके वेपन के लिए विश नहीं करूँगा, मतलब उतना मेरे को लगता नहीं है लेना चाहिए उसका वेपन के लिए। आफ्टर मंथ्स, एक महीना। हाँ भाई, कैसा है वो, कैसा है? यार कैरेक्टर ट्रायल देखा नहीं यार मैंने, कैसा है? मेरे को देखना है एक बार, वो कैरेक्टर का देखा ही नहीं कैसा था, निकल गया वो। स्केट्स है उसके पास, रोलर स्केट्स है। अच्छा बस थोड़े टाइम के लिए, जब तक स्किल रहेगा इफेक्ट में, शायद तक उसका वो रहेगा, मतलब एक और चार्ज ऐड होगा उसमें, है कि नहीं? मतलब सब में जैसा रहता है ना। मेरे को लगा ऐसा होगा। बाय मैक्सिम। किसी ने विश किया है कैरेक्टर के लिए? तुम में से किसी ने विश किया है क्या? कुछ अच्छा कैरेक्टर मिस कर दिया मैंने। पछताना चाहिए कि ठीक है चल रहा है? मस्त कैरेक्टर। पिटने पिटाने वाला इवेंट नहीं करना है।
मेरे को सिर्फ 2 अकाउंट में इवेंट करना है, सिर्फ 2 अकाउंट में। एक दिन बचा है, 11 घंटे। आज हो सकता है अगर अच्छा करे और करे तो। ये वाला कहाँ पे है? ये अंकल के पास भी एक इवेंट होगा, देख के लग रहा है। इजी से स्टार्ट करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं। हेलो दर्शन भाई, कैसा है? यस मैं यार 60 बहुत पहले हो चुका है यार, यार 60 में। नेवलेट फुरीना काजुआ चालन पार देती है ये वाली टीम। अच्छा ये वाली टीम पार देती है। अच्छा 58 किस में था? वो मेरा सेकंड आईडी था। भाई उसमें भी लॉगिन नहीं मारा यार। पता है मैंने देख इतने टाइम से लॉगिन नहीं मारा, इससे मेरे को ये वेलकम बोनस दिया है अभी। फर्स्ट टाइम वाले अकाउंट में कभी हुआ है यार, ये अकाउंट में फर्स्ट टाइम हुआ है। कितने दिन के लिए मेरे को, मतलब मोर एक्सपी। अच्छा डबल ड्रॉप सिर्फ 3 जगह, 3 इसमें रहेगा क्या? और ये पॉपुलर रिसेंटली क्या है? वुथरिंग वेव्स खेलूं भाई? बस गेंशिन अपने अंदर ही गेम डाउनलोड करने के बाद हमको और डाउनलोड करने लगाता है और उसमें हमको ट्रेलर दिखाता है जो यूट्यूब में फिर से दिखाता है। ऐसे ही कुछ है वो। न्यूवेलेट आने वाला है नेक्स्ट पैच में, तेरे को गाइड कर दूं। वुथरिंग वेव्स मैंने उसको भी अपडेट करना है मेरे पास, लेकिन अपडेटेड नहीं है। उस पर भी नहीं किया मेरे कुछ। मेरे को तो थोड़ी देर एल्डन खेलने की इच्छा थी यार। एल्डन खेलने में बहुत मजा आता है, लेकिन गेंशिन खेलना था। गेंशिन का इवेंट था, मैंने देखा। खेलते अभी। क्या करना है इसमें? ट्यूटोरियल नहीं पढ़ते हैं। ये तुमको वॉचिंग कितने की दिख रही है भाई दर्शन? कितने की वॉचिंग दिख रही है? मेरे इसमें ग्लिच है कि सबके इसमें ग्लिच है? इन्वर्टेड आइटम्स 1 मिल गया मेरे को चेयर। मेरे को नहीं पता भाई कैसे है ये, मैंने खुद ने देखा है। चाहे तक वो बाद में हो जाएगा। मेरे को लगा सिर्फ मेरे को यहाँ पे वो ग्लिच दिख रहा है। अरे POZ क्या पोज क्या? मैंने कुछ नहीं किया है भाई, मैंने कहीं आके कुछ खरीदा नहीं है, पहले बता रहा हूँ। इतना पैसा नहीं है मेरे पास, मैं गेम खरीद लूंगा सच्चा। अच्छा प्लीज करता हूँ भाई, वुथरिंग में करता हूँ तेरी मदद। अपडेट में डालता हूँ मैं भाई, थोड़ा रुक जा 2 मिनट। अपडेट में डालता हूँ फिर करते हैं। Bro, I lost 50-50 before new pity system. I have pity 86 right now. It's guaranteed to get main character. हाँ मिल जाएगा, मेन मिल जाएगा भाई, आराम से मिल जाएगा। सुनीता मिल जाएगा भाई। बिग फैन। हाँ आदि भाई, मतलब मैं वुथरिंग वेव्स खेलता हूँ ना, फिर करता हूँ तेरी बात। मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ इतने में, मैं करूँगा लेकिन। लोडिंग आइटम्स ऐसा इवेंट दो यार, गेंशिन में ऐसे इवेंट दो मेरे को। अभी मेरे को 2 इसमें करना है, तो ऐसे इवेंट जल्दी हो जाएगा। एक और आइटम का है, और कुछ उड़ रहा है यहाँ पे। हवे में क्या है? हवे में क्या है? ये हवे। वेल थैंक्स, नो प्रॉब्लम भाई। सिर्फ गेंशिन ही खेलता है और कुछ नहीं खेलता इसके अलावा? अरे हाँ सॉरी यार, मैं आदत है यार मेरे को भाई बोलने की आदत है किसको भी। सॉरी बहन, माफ कर। माफ करना।
ये वाला सामने था, मेरे को नहीं दिखा। आँख तूने स्टार्ट, मेरा फाइनली इंटर्न स्टार्ट हो गया। कहाँ पे, मतलब क्या कर रहे हैं? सही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन शादी। अनयूजुअल मॉन्स्टर्स, ये पहला बंदा है यहाँ पे, ये होना नहीं चाहिए आज तक। ये मॉन्स्टर है। ए कुछ स्टार्ट तो हुआ है कम से कम, फिर बाद में अच्छे से हो जाएगा छोटे छोटे से। Monsters, monsters, where are you? कहाँ पे है कमीने, बताना। बता नहीं रहा, ढूंढने बोलता हूँ। ये आंटी है। प्रोफाइल फोटो की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? वो एक मानवा है, उसका नाम है क्या बोलते हैं, कल्टिवेटिंग सिंस 1000 years समथिंग ऐसा कुछ है। और दूसरा भी, उसका दूसरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ और है, क्या नाम है यार, एकदम अच्छा वाला नाम है उसका। लेकिन नॉर्मली ऐसे उसको ज़्यादातर उसको प्रेफर किया जाता है, मतलब प्रेफर मतलब पायरेसी साइट में वो बोला जाता है। तो वहाँ पे एक था, मतलब वो आर्ट उसका था, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट कॉपी नहीं किया, मैंने खुद का बनाने का ट्राई किया पेंट में, और जैसा वो बना है वैसा मैंने दिखाया है। ए तू था, तू अभी थी आता अभी तक। मानवा वगैरह कोई पढ़ता है? ये वो पेंट में ट्राई किया, लेकिन पेंट के हिसाब से अच्छा किया है मैंने, मेरे को पता है मैंने अच्छा किया है, कोई कुछ भी बोले। और कल्टीवेशन नॉवेल्स पढ़ना मजा आती है भाई, सच में मजा आती है। हर एक नहीं, मतलब जो है पढ़ने लायक अच्छी वो पढ़ना चाहिए। और वाली कॉमेडी है सच में, याली सच में कॉमेडी है। मतलब मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी उससे जब मैंने फर्स्ट टाइम उसका टाइटल पढ़ के लिया था, लेकिन कुछ था नहीं तो मैंने बोला चल देखते हैं। और भाई वो अच्छी है, कॉमेडी बहुत है उसका। एमसी मस्त मस्त है यार। अच्छा पता है क्या, पढ़ा है, ओके। अच्छा बस दिखने में क्यूट हो गया, मेरे को लगा कि पढ़ा है, ओके, मतलब वो कॉमिक पढ़ी है। इसलिए क्यूट कहाँ है भाई? भाई सामने बता दे। एक और बचा है क्या? एक सामने। न्यूबिलिटी या नाहिडा क्या निकालूं भाई? नाहिडा निकाल ले, बहुत इसमें काम आएंगी। नाहिडा नहीं है तो नाहिडा जब से आई तब से गेम नहीं ले तो बहुत इजी हो गया था, अगर पहले बता रहा तो। मैंने न्यूबिलिटी का यूज नहीं किया अभी तक वैसे भी, और मैं शायद तक ही न्यूबिलिटी निकालूंगा। आर्कॉन कब आ रहा है पता है कुछ? आर्कॉन कब आ रहा है कुछ पता चला है? Things have been looking really rough for Natlan lately. There are more and more commissions from the Adventurers Guild, and they're all related to the Abyss. Just waiting around won't do us any good. Let's go and see if there's anything we can do to help. 5.3 हेलो चार्टविक ब्रो, कैसा है?
बस सब कुछ कर दिया गेम में 36 ट्राई नहीं हो रहा है। हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा। उतना इश्यू नहीं है उसका, मतलब उतना लोड मत ले, हो जाएगा। क्या ढूंढना है यार? मेरे को लगा उसमें से कोई है क्या। उसी का तो वेट है, मेरा भी उसका ही वेट है, मैं उस पर डायरेक्ट विश करूंगा। और मैं लगता नहीं शायद तक किसी और पे विश करूंगा अभी, फिलहाल तो है नहीं प्लान मेरा। उसके लिए सेव हो गया, विथ वेपन निकालेंगे यार, आर्ली की नो सामान। 5.1 के सेकंड पेज चल रहा है, 5.1 का सेकंड पेज चल रहा है। सच में मेरे को पता नहीं था, थैंक यू बताने के लिए आदि भाई, सच में मेरे को नहीं पता था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है भाई वो लैंप लाइट। आई एम गोना सेव फॉर न्यूलेट एंड मोविका। 5.2 में फर्स्ट फेज में टास्का एंड लेनी, देन सेकंड फेज में न्यूलेट एंड जोंगली। सारे रिवॉर्ड एक साथ लेने में अच्छा लगता है। गेंशिन के अलावा कोई और दूसरा गेम खेलने का प्लान नहीं है तुम लोगों का भाई? बस पूछ रहा हूँ। अभी सेल चालू है, बहुत कुछ गेम्स फ्री मिलेंगे या फिर सस्ते मिलेंगे। फ्री का पता नहीं, सस्ते तो पक्का मिलेगा, वाला फ्री कुछ नहीं देता। हाँ वैसे सस्ते से याद है, मेरे को एक गेम बहुत सस्ता मिला है, कौन सा, हॉगवर्ट लेगेसी, मेरे को बहुत कम रेट में मिला है तो मैंने ले लिया भाई। फाइव 3 में आर्कॉन जो भी है वो भी, एंड सेकंड पेज में आली की नो एंड शेना क्लाउड टेना। ओके सिर्फ गेंशिन, सुनीता सिर्फ गेंशिन और कोई नहीं उसके अलावा? आदि भाई सिर्फ गेंशिन? तो नहीं, तेरा wuthering वेव्स और दूसरा है। रेड डेड रिडेम्पशन तो फ्री में मिला इसलिए मैं लिया नहीं। ये हॉगवर्ट्स लेगेसी मेरे को 5000 का है भाई, ड्यूलक्स एडिशन वो 5000 का अभी भी दे रहा है, लेकिन ड्यूलक्स एडिशन है ना 1500 में दे रहा है। मैंने ले लिया, एक दिन का ऑफर था उस दिन हैलोवीन का, ले लिया मैंने, हाथ मार लिया भाई। मैंने बोला कब नहीं मिले। पीटी रिफ्रेश कब होती है? जब कैरेक्टर मिल जाता है। 5 स्टार। नेक्स्ट काउंटर तब उसके बाद से ही चालू हो जाता है। फ्री? हाँ फ्री, मतलब प्ले स्टेशन में फ्री मिलता है ना। मैं प्ले स्टेशन में खेलता हूँ, अगर पता नहीं होगा तो। देखो अब तो चैट्स भी इग्नोर, वे चैट इग्नोर नहीं, रुक मैंने गलती से किरण नहीं देखा, सॉरी भाई। कैसा है किरण भाई, बहुत दिन बाद मिला है। जेल से कब छूटे? जेल के और बाकी कैदियों का ज्यादा तकलीफ नहीं थी। ना भाई मैं चैट्स इग्नोर नहीं किया, मैंने गलती से मिस कर दिया किरण भाई, नहीं करता वो। लाइक 3-4 months विदाउट गेटिंग 5 स्टार। नहीं होता है ऐसा, कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारा लास्ट पे कैरेक्टर पे रहता है, काउंट रहता है, ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है। ऐसा ट्राई किया नहीं है मैंने, लेकिन मेरे को नहीं लगता होता होगा। क्या रॉन्ग बोल दिया? पुराने लोग के साथ ये होता है, पुराने लोग के साथ ये होता है, नहीं होता है भाई, किसके साथ नहीं होता है। मेरे को अगर गलती से नहीं दिखता है तो वो मैं गलती से भूल जाता हूँ देखना। कीड़े पड़ेंगे तेरे हॉगवर्ट्स लेगेसी को वोल्डेमॉर्ट। अब बेटा उसको बोलना जमता नहीं, मेरे को पता क्या क्या डाबराट कर देगा,
ये देख हॉगवर्ट्स लेगेसी है भाई। अच्छा गेम है यार, लेकिन मेरे को पता है बस गेम में एक प्रॉब्लम लगी, बस एक चीज अच्छी नहीं लगी। बताओ। हट यार, मेरा देखा नहीं। पता है क्या अच्छा नहीं लगा? वो कैसा, मतलब सिर्फ क्वेस्ट करने पे ज्यादा एक्सपी मिलते हैं। मतलब अपन कोई डिफीट करते हैं कोई भी चीज को तो उतना एक्सपी नहीं मिलता है यार। 10 मिल जाता है, मुश्किल से 15 मिल जाता है। 15 भी नहीं मिलता, मैंने देखा नहीं 15 शायद तक मिलता होगा। 15 पकड़ ले, लेकिन उस मैंने 11 देखा है, उससे ज्यादा नहीं देखा मैंने। मेरा बच्चा मैलफॉय बने ड्राको। ये मैंने स्लिदरिन लिया है वैसे। स्लिदरिन मैंने मेरा हाउस चूज किया है। मेरे को स्टेलर ब्लेड लेना था यार। स्टेलर ब्लेड लेने की इच्छा थी, लेकिन बहुत महंगा है भाई वो गेम। 5000 का दे रहा है अभी भी। मैंने यहाँ पे ऑफलाइन पूछने गया तो वो तो मेरे को बोल रहा है कि 4800 में लेके जाओ। मैंने बोला भाई 200 रुपये बचा के क्या कर लूंगा मैं? तेरे पास आने के लिए मेरे को पेट्रोल लग गया उतना, उसकी दुकान में जाने के लिए। और फोन में रेट नहीं बताते कमीने दुकान वाले। वो क्या बोलते हैं, मैंने पूछा था फोन में रेट बताने का, तो वो बोलते हैं कि नहीं सर हम आपको फोन में रेट नहीं बता सकते, वो हमको पता नहीं है। ऐसा कैसा पता नहीं भाई? और बंदे को तो पूरा सब कुछ पता था। भाई करता है मानता मैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ना भाई। मेरे पास 3000 का बजट था, उसके ऊपर कुछ नहीं था मेरे पास। फिर मैंने 1500 का ले लिया। मैंने बोला छोड़ यार, 1500 का ले लेता, कुछ दिन में ले लूंगा। शी विल ट्रेन यू। ले लूंगा भाई, स्टेलर ब्लेड लेंगे। अभी भाई अभी कार्ट में डाल के रखा है मैंने स्टेलर ब्लेड। अभी कुछ दिन में अगर नहीं गया, अगर मेरा कुछ अच्छा हुआ, मेरे को लग रहा है कुछ होगा, क्योंकि स्टेलर ब्लेड लेना है। आ गया भाई, दिख नहीं रहा। गेम मस्त है, मतलब दिखने में तो मस्त है, कोई शक नहीं है। और क्या मस्त है तो छोड़ो यार, मेरे को वो नहीं बताना। लेकिन गेम मस्त है। ये अपन वो खेल सकते हैं, ट्रायल खेल सकते हैं। ट्रायल डाउनलोड करो क्या? इन गार्ड में भाई, उससे अच्छा मैं 600 रुपये डाल के वाला ले लूंगा। मेरे को इसमें ड्यूलेक्स एडिशन में कुछ सामान में मिल जाएगा जो मेरे को वो नहीं देगा। 5000 का दे रहा है तो ड्यूलेक्स दे भाई, मतलब ऐसा था मेरा मतलब। ड्यूलेक्स भी नहीं दे रहा, और वैसे भी लोकल में ड्यूलेक्स मिलता नहीं है। बस कार्ट में डाल के रखा, खरीदना नहीं है, मतलब जब आएगा तब। वैसे भी तुम गेम्स लेकर रुक जा, तू क्या बोलना चाह? ये वर्टिकल स्ट्रीम नहीं यार, वर्टिकल स्ट्रीम में ज्यादा लोग देखने आते हैं किरण भाई। नहीं तो फिर मैं ऐसे में अकेले खेलते रहता हूँ यार। मेरे को मतलब अकेले खेलते रहता हूँ, मेरे को गेम खेलना अच्छा लगता है, लेकिन कोई अच्छा रहे देखने में तो मजा आता है। अगर अपने पास ज्यादा ऑडियंस रहती देखने के लिए तो फिर कैसा वर्टिकल, मतलब वैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है मेरे को, क्योंकि वैसे में देखने में ज्यादा अच्छा लगता है बड़े में। क्या करेंगे बता भाई किरण भाई, क्या क्या? अरे म्यूजिक किसी के समान तो है भाई, कहीं सुना है, पता नहीं कहाँ सुना है। नहीं, इसके सिमिलर म्यूजिक सुना है भाई। आदि भाई अभी हुआ है। मैंने पुराने सॉरी, जो विघ्नेश लाइव नहीं कर रहा था ना, मैंने उसको कल ही गाड़ के आया। और जो आज वाला है ना वो दूसरा है। तो आज वाला विघ्नेश कल भी लाइव आएगा, और परसों भी लाइव आएगा, और अगले जन्म तक लाइव आएगा, मतलब जब तक हो। क्वालिटी पे ध्यान दो, PS5 है तुम पे भाई, क्वालिटी पे ध्यान दो। वर्टिकल वाला कंटेंट नहीं है तुम्हारा, पे देखने वाला कंटेंट है। टीवी पे तुम में से कौन देख रहा है यार? बात भी सही है यार, लेकिन क्योंकि मतलब वैसे में देखने में मजा आता है। मतलब वैसे गेम्स को अगर बड़े स्क्रीन पे ही देखे तो ज्यादा अच्छा लगता है यार, बात तो सही है। छोटी स्क्रीन पे अजीब सा लगता है। गेंशिन चल जाता है।
आदि भाई याद है मेरे को। ऐसा नहीं यार, मैं टाइम पास कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, इतना सीरियस नहीं था कुछ। 2 हफ्ते तो मेरे को घर की सफाई में लगे भाई। मम्मी ने ये सब साफ करा है, ये करा है, वो करा है, बहुत कुछ करा है। फिर साफ करने के बाद बंदे में ताकत बचती नहीं है, तो बाहर से ऐसा, उससे अच्छा पेंट मार देना था। ऐसा सोच रहा था मैं, लेकिन साफ बहुत हुआ यार। ए अच्छा दिख रहा है लेकिन। गेंशिन भी अगर बिग स्क्रीन में देखा तो गेंशिन का म्यूजिक, हाँ गेंशिन का म्यूजिक जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए शाम को थोड़ा फ्रेश होने के लिए एल्डन रिंग खेलेंगे यार। एल्डन रिंग खेलना है, आज खेलने की इच्छा थी मेरी, शाम को खेलूंगा। शायद तक आज मेलिना को मारेंगे यार, मेलिना को मारने की बारी है। मेलिना को मारने के बाद जर्नी 2 स्टार्ट करेंगे एल्डन रिंग में। शोरकीपर, शॉपकीपर, शोरकीपर, wuthering waves, नाइडा। अच्छा वो प्लांट वाली, वो नाइडा सामान तो दिखती है, बोलना नाइडा 2.2 बोलते उसको तू, जो हील करती है, क्या नाम है उसका यार। wuthering waves का तो कोई चक्कर ही नहीं है, आसपास ही नहीं है वो, बहुत अपने फील्ड के बाहर चले गया है, तो इसमें भी जाऊंगा। ये उसमें मेरे पास पॉइंट्स बचे हैं यार, उसको यूज करना है। हाँ वही ना, वही, हाँ। उसका नाम याद नहीं आ रहा भाई। एक मतलब पूरा मंथ नहीं बोल रहा यार, मैं पूरा मंथ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला 1-2 हफ्ता लगा मेरे को, और उसके अलावा मैं बाहर गया था थोड़ा, तो उसमें भी था बस। तो मतलब ऐसा ही हो गया, मतलब कि करते 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 नहीं हो पाया, मतलब करूंगा करूंगा करके नहीं हो पाया, ऐसा हो गया मतलब। नहीं तो मैं गेम खेले बिना रह नहीं सकता, बताएगा। मतलब बहुत, मतलब नॉर्मल सामान नहीं रहा था वैसे, बोलना अलग ही था थोड़ा। रोलर कोस्टर, हाँ लास्ट मंथ रोलर कोस्टर सामान, बाप रे। पढ़ा भाई मैंने तेरा चार्ट बड़ा वाला, सब ठीक है लेकिन। तो अभी ठीक है कि ठीक, सब ठीक है कि अभी भी जाता है भाई चेक करने वगैरह, किरण भाई। भाई ये स्टेज एंडलेस है कि खत्म नहीं हो रहा। ये फाइनलाइज एंड लीव करके, अच्छा मेरे को ऑप्शन दे रहा है क्या निकलने का ऐसा? उससे पॉइंट स्कोर किया है क्या मैंने? मैं गोल्ड तो दिख रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर जा सकते हो। मैं निकल रहा है ऐसे, एग्जिट एंड फाइनलाइज। वही मैंने देखा वो गोल्ड हुआ। अरे आप तो जिंदा हो। यस भाई मैं जिंदा हूँ। अगर अगली बार एक भी बार नहीं दिखाना तो समझ लेना ये बंदा जा चुका है, लेकिन इतने जल्दी नहीं जाएगा। टाइम है, टाइम बहुत टाइम है, मेरी डेट आने की है। पाइमोन का सर्वे पहले हमेशा करता था यार, मैं अभी करना छोड़ दिया। मैं करना चाहिए। वैसे I got shadow banned from YouTube on my main Gmail account
माई चैट्स नॉट शोन, दिस माई सेकेंड आईडी। अच्छा इसलिए ब्लू में दिख रहा है क्या? मेरे को लगा बस तूने कलर चेंज किया है, ग्रे से ब्लू पे आ गए हैं थोड़ा आंखों को बहाने के लिए, बस कलर चेंज किया है, मेरे को ऐसा लगा। क्यों क्या हो गया? मतलब कैसे, मतलब कैसा क्या हो गया? ऐसे होते है कैसे शैडो मैन, होते कैसे? बाय द वे मेरी शाओलिन देखेंगे, देखेगा? दिखा दे भाई। कहाँ पे क्या करना था? पैसेज ऑफ टाइम। समांटो भाई 8833 सॉरी 883। याला नहीं गया। एट 49 062068 वाला है 068 अभिनव कुन। फाइव स्टार उसका वेपन के साथ लिया भाई, इतना खर्चा, इतना खर्चा। सॉरी मेरी आँख को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को लगा कि आला वेपन उस स्वॉर्ड इसके हाथ में मेरे को दिख रही थी थोड़ी देर के लिए। गगन इज लाइव। कैसा है भाई गगन? गगन इज लाइव ब्रो। तू भी स्ट्रीम करता है भाई? मैं तेरा चैनल देखते हैं अपन। बाप रे भाई। Playing Genshin Impact 49। शैडो मैन में अगर तुम चैट पोस्ट करोगे तो वो चैट बाकी लोगों को और यूट्यूबर्स को नहीं दिखेगा, जैसे कि वो कभी पोस्ट हुआ नहीं। ओके बिल्कुल तेरी तरह। वो भी बहुत दिन बाद लाइव आया है। ये लाइनर स्केट्स में मजा आता है, लेकिन उसके पास है वहां पे इन्वेंशन किसने किया? अच्छा मेरे को किसी और का वेपन है, सॉरी मेरे को पता नहीं था, मेरा इन्फॉर्मेशन कम है। ना मिला हमको इस आईडी पर और कौन की राह देख रहे हैं अपनी गारंटी के साथ। मिसेस स्ट्रीमर वो हु इज बेटर एडन येलान शनहा। येलान, मेरे को येलान पसंद है तो येलान। गगन इज लाइव बाबू, मेरा थिएटर कब करोगे? आज मेरे को बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है ना तू? मेरे को लगा तो उसको बोल रहा है। अच्छा उसका थिएटर कब करोगे? ये हाँ थिएटर भी आया होगा। कितने दिन बचे भाई थिएटर को? इमेजिनरी थिएटर कितने दिन बचे इसको? कितने दिन बचे? मैं अंदर घुस गया, मेरे को देखने का दिन कितने बचे? 25 दिन बचे हैं, कर सकते हैं। एबिस 36 स्टार नहीं होते भाई मेरे से। सर एबिस करो रीसेट होने वाला है। सर एबिस करो रीसेट होने वाला है। उस उसके ऊपर कौन सा चार्ट मिस किया है मैंने भाई? हाँ खर्चा नहीं किया, बस वाला ना देखा मैंने उसके वो गगन इज लाइव स्ट्रीमर जो बिल्कुल लेट आया थे, मतलब बहुत दिन बाद लाइव आया थे, वो भी पढ़ा मैंने। फिर और कौन सा है इसके बाद? वो खर्चा नहीं किया वो भी पढ़ा। फिर वो गगन इज लाइव को बोला तूने कि मेरा थिएटर करोगे, फिर तूने चार्ट मिस लिखा,
और कौन सा चैट भाई? उसके अलावा में कुछ नहीं दिख रहा। फिर गगन इज लाइव वो थैंक्स, बस इतना लिखा तूने। उससे ऊपर चैट आया है वो देखो। मैंने वो कौन सा? अरे वही तो बोला मैंने, मेरे को पता नहीं था बोला कि कौन सा वेपन है, वही बोला मैंने कि वो कौन सा वेपन है, मेरे को वही पता नहीं था। तो और मैंने बोला मेरा इन्फॉर्मेशन कम है, मैंने ऐसा बोल दिया था देखो। 10 दिन। ये कौन बोला है बस रिसेट हुआ? वो रेडन को वेपन निकालना था बट वेपन दिया सालों ने। अच्छा किंची, अच्छा वही वेपन है वो जो उसने बात कर रहा था। सॉरी यार समाटो भाई, अब बस 10 दिन मैं इवेंट कर रहा हूँ। आपके सब कम कैसे हुए? भाई मैं बहुत दिन बाद लाइव आया भाई फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद। 1 महीना होगा पकड़ लिया, 30 दिन हो गए। तुम पे जियो कैरेक्टर 36 हो सकता है 36 हो सकता है। इसका डिफरेंस 4K हो चुका है तेरे कैरेक्टर का। 4 दिन पहले रीसेट हुआ, 4 दिन पहले रीसेट हुआ। अभी फिलहाल इवेंट करता हूँ यार, बस अपने रिवॉर्ड्स लेते हैं, मेरा वही प्लान है। रिवॉर्ड्स पूरे मिल गए ना, मैं छोड़ रहा, मैं इवेंट की स्टोरी नहीं करूँगा। मैं बस रिवॉर्ड लेके निकल रहा है यहाँ से। अच्छा इस बार एबिस में जियो एनिमीज है। कैसा है बेंच भाई, कैसा है? बहुत दिन बाद मिले अपन। डेलीज भी निपटा नहीं, डेलीज निपटाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। हो गया होगा इवेंट, मैंने इवेंट की रिवॉर्ड लिया ना। हाँ ये अच्छा लगता है यार, लेकिन अचीवमेंट तो लेना पड़ेगा। अचीवमेंट वाले कोई डिलीज होगा तो गया है कि नहीं। जियो कैरेक्टर्स लेके जाओगे तो इजीली हो जाएगा। ओह Add Astra. यार आज वॉचिंग का कुछ लोचा चल रहा है। ये तुमको कितने की वॉचिंग मिल रही है भाई? Add Astra. मेरे को 19 की दिख रही है, तुमको कितना दिख रहा है? बस पूछ रहा हूँ। C6 आर्लिकेनो और C6 न्यूविलेट कौन ज्यादा पावरफुल है? C6 आर्लिकेनो या फिर न्यूविलेट? 14:7 दिख रहा है ना, मेरे को 19 दिख रहा है। जब से वॉचिंग का थोड़ा लोचा चल रहा है, पता है क्या, मेरे को अलग अलग दिख रहा है। मतलब उतने जन है नहीं और उतने जन दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे। ऐसा कैसे हो रहा है? मेरा क्रिस्टल फ्लाई ट्रैप किधर रखा है भाई मैंने? ऐसे लाते लाते मेरा सर घूम गया वहां पर। यहाँ पर है क्रिस्टल फ्लाई ट्रैप। 17 का दिख रहा है तुमको? वो यार उसके आसपास ही चल रहा है। वहां पे क्रिस्टल फ्लाई ट्रैप रखा है मैंने उसके सामने। The Adventurers Guild has been overwhelmed. मैं ये इवेंट बोलता है अलग। अरे उतने जन है नहीं भाई, उतने जन नहीं है। पता नहीं क्यों दिख रहा है, पता नहीं उतने जन है नहीं लेकिन। No worries at all. Since we're faced. All right. Hi, Catherine. It's us. Got any new? You two have come just in time. Given how So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay. Once we receive word of enemy activity, we can notify the nearest camp and the stationed forces. Yes. So please. ना मैंने स्टोरी नहीं किया। What's the plan? शायद तक ये स्टोरीज है। That? It's not like Paimon just हाँ भाई wants to कम ही sit दिखता here है and यार। do nothing. मेरा टाइम का थोड़ा शेड्यूल सही नहीं है तो शायद तक लोगों को पता नहीं चलता मतलब है बात। The movements of the Abyss are always unpredictable.
There have also been times when it suddenly, once the disaster मैं is 12 over, बजे के बाद आ सकता हूँ, everyone कैसा will टाइम return सेट to करना their चाहिए, कोई normal आइडिया lives. देगा मेरे को? मतलब 12 बजे I के just बाद, don't मतलब hope that अभी day will जो be 12 sooner गए वो rather than later. दोपहर के 12 बजे के बाद, तो उसके हिसाब से कोई मेरे को टाइम बता सकता है कि कैसे कैसे आना चाहिए मेरे को? This situation is. शाम तक बोलते, शाम के 12 बजे तक खींच देंगे अपन। Oh, hey, Katrina. मैं तो Are you फर्स्ट डे ready में now? ही 5.1 का आइकॉन क्वेस्ट कर लिया। नहीं मैंने नहीं किया भाई, आदि भाई इतने इमोजीज। Wow. So we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. Paimon still ये can't. मेरे believe साथ हुआ anyone कि सबके साथ हो रहा है भाई? मेरे को बाकी की आवाज नहीं आई, बस उसकी आवाज आई, इसकी आवाज नहीं आ रही। देख ये क्या हो गया? अबे प्लेस्टेशन की आवाज आ रही है, सिस्टम की, पाइमोन की आवाज आ रही है, उसकी आवाज नहीं आ रही। After all, you're already a victor of the Night Warden. वॉइस एक्टर कहाँ गया कमीना? काफी ओपी है आर्कन क्वेस्ट। ओपी फाइट सीन मस्त है क्या? तो वॉइस एक्टर स्ट्राइक पे हो गए। हेलो ओमकार भाई, कैसा है? Ad Astra. यार 2-3 बार हो चुका है, मेरे को लगा। Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. क्या पता शायद तक मेरे इसमें प्रॉब्लम होगा। मेरे को पूरा गेम डिलीट करके चालू तो रीडाउनलोड तो नहीं करना पड़ेगा? फाइल करप्ट वगैरह तो नहीं होगी कुछ? हो सकता है, बोल रहा हूँ। क्या दिखा रहा है? लोकल रीजन। नो नो दे आर म्यूट। अच्छा वो ही चाहिए क्या पक्का? मेरे को लगा कि मेरे इसमें कोई फाइल करप्ट वगैरह तो नहीं हो गई। यार मैं छेड़ी कर नहीं सकता पीसी सामान इसमें, तो फिर चांसेस कैसे है? बस ये बचा है, सिर्फ एक इवेंट में एक ही चीज़ बची है बोलना। और फिर ये 55 डेज का दिख रहा है मेरे को, और ये 9 दिन बचे हैं इसको। मतलब क्या क्या करना है भाई? मतलब मैं उसका पहले देख लेता हूँ, मतलब किसको मेन पे रखना है। ये 13 दिन पे क्वेस्ट दिख रहा है मेरे को, क्वेस्ट। हाँ, और ये तो आराम से हो जाएगा। थिएटर में खरीदने के लिए कुछ दिया होगा इस बार, नए नए पोजेस आए होंगे। रेसिन कंडेंस कर, हाँ बात सही है। ये थैंक्स याद दिलाने के लिए। और मैंने पहले से ही कंडेंस बना के रखे हैं, तो क्या करना है फिर? रेसिन यूज कर लेता है। कहाँ पे करेंगे? मेरे को कोई ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे करना चाहिए, वहाँ पे करना चाहिए। इसको अपग्रेड कर रहा था मैं आखिरी बार। मैं कर क्या रहा था आखिरी बार? मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। मैं किस पे यूज करने वाला था रेसिन? मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। ओके भाई मैं जाता हूँ, टेक केयर, गुड लक विद योर स्ट्रीम। भाई तूने इतना हाफ में काटा, मेरे को सोचना पड़ रहा था क्या लिख रहा है बेंच भाई। ये हाँ वीकली आइडिया अच्छा है, वीकली अच्छा है। वीकली में भी किसको बिठाएगा? What a place. सबसे एक बेटर आइडिया मेरे पास, एक अच्छा आइडिया है। यहाँ पे कोई कैरेक्टर इसको अपग्रेड करना है ना। हाँ चल इसके बॉस के पास जाता है। कौन सा है वो? चोच वाला है, चोच वाला। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे है? यहीं पे कहीं होना चाहिए, यहाँ पे। वही बहुत शॉर्ट लिखा उसने, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है भाई। मतलब थोड़ा सोचना पड़ रहा था कुछ सेकंड्स के लिए। अच्छा लैला कर रहा था, लैला को अपग्रेड कर रहा था, मेरे को अभी याद आया। Pro does pretty refresh if I don't pull 5 stars. नहीं ऐसा नहीं होता है,
मतलब अपन ने बहुत टाइम के लिए विश नहीं किए तो ऐसा रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं होता है, वो वैसी रहती है। My guiding stars. पीठी कभी रिफ्रेश नहीं होती। Overruled. Busted. Everybody stand back. Everlasting as the moon. Good to hear. लैला की दूसरी नहीं, लैला के मतलब लैला के लिए मैं बॉस का कलेक्ट नहीं कर रहा था यार, वो लेवल 90 हो गई थी। मैं उसके लिए ये उसका टैलेंट लेवल अप के लिए जा रहा था, उसका टैलेंट लेवल अप और ये आर्टिफैक्ट्स के लिए जा रहा था लास्ट टाइम में, मेरे को वो याद आया। उसका अपग्रेड हो चुका है, उसका बॉस का अपग्रेड, उसका तो पूरा 90 पहुंच गया भाई वो। ये चाहिए अपने को। आज आज ट्यूसडे है, आज है। डोमेन में भी एक्स्ट्रा है ना, अपने को ले लेते हैं ना, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है लेते हैं। ये मैंने भाई को अच्छा गेम फ्री देना चाहिए, बस मेरे को वो चाहिए। ये रुक जा, सब कुछ चालू है क्या? रुक जा, सब कुछ चालू है, लिमिटेड टाइम के लिए सब कुछ चालू है। क्या चाहिए इसको? इसको कमल चाहिए। हाँ ये यही चाहिए उसको, ये बंद वाला कमल, ये खिला कमल है। और ये नहीं पता ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? घंटी सामान देखती है। वेल जोंगली आ रहा है, पुल करोगे ना? जोंगली पुल नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को शील्ड चाहिए है। जोंगली तो सोचने वाली बात है, लेकिन मेरे को मैं नहीं करूँगा, ज़्यादातर है नहीं करूँगा, ज़्यादातर तो नहीं इसमें ही चाहिए। इस फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम मतलब मैं लाइव स्ट्रीम रोज करता हूँ। आज मैंने बहुत टाइम बाद स्टार्ट किया है, लेकिन मैं रोज करता हूँ। अच्छा मेरे को पूछ रहे हो कोई हो लाइव स्ट्रीम? ना मेरे को कोई आइडिया नहीं है वैसे। थैंक यू बताने के लिए, उसमें कुछ मिल जाएगा अपने को। ये प्रोफाइल पिक कौन सा है? गेम का कैरेक्टर है, मेरे को लगा कोई मानवा में देखा है मैंने। येलान C3 C2 है। येलान के लिए याद जाना था C3, लेकिन था नहीं मेरे पास, उतना हिम्मत नहीं थी मैं जाने की। मैं सोचा यार नहीं, कंटेंट रहता है इसमें। Don't be scared. Gotcha. Take it easy. शूट मैंने कंडेंस यूज कर। Bro, now I'm totally confused. Should I pull for Nahida or wait for Archon? Nahida or should wait for Archon? How many primos do you have right now? कितने? Nahida बेकार है भाई। I am regretting बोलेगा। ए regretting क्यों भाई? Nahida अच्छी है। मेरे सेकंड अकाउंट में भाई इतनी खत्म टीम रहती है, मैं नाइडा को लेकर जाती हूँ वहाँ पे सब बर्बाद कर देती है। मतलब बर्बाद मतलब ठोक देती है। बेकार नहीं है भाई वो, कुछ भी है बेकार नहीं है। कैसे यूज कर रहा है भाई तुम? क्या हो गया आदि भाई? कोई प्रॉब्लम हो गई नाइडा से? येलान आ रही है तो येलान के लिए विश कर लेना अगर चाहिए तो। ए येलान बेस्ट है भाई, मेरे को अच्छी लगती है। चल शायद तक आदि को पसंद नहीं आ रही है। कौन से वेपन के साथ यूज कर रहे हो उसे? Transfixed. Oh, mine's a command. Teamwork is dreamwork. Quietly now. Gotcha.
जिलान में हार गया, 10 गेम खेलना छोड़ दिया। सॉरी यार, बुरा लगा, लेकिन गेम खेलना क्यों छोड़ दिया? 21 I have spent all my primos right now. 86 पिटी, 86 पिटी। इसके पहले 50-50 हारा था कि इसके पहले कैरेक्टर जीता था जो चाहिए था? 50-50 हारा था कि जीता था इसके पहले? मतलब इसके पहले जो कैरेक्टर था वो कौन सा था? बैनर कैरेक्टर था कि हारा हुआ कैरेक्टर मिला? हेलो पेंगुइन गेमिंग। पेंगुइन कैसा है ब्रो? पेंगुइन आप सही गाइडेंस लेने आप ए नहीं यार, ऐसा नहीं। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है। आदि में मैंने तेरा अकाउंट लॉगिन मारा है क्या? हाँ, अगर हार गया था ना, हाँ हार गई थी ना, तो अभी जो कैरेक्टर रहेगा ना वो गारंटीड रहेगा। तो फिर अभी 86 पे एबिटी है ना, तो मतलब अगला पुल में भी मिल सकता है। जस्ट चलेंगे। How was your day? मेरा दिन कैसा था? मेरा दिन अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। आधा खत्म हो चुका है, बोल सकते हैं। आधा खत्म हो चुका है। हार्ड पीडी चला गया। मिल सकता है यार, कभी मिल सकता है। मेरे साथ भी पता है ऐसे हुआ था, लेकिन अपन जब 80 के बाद से अगर काउंट कर रहे हैं ना, तो वो कभी भी नेक्स्ट में मिल जाता है। पता है कि अपन उम्मीद नहीं रखेंगे ना, उसमें मिल जाता है। तो ऐसा विश मत कर देना, मतलब जो कैरेक्टर नहीं चाहिए उस पर फालतू के लिए, तो वही कैरेक्टर मिल जाएगा, फिर बाद में उसको लेके अपन कैरेक्टर लेके बैठ जाएंगे। मैंने किया है, पता है मैंने कौन सा कैरेक्टर किया है, लेकिन मेरा कैरेक्टर अच्छा था। जो मतलब मैंने जो कैरेक्टर पे किया था वो ईटो था। ईटो अच्छा है, लेकिन हाँ ये सच में अच्छा है। मैं अपने मन को बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ईटो सच में अच्छा है, मैं उसको यूज करता हूँ। ओल्ड प्लेयर हुआ आप? नहीं भाई, ओल्ड प्लेयर नहीं हूँ मैं, नया ही बोलना एकदम। जस्ट गेम रिलीज हुआ था, मैंने तब नहीं खेला था, उसके कुछ महीने बाद से खेलना चालू किया था, क्योंकि मेरे फोन में तब रन नहीं करता था भाई ये गेम। फिर उस टाइम पे ही मैंने उसके आसपास में एक फ़ोन लिया था, तो उसमें चलता था, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा खेलता था, फिर बाद में मैंने प्ले स्टेशन पे शिफ्ट किया। ऐसा ही है मेरी कहानी अभी। ब्रो नाइडा मत कर पुल, अगर न्यू प्लेयर हो तो न्यू प्लेयर करना। हाँ बहुत है, लेकिन यार न्यू प्लेयर नाइडा में मतलब मेरे सेकंड अकाउंट के साथ न्यू सामान ही है ना वो, तो उसमें मेरे को नाइडा ने हेल्प किया था। न्यूलेट अच्छा है, लेकिन न्यूलेट का बहुत डैम है, लेकिन उसके लिए इनासो में ये सॉरी क्या बोलते फाउंटेन एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसको अपग्रेड करने के लिए। न्यूलेट इज फार बेटर देन नाइडा। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ए ये लान जा रहा है। न्यू प्लेयर हुआ और टीम नहीं हुई। हाँ वही, हाँ ये भी ऐसा सही है, न्यू प्लेयर हुआ टीम भी नहीं हुई, ऐसा भी देख सकते हैं। न्यू विलेट नाइडा देख, मेरे को न्यू विलेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास न्यू विलेट नहीं है और मैं यूज नहीं करता और मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं न्यू विलेट नहीं लेता हूँ बस। पकड़ता हूँ। ए यहाँ पे एक है कैरेज, सॉरी वो वाला इवेंट है जो मैं जब भी कर रहा था।
लेकिन अभी के हिसाब से न्यूलेट बहुत अच्छा है। किस केस में यूज किया था मैंने, किसके अकाउंट में यूज किया था, उसका डैमेज मस्त था। मतलब ज़्यादा उसको उतना बनाना भी नहीं पड़ता है। अगर नए प्लेयर के हिसाब से देखेंगे तो वो कैसा आराम से बन भी जाता है, बिल्ड करने के लिए इजी भी है, बस ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और उसका एचपी वाला वेपन अपन जो बिल्ड करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें भी यूज़ कर सकते हैं बोला नाइडा के साथ। लेकिन अब ऐसा बस बता। और अपने पास विंडजेट तो मिल ही जाता है भाई सबके पास। देखना मतलब ऐसा दो एकदम नहीं कि दोनों बेकार है बोलना, दोनों में अच्छे अच्छे है, कुछ कुछ दोनों के प्रो कॉन्स है। फिर आखिरी में जो पसंद आ रहा है वो ले लेना। अगर किसी के बोलने पे ही लेगा वो लेंगी कैरेक्टर, तो फिर बाद में पसंद नहीं आया ना, फिर बाद में वही होगा। पसंद आ रहा है, खेलने में मजा आ रहा है तो वो ले लेना, दोनों का ट्रायल लेके ज़्यादा बेटर है। लेकिन नाहिडा का अकेले नाहिडा मतलब वैसा नहीं करती, उसको टीम चाहिए, लेकिन न्यूबिलत अकेले में फाड़ता है। ये बात है, ये बात मैं बोलूँगा। अपनी पिटी देखते हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम इज टू वर्टिकल फॉर शॉर्ट लाइव स्ट्रीम। बहुत ज्यादा लंबा खींचा है ना मैंने। पेंगुइन भाई मैं करूंगा थोड़ा सा उसको चेंजेस वहां पे भी, क्योंकि मेरा जो जो मैंने लाइव स्ट्रीम का पेज बनाया ना वर्टिकल वाला, वो बहुत पुराना है। उसको थोड़ा मतलब 1 महीना तो दो बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं, तो उसको थोड़ा चेंजेस करूंगा उसमें अच्छे सा थोड़ा। हाल ही किनों के बाद कुछ लिया नहीं क्या मैंने। हाँ लेकिन के बाद लिया नहीं किसको मैंने। थैंक यू भाई पॉइंट आउट करने के लिए, पक्का चेंजेस करूंगा। यस भाई रेगुलर बेसिस में करता हूँ। ओ माय गॉड जस्ट 10 होपफुल्स। भाई कुछ भी हो सकता है लेकिन ये 10 मोर पुल्स में ओके। विघ्नेश कर दे ना भाई ना, आदि भाई नहीं, किस पे करूंगा। देख कोई कैरेक्टर इसके पहले अगर वो जियो वाला कैरेक्टर रहता ना आदि में कर देता भाई, तू बोलता मैं कर देता, लेकिन ये दो कैरेक्टर मेरे को नहीं लगता। और तू अभी तो बोल रहा था नाइडा अच्छी नहीं है, नाइडा पे करूँ, और मेरे को और हुटाओ मेरे पास है यार। ना 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 हुटाओ नहीं चाहिए, सीवन नहीं चाहिए हुटाओ यार, हुटाओ सीवन नहीं चाहिए बहुत। अभी आर्ली के नो अच्छी है यार, मैं हुटाओ की जगह आर्ली के नो यूज कर रहा हूँ। हार्ली के नो कितना अच्छा डैमेज दे रही है। I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. यस चार्ट दिख रहे हैं शायद तक। किरण भाई मेरे को लगता है तू जो चैनल पे गया था ना इसके पहले, जिसने तेरे चैट बैन किए, उसने क्या पता शायद तक तेरा स्पेसिफिकली वो चैनल से बैन करके रखा है। मतलब मैं कर सकता हूँ यहाँ से बैन, मतलब एक कुछ कुछ जनों को, मतलब जो पर्टिकुलर जन को कर सकता हूँ। ब्राउजर का इशू है मेरे को लगा। अच्छा ठीक है ब्राउजर का इशू है, मैं सोचा था कि उसने बैन कर दिया, तूने वहां पे जाके कुछ बोल दिया उसको भला बुरा। मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं बोलता है तुझे पता है। Good roll. ब्राउजर का इशू कैसे हो सकता है, ब्राउजर का इशू कैसे हो सकता है यार, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है। One more day off and knock out the rest किरण of the भाई को work बैन once करने I'm की up बात to it. नहीं चल रही है, किरण भाई को किसी ने बैन किया है किसी और चैनल पे, वो बात चल रही है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग सुनीता भाई, सुनीता ब्रो बहन। सॉरी माफ करना यार, मैं बीच में थोड़ा तो हो जाता है मेरा, जाता है दिमाग। येलान का स्किन आ रहा है, येलान का स्किन आ रहा है भाई, येलान का स्किन आ रहा है तो लेना पड़ेगा। स्टेलर ब्लेड थोड़ा सा और रुक सकता है, और रुक सकता है अगर येलान का स्किन आ रहा है तो। भाई 2 स्किन चाहिए बस अपने को।
स्ट्रीम एलिमेंट्स ने बोला हमारा स्ट्रीम लैब्स कहाँ गया? ना कुछ नहीं देखा मैंने। ये पक्का वो क्या बोलते हैं, जेन्युइन था ना भाई? तू मतलब मेरी उम्मीद जगा रहा है, पहले बता रहा हूँ मैं। नहीं तो पता चल रहा है तूने कोई किसी का हैक वगैरह वगैरह कुछ देखा है और तू वही अफवाह फैला रहा है यहाँ पे। आर यू एन आर्टिस्ट और लाइक ड्राइंग? मेरे को ड्रॉ करना अच्छा लगता है, मैं बचपन से ड्रॉ करते आ रहा हूँ। और ये जो मैंने बुरा ड्रॉ किया है ना, वो मैंने पेंट पे किया है। सो मैंने पेंट में कभी ड्रॉ नहीं किया है पीसी पे, वो मैंने फर्स्ट टाइम किया है और वो ड्रॉ मैंने दिखाया है। इसके पहले जो आखिरी बार मैंने पेंट पे कभी ड्रॉ किया है ना, वो घर बनाया है, उसके आगे नदी बनाया है और पीछे पहाड़ बनाया है, और वो भी स्कूल के टाइम। और उसके टाइम बाद मैंने यही बनाया है। Ah, yes, so I've heard. मैं पेपर So पे young, and yet you've already got quite the reputation. लुक्स क्यूट तो। ए थैंक यू ब्रो, अच्छा है। Outlanders? वैसे मेरा खुद का ओरिजिनल नहीं है वो, Yep, we're मैंने किसी और के travelers पास just देखा like था, the मतलब और के पास मतलब एक महानवा में देखा था और वहां से मैंने ड्रॉ करने का ट्राई किया। No, I mean, I was aware that you're travelers. माउस के It's साथ मैंने अच्छा just किया ऐसा no लगता one है told मुझे। me that you're Outlanders. Nivellate and Knight are not comparable. Oh, no. No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. आदि भाई Nivellate वाली टीम में। And she did mention that it would be quite difficult Hello, to forge an Aicha, ancient name for Aicha. them, but at the time, कैसे pronounce I करेगा thought भाई? she was just आदि भाई complimenting कैसे? my आदि? skills. But I seem to understand where the true Aicha. difficulty lies now. आयशा। आयशा सुना है मैंने, आयशा पहली बार सुना है। I wouldn't go that far. I'm used to it, Aika. really. I just need a moment to Aika हो जाएगा ना process वो? things. CH छा जा रहा है ना आयशा? The आयशा? Pyro Archon's मैं requests अजीब सा are बोल रहा हूँ क्या? always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this up at the time. Anyway, I can't argue चल with मैं her if आयशा she isn't जाके here, पढ़ूंगा। and Hello, it'd be आयशा, कैसे है, pointless bro? to take my anger out on someone How else. are you? But just because I मेरे understand her पास दोनों rationale है doesn't पर। make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an outlander is an impossible कंट्रोलर के task. साथ खेल रहे हो या कंसोल है मेरे पास? मेरे पास कंसोल है भाई, प्ले स्टेशन पे खेल रहा हूँ मैं। बहुत मिन्नतें मांगनी और बहुत मैंने जुगाड़ करा तब जाके मिला है। It's impossible. Nivellate and Knight are both must have character. Knight is insane. हाँ जा रहे नानी? हाँ नहीं, वो गेम खेल रहा। हाँ ओके नानी बाय। ये 2 मिनट में आया।
क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? 3 आईडी में यार दिखती क्या बता रहे हैं? तो हेलो भाइयों, क्या चल रहा है? सॉरी यार, मैं थोड़ा गया था। क्या चल रहा है? क्या बात चल रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है तुमको? सॉरी, मेरे को चेक करना पड़ा। हाँ, मेरे नानी आए थे। क्या कर रहा है बोल रहे थे यहाँ पे, क्या करते रहता है ये? तो वही मतलब गेम खेल रहा बोला। जा रहे हो ना वो वापस अपने घर, तो वही बस उनको बाय बोलने गया था। मेरे पे भी दोनों है बड़े लो। अरे नानी को स्टेशन तक छोड़ के आओ, 2 मिनट में नहीं। नानी को कैसे ऑफ करो? नहीं, वो ओला से जा रहे हैं यार, उतने दूर नहीं जाते हैं। व्हाट्स योर यार? हाँ, 39 न्यू भी ओला से जा रहे हैं यार। बस वो ओला से उनको लेने आ रहे हैं मेरे मामा, तो वो ले लेंगे। मतलब ओला से लेने नहीं आ रहे, वो बस स्टॉप तक लेने आ रहे हैं, फिर वो पास से चले जाएंगे। ऐसा स्टेशन से नहीं, बस से। सुनिए तो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गैम्बलिंग विद गेंशिन। आप गैम्बलर नहीं हो, बट जल्दी बन जाओगे। तो मेरा 57, ओ मेरा 3 अकाउंट में 6, 60। आई डोंट प्ले मच, 15 मिनट्स अ डे और लेस। ओनली प्ले व्हेन योर कॉन्क्वेस्ट केम आउट, ओनली इवेंट्स फॉर गेंशिन इम्पैक्ट। प्री रजिस्टर्ड किया था, ओके भाई। आई क्विट wuthering waves last month. I actually like character design. I found it's less interesting than Genshin though. हाँ, रही है। Punishing Raven खेलना है सर। Punishing Raven As you probably know, an ancient name is a symbol of a hero's spirit. गेम का नाम है Punishing Raven। गेम का नाम है भाई आदि। Punishing Raven। ये wuthering waves प्ले स्टेशन में आ रहा था, यानी भाई कोई खबर ही नहीं है। रेवन नाम से नहीं दिख रहा है मेरे को भाई। पनिशिंग डालना ही पड़ेगा क्या? इतना ही है। क्राइम ग्री नहीं, मैंने पनिशिंग डाला तो सारे आ जाते हैं। शेरलॉक होम्स का दिख रहा है और शायद तक होने का होगा इसमें। पनिशर दिख रहा है। wuthering waves की खबर ही नहीं है भाई उसमें। एक नया गेम है। ये कौन सा गेम है?
ये खेलते हैं क्या? किस टाइप का गेम है? पहले ऊपर मेरे को देखकर लग रहा है लव इज ऑल अराउंड। इसमें कोई गेस करने की जरूरत नहीं है किस टाइप का गेम। स्टोरी आचे लीडर बोर्ड एल्बम ए और लास्ट वाला ये बेग लैंडलॉर्ड थोड़ा अलग दिख रहा है। लैंडलॉर्ड किसके समान विलन समान दिख रहा है। लैंडलॉर्ड विलन क्यों दिखा रहे हैं यार लैंडलॉर्ड को? अच्छे नहीं होते एवरी गेम है भाई। व्यू फॉलो क्यों कर रहा है भाई? व्यू प्रोडक्ट देखना है मेरे को। अच्छा डाउनलोड डेमो, सिर्फ डेमो ही है भाई। 1.8 GB का डेमो दे रहा है ये। चल 1.8 GB है क्या गेम में? ऐसा वीडियो तो क्या उसमें क्या बुरा है? हॉरर एडवेंचर डेमो, कुछ बुरा नहीं है उसमें। बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। देखो व्यू काउंट कितना दिख रहा है भाई? मेरे को 10 दिख रहा है। तेरे को कितना दिख रहा है? सॉरी मेरे को 15 दिख रहा है। 10 रिफ्रेश किया मैंने अभी तक, मेरे को 10 पुराना था वो। We forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. हाँ कुछ हो चुका है, इसको कुछ हो चुका है। But they were all Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. Total. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in that land, as an outlander, your actions still wouldn't have been recorded by our lands. Only memories and experiences that have been acknowledged by the Wyab can be used as a basis for an ancient name. Even the greatest of craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's... Seems the Wyab don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone. Yet she's still entrusted the task. मेरे को नहीं पता शिवलन की स्टोरी है कि क्या है ये। आइकॉन क्वेस्ट कहाँ पर है पता है किसको? मेरे को तो आइकॉन क्वेस्ट करना था, मैं पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ये स्टोरी है कि क्या है? How to achieve the impossible. इसको नेकलेस है। You mean you're already willing to accept the task? Well, what else can I do? What's happened is already done, and it's not like I can outright defy the order of my Archon. If she gave me this order, then she believes the ancient मैंने स्टोरी अनलॉक किया नहीं है। हाँ यार स्टोरी को अनलॉक करना पड़ता है। and that I'll be able to find a way to make it happen. स्टोरी प्लस आइकॉन क्वेस्ट है। ओके मेरे को लगा स्टोरी को अनलॉक करना पड़ता है जैसे चाबी से अपन हमेशा करते आए हैं आज तक। 316 हो गए। ए भाई किसने भाई कौन है? अभी स्ट्रीम के बीच में अनसब किया अपने को, कितना बुरा। The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence and record his heroic deeds. We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure some... Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best? Plus, considering the unprecedented nature of this situation, I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. I think वो stones. कोई game ले रहा है भाई मेरी। मैं नहीं बोल रहा कुछ। Who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person who comes to mind is Seatlali at the Masters of the Nightwind, the one we call Granny Eatstali. Oh, we've heard that name before. We used her speaker stone to find Kachina's ancient name. नेम का पता नहीं, सॉरी मेरा स्क्रीन वो वहाँ का थोड़ा स्लो दिखा रहा था। आई थिंक मैंने बहुत जल्दी बग दिया। Still, she's older now and quite eccentric. आप फनी वगैरह मीम्स वगैरह है और nothing. She's constantly holed up in her room and doesn't like to be disturbed. How? मेरे है वो। I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. एक्सक्लेमेशन मार्क गैम्बल करके डाल और पॉइंट्स डाल दे जितना डालना है और गैम्बल हो जाएगा और तेरे पॉइंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। I mean, didn't she already help you before? और फिर बाद में रिडीम करना, ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। To save Kachina. Well, yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into. Great going, Mawika. In that case, I guess your only option is to try to emphasize that this is an important order from the Pyro Archon.
Hopefully, I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. That should help too. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. All right, Kanich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Sounds good. We'll take a stroll in the meantime. ये अकाउंट क्वेस्ट कितना लंबा है? कुछ आइडिया है किसी को? बहुत लंबा क्वेस्ट है, छोटा क्वेस्ट है, नाटा क्वेस्ट है। एक सेकेंड, मेरे को यहाँ तक आना पड़ेगा। मेरे को सुमेरो तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा और फिर मेरे को जाके वो कैरेक्टर मिलेगा, तो मेरे को सुमेरो आना पड़ेगा उसके पहले। अरे मैं वो थर्ड वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ जिसमें विश नहीं मार रहा। इसमें क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा है भाई। सब कुछ तो ले लिया है मैंने। लेवल अप रिवॉर्ड ओके। ये तो फ्री रिवॉर्ड है भाई मेरा, मतलब इतना हो चुका है मेरा एक्सप्लोरेशन तो। लेकिन हर 30 दिन में पुराता नहीं है ना, नहीं पुराता। होमवर्ड पाथ ओके, ये वही है। वेट कर रहा हूँ मैं। स्टोरी क्वेस्ट आकॉन क्वेस्ट, स्टोरी क्वेस्ट आकॉन क्वेस्ट, लेट्स गो। I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. भाई कनीज की भी आवाज नहीं आ रही है। इसका भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है? किसी को कुछ पता है कि सच में कि मैं कुछ सर्च करता भाई? Wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having मेरे को लग रहा था मेरे इसमें प्रॉब्लम है यार। See, Lolly knows him too? एक काम करते हैं, जापानीज में करते हैं, इसके बाद गेम बंद करके करते हैं। इंग्लिश वाला है शायद तक जापानीज वाला वॉइस चलेगा। कट सीन के बीच में मतलब कम से कम साउंड तो अच्छा चाहिए भाई, मतलब दोनों का। फिर वहाँ पे वो मुक्का रहेगा, मजा नहीं आएगा। नहीं म्यूजिक तो रहेगा बोलना। Given how the Masters of the Night Wind love to babble about dreams यार and कट सीन के बीच में समझ में नहीं आएगा, revelations, they're सबटाइटल नहीं already a रहेगा। pretty strange bunch to most. रहने दे, बंद करो, I've never जापानीज met वाला रखो। Moron, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. चेंज टू इंग्लिश। इंग्लिश में रहने दूं कि जापानीज करो, ऐसा पूछ रहा हूँ। Makes sense. इंग्लिश वाले बंद। But Paimon wonders how Seat Lolly Change could to be the Japanese. first हाँ, one वही to मेरे को notice बहुत Auroran's weird लग रहा है, disappearance वो if she spends the मेरा। whole day in her room. Huh, so Yeah. Plus, we kind of owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. this is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Po Kanich. जापानीज में बैठा है। Then, yeah. Okay, then let's part ways for now.
Yup, yup, yup. All names are noble. Take it easy. ग्रेन फ्रूट, मैं ग्रेप फ्रूट बोलने वाला था उसको. ग्राफिक की सेटिंग में अभी तक कुछ नहीं आया. 120 कब होगा? वॉइस ओवर लैंग्वेज जापानीज. एक बार बंद करके चालू करता हूँ. ना 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 ना. ना ना ना. ड्राइंग का स्ट्रीम करूंगा कभी. कभी सोचा नहीं है मैंने उसके बारे में. हाँ कर सकते हैं बोलना. लेकिन वो ड्राइंग मतलब मेरे को ड्राइंग भी पसंद है, लेकिन ड्राइंग कैसा मैं एकदम मतलब जैसा एकदम हमेशा नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी ही करता हूँ. लेकिन मेरे को पसंद है, मतलब अच्छा लगता है करके. गेमिंग सामान ही है लेकिन गेमिंग ज़्यादा अच्छा लगता है. दोनों ही अच्छा है यार, दोनों. कभी करूँगा, सोचूंगा किस पे करूँगा. उसके लिए कुछ मतलब ऐसा पेपर मेरे पास. स्क्रीन वाला तो बहुत बेकार रहेगा भाई, मतलब ऐसा माउस से करूँगा तो. माउस से करूँगा बहुत बुरा रहेगा वो. उसमें क्या बनाएगा. Konnichiwa. Day after tomorrow. कुछ भी जो अच्छा लगे, कुछ भी. कर सकते हैं बोलना, लेकिन अभी फिलहाल तो स्क्रिबल बोल के एक गेम है ना. स्क्रिबल करके एक गेम है. अच्छा उसमें मतलब सिर्फ ड्रॉ करना पड़ता है. बहुत हाई पिच पाइमोन की वॉइस इसमें. 旅人パイモン残念ながらシトラリからの返事はまだないよ。ま、こんな返信がないってケイニチをシトラリは一筋縄ではいかない。変わった性格をしてるんだ。名園の主の人も付き合いにくいって言ってる。聖火競技場に行って待ってみよう。会えれば話せるかもしれないし。जापानीज पाइमोन क्यूट है. それもそうか。じゃあ行こうぜ。 मतलब सारे वॉइस में कि से मतलब ऐसे में. मतलब सारे मतलब दूसरे इसके कंपेयर में बोल रहा हूँ. ओके बाकी वॉइस नहीं पा. 急がなくてもいいのよ。 1426 मीटर. कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे पास? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं.
5 स्टार よく考えられた提案だと思ったけど होंगे 10 確 12 かにシトラリには答える義 नहीं 務 वो も नहीं ない है しね लास्ट टाइम पे मैंने विश नहीं किया उसके लिए मेरे को पता भी नहीं मैं उतने टाइम पे आया ही नहीं लाइव भाई そいつだって वो जितने टाइम उसका बैनर था ना मैं लाइव नहीं था उतने टाइम और मतलब मैंने गेंशिन ही ऑन नहीं किया उतने टाइम トミーマービカは अभी 確かに जस्ट मैंने リーダー आज だ ऑन けど किया है गेंशिन इतने दिन そ बाद こに超えられない लास्ट 身 टाइम 分の बहुत 壁が पहले た ऑन だ किया था 要望を出すときはいつもエンジンは強いのにあんまり尊大なイメージもないし優しい。でもそのグラスバーバってやつは偉いからって人を無視するなんて कोई नया さす कैरेक्टर が है にひどすぎるぞ。 वो विच सामान みんな दिखता すごい है नहीं नहीं すご कोई いって दूसरा 言うけど結局変身もしてくれなかった。おいらはそんな年寄りには絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。うわー誰だ急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから、耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの？シトラリお前がシトラリか स्टार お前ってグラスバーバじゃないのか。グラスバーバ नेक्स्ट किसके लिए सेव कर रहा हूँ 重 मैं 要なのは तो 黒曜石であって आकॉन के लिए प्लान है ロー मेरा バじゃ आकॉन ないの。 चाहिए विद वेपन निकालने का सोचा ग्रानी 小説でもよくあるでしょ。 हाउ ओल्ड इज शी ब्रो 見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない？別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。ああ、言い忘れてたかも。シトラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。忘れてただけだし、みんなとっくに受け入れてるからさ。 she's a granny like Paru まあレディーに年を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ。あまりにも変わってるからさ。謝りたかったのに話せば話すほど混乱して。おいらお前がもう来てくれないと思って。シトラリ、呼んだのはうちだから、責めるならこの子たち。 पिजन तो किसके लिए विश करने वाला है पेंगुइन सॉरी सॉरी मैंने पिजन क्यों बोला पेंगुइन भाई तो किसके लिए विश करने वाला है क्यूट तो है ग्रानी もういいって。そんな真面目な空気にされたら逆にいたたまれなくなっちゃう。さっきの言葉は気にしないで。 उसने एज की नहीं किया वैसे वो क्वेश्चन है मेरा キーニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で来るって決めてたの。でもそう決めたならわざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。直接来ればいいわけで。 अपन सिर्फ दो ही जाने लगता मतलब तुम और मैं पिजन और सॉरी पेंगुइन और मैं でも गारंटीड है सही है यार कॉन्ग्रेचुलेशन अभी से मिलने वाला है मतलब 出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃってよくあることでしょ。でようやくついてみたらみんな私より早く来てるし気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。さりげなく登場しようと思ったけどみんなはもう話し始めてるしどのタイミングで謝ればいいかわからなくて、しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってる उसकी आंखें कुछ ज्यादा 2D में नहीं चली गई 思っちゃった。とにかく उसने आंखें そう बंद い की う थी こと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。 I got keychain and 20 pulls now it a mana यूज कर रहा है なんでそんな顔。さっきのが気まずかった反応。名園の主の人が言ってた付き合いにくいってこういうこと？なんか人付き合いが下手っぽいっていうか挙動不審すぎでしょ。とにかく本題に戻りましょう。白ね。
今回はかなり特殊な状況なんだ。実はहिडन है किचिंग な है るほど。マービカ कि 様は सागा 外 ड्यूलिक の चाहिए 人 था の米を作ってほしいっ सागा て言ってきたわけ。そういえば君たち साला ड्यूलिक चाहिए था オロルンの डीलुक こと चाहिए था オイラたちはまさにそのために来たんだぞ。オロルンを見つけてやるから、コメの問題を解決してくれないか？君、旅人でいいかしら。こっちに来てちょうだい。顔をちゃんと見せて。 Let me take a good look at you जागा उसकी जगह 人々は富のために争いをやめないけれど、君は黄金を超えた。人々は雷帝と怒涛を恐れたけれど、君は海を渡った。自由を求める疲れた魂よ。最も鮮やかな色彩を持つ緑の葉っぱも、君の安らぎを君から見たものよ。君はみんなが思っている以上にたくさんのことを経験してきたのね。そして誠実な英雄の心を持って炎と共に暗い夜に入る勇気がある人。動かないで。 डीलुक प्लंज मस्त है 何か प्लंज なんだよ、オイラを脅かさないでくれ。知りなさい。はい。八神の国から帰ってきた君の体には魂の残留物がついてたわ。もうこれをちょっと連れて帰ってきちゃったってこそこまでひどいわけじゃないけど、放っておくと精神が不安定になったり気分が悪くなったりするだけ。払ってもらえてよかったね。お安いご用よ。シロね、君たちの計画に乗るわ。オロルンを見つけてくれたら八神に会わせてあげる。八神？おい、大霊にじゃないのか？これほど重要なこと、部族の大礼には決められないもの。異邦人に古名を作れるかどうか決められ、八神は八神の国を管理する古の生命体で、常に聖火の力を借りてアビスの侵食と戦っ नाइट てるの。 किंगडम कॉन्स्टेंटिंग ऑन द पावर ऑफ सेकंड किंग なるほど。簡単に言うと、大霊よりそれはちょっと違う。話を戻すけど、矢が脱婚のような儀式を行う。じゃあうちが行くよ。よし。じゃあオイラ相手はファデュイなんだし。無理はしないぞ。こっちはあの悪ガキを探さないとね。今日は遅刻しちゃってごめんね。実は来る前にオロルンの拠点に、あの子は一人で暮らしてるんだけど、拠点にある壺が壊れてたの。あの子が飼ってる年数、部屋の中には刃物を使った跡もあったけど、誰かが部屋に入ってオロルンを誘拐したってことか？でも野外でミツムシを飼ってるだけの子を別にオロルンに非がないって言ってるわけじゃないのよ。でも中には人が大勢いるのに、どうして。まあとにかく早くあの子を連れ we'll 戻し get て to the bottom 聞 of いてみない this こと and には once we ね。 massacre him black there ぶしつけなお願いをして本当にごめんね。でもオロルンを探すには君たちの手助け。オイラたちに任せてくれ。 बॉट्स नहीं है क्या चैट में? ए सॉरी यार मैं थोड़ा उधर देख रहा था, भूल गया मैं. え तेरे को देख रहा ध्यान नहीं था मेरा. オロルンが चैट में 最後に बॉट्स 目撃 मतलब さ कि れた मतलब ところ ये に सा 行ってみましょう。 स्ट्रीम लैब्स और ये स्ट्रीम एलिमेंट्स ऐसे टाइप का. स्ट्रीम लैब्स मैंने चेक नहीं किया यार, शायद तक मेरा वहां से लॉग आउट हो गया है ना, तो मैंने उसको एक और बार सेटअप करना पड़ेगा. उसका पॉलिसीज वगैरह कुछ चेंज हुआ होगा, तो उसको एक और बार क्लिक करके मेरे को ऐड करना पड़ेगा. नाइट बॉट नहीं है, स्ट्रीम लैब्स यूज़ करता हूँ मैं, और स्ट्रीम एलिमेंट्स पहले था, उसको बंद नहीं किया मैंने, तो बीच बीच में कुछ करता था. और उसके साथ 8 बॉल गेम खेल सकते थे. शायद तक बंद है वो. मैसेज दिखे नहीं मेरे को उसके, क्योंकि दिख जाना चाहिए था अभी तक. तो क्या हो गया, येलान फंस गई वहाँ पे. आज यूट्यूब का थोड़ा व्यू थोड़े अलग ही दिख रहे हैं, मतलब व्यू काउंट अलग चल रहा है.
目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。こいつ、中では人望があるってキイニチが。オロルン मैंने अभी उसके सर के पास वो दो सर्कल वाले रिंग नोटिस किया। मैं जब से ध्यान नहीं था शायद कि अभी पहनी उसने। 一人で離れて暮らすよ。友達づてにいつも野菜を送り届けてくれるんだから。本当にいい子なのよ。まあいいわ。とにかく探しましょう。人を見つければ手がかりも手に入るはずよ。オロルンはミツムシを飼ってるけど、あの子たちはउसके पेज पे ज़ूम अप पहले भी किया था लेकिन मैंने नोटिस अभी किया है वो पता नहीं। 痕跡を追えば、オロル痕跡をたどってみましょう。痕跡ってどこにあるんだ？おいらには見えないぞ。ああ、そっか。君たちの目はさあ。हमको क्या दिखने वाला है? How about now? Nothing. Just a line. डाटा फ्लो होते दिख रहा है मेरे को वहाँ पे। ええ、巫術で私の感覚を一時的に分け与えたの。しばらくの間、君たちにも年素が。そんなのって誰かに与えられるものなのか？初めて。珍しい巫術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。さっき君の手を握ってみたけど、君は年素との相性が良さそうよ。才能があるって言えばいいのかしら。とにかくこっちだ。この方向であってそうだぞ。ひひ、シトラリはわけのわからないことばっかり。मेरा स्किल का रिचार्ज अभी तक हुआ नहीं। मैंने 2 बार लास्ट टाइम यूज किया उसको, अभी तक उसमें रिचार्ज नहीं किया। मतलब क्वेस्ट के बीच में रिचार्ज कर नहीं रहा है वो। पहले करता था शायद तक, मेरे को ऐसा लग रहा है। 頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてた。まさか私って全然時代についていけてないの？कुछ ज़्यादा सोचते हो। और उनको वो भी सुनाई दे रहा है शायद नहीं। この声は。そういえば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい。何その目、自信満々ね。なんだかYou bet. おい、キャンプの跡があるぞ。結構。おい。おいらのガイドとしての経験から見た感じじゃ、やっぱり。ちょっと待って。ここの年素、ちょっと見てみましょう。何かのマークみたいだな。これは名園の主の人が使う助けを求めるサインなの。わかるのは私たち部族のものだけ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク。वो पीछे वाले ने थ्रेटन किया है उसको, वो लेटा है वहाँ पे। ファデュ正面からぶつかることになるなら全力で戦う。でも मेरा चैट फिर से गायब होने लगे ना। मेरे को चैट दिख, अच्छा वाले इस पे दिख नहीं रहे। वो उसका इशू था ना, तूने बोलता ब्राउजर का।
मैं बोल रहा कोई रिप्लाई कर रहा है ना, मुझे चैट नहीं दिखा, सच में चैट नहीं दिखा। और मेरे इसमें तो पक्का बैंड नहीं है भाई। मैं बोल रहा कोई रिप्लाई कर रहा ही नहीं। शायद तो वो अकाउंट का टाइम आ चुका है उसको दबाने का। ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन यार, मतलब चैट कैसे शैडो बैन होती है? बैन का इशू तो है ही नहीं, ये क्रोम लगा रहा है क्रोम लग रहा है こっちにも誰かがいた痕跡があるぞ。待って、年祖の痕跡が複雑になってきてるわ。知ってる。キーニチはお前のことすごいやつだって言ってたぞ。キーニチったらやっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡を。パイモンको दे गया। 現場の痕跡から見ると、おそらくここで戦いがあったんでしょうね。でもその後、年祖も元祖も मेरे पे कितने हैं? मेरे पास उतना ही है भाई जितना मैं छोड़ के गया था 44। オロルンは助けを求めるサインを 44 है और नेक्स्ट विश पे शायद तक कैरेक्टर मिल जाएगा もし अपने か को, したらここでもサインを残そうとして लेकिन गारंटीड नहीं है इस 書いちゃ बार, ったんじゃないか。 तो तकलीफ रहेगा। 別々の方向に向かったのなら、私はこっちに進むからそっちをお願い。 कितने हो गए किरण भाई तुम्हारे? कितने हो ま गए? た後 कितने で से 合 हो 流 गए? しましょう。ホロルン、一体何してるの？私だけじゃなくてみんなに心配をかけるなんて本当いけない子ね。 Hello PK Gaming, how are you bro? PK Gaming गेमिंग चैनल भाई क्या करता है? लाइव स्ट्रीम, गेमिंग, गाइड्स। つ सॉरी い言っちゃったぞ。 मैंने गलत बटन दबा दिया। 旅人、お前も聞こえてたよな。 चैनल चालू है भाई। ストーリーがいなくなったら声も消えた。 I lost my 50-50 to Shonen by the 何の反応も way なかったぞ。 290 pesos मेरा तो なあ、 just name て okay っきり会話できるのかと思ったんだけど、こっちにはあいつの心の声が聞こえて、 get 向 her こうも नहीं オイラたちの心の声が聞こえる okay っ नहीं है て okay な。 बस पूछ रहा था, मेरे को लगा कि होगा। この武術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさ इसके そう पहले भी だ जस्ट けどな。 अपने चैट में एक जना आया था, क्या नाम था もしかしたら उसका? オイラたちが特殊だから副作用みたいなのが出てきちゃったのか。あいつの心の声賑やかだよな。思ってたのと全然違うぞ。 क्या नाम था उसका? लहरा था वो। वैसे तुम्हारा वो वियर्ड सब्स बहुत दिनों से नहीं दिखा, वो जो छोटी बच्ची बन के नाटक कर रहा था। अच्छा वो लैला, 身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。 यार डाउट आता है तभी। एक सेकेंड यार, कहाँ गया?悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから
仕事を一気に終わらせるわよ。क्या कर रहा था? मेरे फोन में एक मैसेज आया यार, वो चेक कर रहा हूँ। भाई この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利。 भाई कंफर्म तो था कि वो 君にも कि ये लड़का है। अजीब हरकतें कर रहा था वो यार। ここには手がかりがないみたい。 वो क्या एज नहीं करती है क्या वो? मतलब 急 वो がなくてもいいのよ。 こっちにも痕跡があるぞ。進んでみようぜ。 मतलब वो एज नहीं करती है कि वो ऐसे बर्फ में फंसी थी कैप्टन अमेरिका सामान, ये ऐसा कुछ है। ये उसका वैसा ही है, मतलब वो एज करती नहीं है। हेलो पीके ब्रो, स्टिल हियर। 手がかりが見つかったのか？ गेंशिन खेलता है भाई? गेंशिन オーロルンがどっちに मतलब 向かったのか खेलता हूँ तो ही देख रहा हूँ, या फिर नॉर्मली लाइव स्ट्रीम सर्च कर रहा है बस तू। और गेंशिन के अलावा कोई और खेलता है? अगर गेंशिन खेलता है तो बस जोंगली और ट्रैवलर ही उसको 足跡とかも全 रखते हैं। बाकी सब के लिए वो ग्रानी है। 然生身の人間が急に消えるわけないし、ファデュイもいたはずなのに。まさか कल ही एक क्वेस्ट कंप्लीट किया じゃ गया। ないよな。 गेंशिन के अलावा और कोई है गेम है जो पसंद है? どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。 अपना ट्रैवलर भी बोलने लगे है इसमें आजकल, मतलब बोल नहीं रहा है लेकिन उसकी आवाज सुन रही है। वो ट्रैवलर की आवाज नहीं थी, सॉरी, वो ट्रैवलर की आवाज नहीं थी। मोबाइल लेजेंड्स, मैंने मेरे फोन में ट्राई किया था डाउनलोड करने का, नहीं हो रहा था वो। मैंने यार बस जल्दी जल्दी ये फालतू चीज़ों को कंप्लीट कर दो। ये क्वेस्ट जबरदस्त है, बस जल्दी जल्दी ये फालतू चीज़ों को कंप्लीट कर दो।悪いが मोबाइल 動かない लेजेंड्स, でくれ。 मोबाइल चाइनीज चीज़ों गेम से है। खेलना। मोबाइल लेजेंड्स 5 होगा। नहीं, मैंने प्ले स्टोर पे सर्च किया नहीं है, मैंने इसके पहले भी सर्च किया है। 危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。君は戦いが得意だから、他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今、こんにちは、旅人。僕が君の探しているオロルンだ。 कौन बंदा है? ああ、脱出。やはりそう思っていたか。ばあちゃんもきっと एपी की प्योर से कर लो। ファデュイに脅 वैसे されている लीग と ऑफ 言った。 लेजेंड्स का टूर्नामेंट हुआ लास्ट वीक। 煙に包まれた偽りのサインを見た君は嘘を追ってここに来た。 मजा आया फाइनल देखने में, मतलब कैसे टाइप का टूर्नामेंट? あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは君ともう一人の友人を合わせ。来たな、異教の旅人。 फर्स्ट टाइम देखा मैंने लीग ऑफ लेजेंड्स। 旅人の魂はこちらの मजा आया 勢 देखने 力 में। にあるが、かなり脆くなっている。 मजा आया है, मतलब देखने में 慎重 समझ に गया 扱 मैं। わないと。 फर्स्ट टाइम मजा है। お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式で同僚が世話になったそうだな。お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、俺はこの先
お前と正式に話をしたいと思う。 कैप्टन एज अ कैरेक्टर खेलने मिलेगा अपने को? मेरे को नहीं लगता, बहुत कम चांस そ है. の時になれば、こんなことをした理由とマービカを疑う理由を एज अ 説明 कैरेक्टर し नहीं आएगा वो. とにかく当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ競技場の東を探すがいい。これ以上 वैसे मेरे थर्ड ईमेल आईडी ऑन थर्ड ब्राउजर. इसके पहले जो ब्लू वाला था वो दूसरा था क्या? 知られずに来てくれ。 ये कौन सी वाली बातें है भाई? 現実世界でもいずれ会うことになるだろう。 मैंने लास्ट वाला स्किप कर दिया गलती से. मेरे पास 6 आइडिया है वाइट अकाउंट पे. Just now, you sent me to other 急に songs. 倒れて。 तभी तो मॉड है यहाँ पे. अरे बहुत जगह मॉड है भाई वो. シトラリー、こいつぼーっとしてると思ったら急に倒れちゃったんだ。まさか八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？ゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。 मॉडरेटर से गॉड मत बजाना. 具合が悪いって知ってたら無理してお願いしなかったのに。具合が悪いなら言ってくれよ。何かに取りつかれてるのかもしれないし。いつも旅をしてるなら無理は禁物ってわかるはずよね。何か頼みがあれば遠慮なく言って。とにかくもう少し休んだ。 वैसे सेलेस्टिया में घर बेच रहे हैं. 1 लाख विशेष प्राइस है. चाहिए क्या? ज्यादा नहीं है. 46k कम पे हूँ मैं. मिल रहा है तो ले लेते हैं. だから क्या कितना कितने से मिल रहा है? 楽になったか？じゃあ 5 स्टैंडर्ड 次の準 कैरेक्टर. 備をしましょう。さっき連鎖の痕跡をたどってある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。ホロルンが中にいる可能性が高いわ。विशेष ओके. मैंने गलत पढ़ा. विशेष पढ़ना चाहिए था मेरे को. それってこの近くか？ नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए. इतना पैसा नहीं है. 君は私の助っ人で、私たちは एक दिन 風 पक्का. と雲みたいな अभी 関 नहीं. 係よ。お詫びなんていいからしっかり働いてちょうだい。 क्या मसल सिखा रही है वो? ना कुछ और. उनसा ओपी होने चाहिए वो फाइव. ये वो कैरेक्टर डेमो में फर्स्ट नाथाराम कैरेक्टर रिवील है. 急がなくてもいいのよ。 यूज भी किया तो वो न्यू कैरेक्टर मिल जाएगा जब आ जाएगा वो स्टैंडर्ड में. तो यहाँ के हिरन को ज्यादा लगता है. रॉ मीट ज्यादा लगता है. Look over there. I hope to capture radiance of Mavic banner. क्योंकि 50-50 है. ファドゥに捕まってたのね。おいらおい、何ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか。 यार वो 太陽がない。なんだと。太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。ちょっとどいてくれ。 फिर अगर ईटो का वेपन आया तो पुल कर रहा पाऊंगा. भाई ईटो का वेपन रेड हॉर्न स्पॉन्सर करो मुझे.
何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。 तुम्हारे पास नाइडा है? हाँ भाई नाइडा है मेरे पास। 5K का गेम ले सकता है, ईटो नहीं दे सकता। ए भाई लिया नहीं है मैंने। ओके シトラリのやつ。3、2、नाइडा まだ抵抗する気？君、空気が読めないのね。 मेरा कैरेक्टर अपने आप कैसे चल रहा है? सॉरी मेरा कंट्रोलर का थोड़ा इश्यू है। दूसरा वाला कहाँ गया वो? ये वैसे कितना बड़ा क्वेस्ट है? बहुत बड़ा क्वेस्ट है क्या? क्योंकि मेरे को अभी 2 मिनट मतलब एंडिंग तो नहीं होगा फिलहाल, मेरे को गारंटी है। ओरोरॉन बाचान シトラリがグラスバーマだってことは知ってるけそど、の怖くない。実際にばあちゃんって呼ばれるのって Vent is only Raiden Furina 感があるよ now な。 saving for Pyro Archon third ID। ए हेलो टोमो कैसा है ब्रो? बहुत दिन बाद नहीं, कुछ दिन पहले मिला था ऐसा। I did 70 plus pull and no gold wishes। 70 plus अभी क्या है? मतलब कि अभी कौन सा नंबर पे चल रहा है भाई पी के? じいちゃんだ。違うのか？君はばあちゃんの友人で同世代みたいだからじいちゃんだろ？ 74। そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。 वही 5 स्टार अभी मिल जाएगा, पास में ही है भाई, ज्यादा दूर नहीं है। たくさんいるけど、見かけるたびにばあちゃんや सिंगल विश भी करते जा। अगर 10 के लिए वेट नहीं कर सकते तो सिंगल भी पुल कर लेना, क्या पता एक में मिल जाएगा। 待てよ、こいつまさか子供なのか? अगर प्राइमोस नहीं है तो मतलब अगर ज्यादा प्राइमोस नहीं है और तू थोड़े थोड़े कलेक्ट करके एक एक में जमा कर रहा है तो 10 का वेट मत कर, एक एक में कर दे। मैं तो वैसे ही करता हूँ और मिल जाता है वैसे। その言葉はトゲのある剣 लोग のよう बोलते に深く 10 刺さ मिल る。 जाता है। ピンセットを使わないと取り出せないぐらいに。 I got it in 76। Okay, सही है यार। Why are you so upset? 僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには育ててもらった恩がある。ああ。 भाई अगर नेक्स्ट में नहीं आया तो इसलिए 4-5 विशेस बोला, झूठ क्यों नहीं थे? वाह じゃあお前は誰よりも年下で若造の हाँ सही है ना, 下っ端ってことだな。 गलत नहीं बताना, बात सही है। एबिस 4th फ्लोर तक हो चुका है। AR कितना है पीके भाई? AR कितना है तेरा? ほらルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？3つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるで 40 しょ。 है इसलिए थोड़ा 4th तक है वो। नहीं एबिस में कैसा बहुत सारे प्राइमोस है। ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？ अरे ये तो कबला है। 一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。なのに、हाँ よりによってこんな大きなトラブルに巻き込まれるなんて。
捕まっちゃったらもう बहुत कुछ है भाई एक्सप्लोर करने के लिए। AR-40 है तो बहुत सारे क्वेस्ट भी बचे हैं, 駆けつけてこなかったら तो बहुत कुछ है भाई, आराम से मिल सकता है। देखो अगर कोई कैरेक्टर चाहिए तो कौन से कैरेक्टर के लिए विश कर रहा है? ごめん नाइडा ばあちゃん次から気をつける मैं अज्यूम करूंगा। 次ですってこんな危ないこと次なんてあってたまるもんですか怪我させられた मिल जाएगा भाई, आराम से मिल जाएगा। बहुत टाइम है भाई, 13 दिन बचे हैं, इवेंट्स भी है और बाद में तेरा एक्सप्लोरेशन भी है भाई, मिल जाएगा। いや अगर इवेंट्स भी कर लिया तो あなたの एक्सप्लोरेशन में तो 地 निकल ही 形について जाएगा। 色々と聞かれて地脈の分布図を書くよう言われただけだ एक्सप्लोरेशन नहीं करना है तो ये क्वेस्ट कर लेना, उसमें निकल जाएगा। जिसमें ज्यादा प्राइमोस दिख रहे हैं वही क्वेस्ट कर पहले, नहीं तो मत कर कोई दूसरे क्वेस्ट कर। मतलब जो मेन ज्यादा प्राइमोस वाले हैं उसको ज्यादा पहले कर, फिर बाद में दूसरे वाले कर, फिर बाद में एक्सप्लोरेशन कर। 正直に答えてちょうだい ああ नहीं तो तेरा वो कंप्लीट नहीं होगा। कौन से देख, एनाजुमा और सुमेरु में एक्सप्लोरेशन करेगा तो और फाउंटेन में करेगा तो कैसा वो कॉइन्स मिलते हैं अपने को, सिजल्स मिलते हैं। फिर वो फाउंटेन वगैरह में और एनाजुमा में पेड़ में देने से, और क्या बोलते हैं, सुमेरु को रहने दे। सुमेरु कैसा वो बहुत लंबा क्वेस्ट है, वो मजा नहीं आएगा तेरे को इसमें, तो हो ही どう जाएगा। してそんなことしたのよ साकुरा ट्री वगैरह में वो वर्ष सिजल जमा करने से हो ही जाएगा। 僕の協力が必要 जो だ लोग と सुमेरु लॉन्च もし断ったら आए हैं अच्छा, वो उनको सका पताして ही नहीं चलेगा 何ら सुमेरु か का の方法で इम्पोर्टेंस। 痛めつけて भाई सुमेरु बहुत भाग प्लेयर हु को डाली। ばあちゃんはただものじゃないのそんなことできるわけないでしょこの子は本当にもう जो सुमेरु के बाद आए ना उनको वो भी नहीं पता चलेगा कि मैप में दिखते नहीं थे 様は कि कौन सा टेलीपोर्ट पॉइंट ऊपर है और कौन सा नीचे है, सब एक ही लेवल पे दिखते थे। 君の名前は出 गेंशिन में कोई चीज ही नहीं थी लेवल, मतलब हाइट लेवल का। 何にも知らないだなんて思わないで अंडरग्राउंड है कि बाहर में, सब एक ही たとえ जगह 予 भाई, 想していた सब एक 真 ही 実 समान। が訪れようとも डेजर्ट कैसे एक्सप्लोर किया था भाई, 必要はない बहुत दिमाग खराब का काम था वो। 教えたことごめんもういいわ倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから君の無実は証明できるでしょう इसलिए नाइडा इम्पोर्टेंस है बहुत। हाँ नाइडा का इम्पोर्टेंट है। इट वॉज टू कंफ्यूजिंग बैक देन। हाँ भाई さあ片付けて帰りましょうオロルン今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよわかった野菜を持っていこうか野菜 वेजिटेबल्स। ああ野菜をたくさん育ててるんだ新鮮だぞ今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょエンジン様に会ったらまずはこういうの3つのものには気をつける Recite the three 違 warnings. うでしょまずはファデュイと結託なんかしてないって弁明するの名園の主の नहीं समझ में आता था यार わかった रिएक्शंस का फर्क। वो फटुई के साथ नहीं है, वो पहले बताना। 3 वार्निंग्स कौन सा था वो, मतलब क्या वो बताना चाहता था वो, मेरे को वो समझ में नहीं आया। बस हाइड्रो और डेंड्रो से ब्लूम बनता था ये पता था। ब्लूम, मैं पागल था जिसने नाहिडा को स्किप किया था। You return to city but इतना なるほど。オロルンが隊長を逃がしたのは कोई अपा ファデュインああすまなかった一族のものを守るためだったってことに免じて許してくださるよう ये बंदे पे भरोसा कर सकते हैं। 説得してくれないかしら वो एक्टिंग तो नहीं कर रहा है कि मतलब इस तरफ आने का। 情報を整理してエンジン様に報告する。 ये 結果が出たらすぐに知らせよ वो जिसने हुड पहना है वो और ये पिंक हेड क्या चिटाली नाम है ना उसका, उसका क्या रिलेशन है? う。本当はそうなんだ वो が उसको ग्रैनी क्यों बुलाता है? सच में उसका ग्रैंड सन है क्या वो? 保証人になってく ये れる ऐसा の कुछ な है? ら自由に ये 行 कुछ 動 और して है। いい。 थोड़ी देर पहले 2 लोग चैट में नाहिडा को यूजलेस बोल रहे थे। ここで時間を無駄にするわけにはいかないの協力に感謝する。 2 लोग ने, オロルンさん、 एक तो आदि 知らせ था が届き次 और 第 दूसरा कौन な था? るべく早く談義室に来てくれ。 Adopted by clan। わかったありがとうばあちゃんもありがとう
इतनी अच्छा सारे 旅人パイモン रिस्पेक्टफुली ग्रानी बुलाते ओके 恩に着る。オロルンのことが落ち着いたらシロネのところに行きましょう。一緒に米を作らないと。うん、ありがとな。面倒だなんて助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあまたね。 You scratch my back, I scratch yours. オロルンついてきて。 उसके सर के पास वो क्या है? दो चीज जो घूम रही है। एंशिएंट सिविलाइजेशन वाला हेडफोन। ये बंदे में कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। ट्रैवलर को बना दो ग्रैंडपा। सब सही रहा और ये नॉन बोर्ड डीपीएस हुई तो पुल करूंगा। अभी तक लीक्स भी नहीं आया ना, मतलब टाइम है बोलो। अपना आर्कॉन कब आ रहा है भाई? आर्कॉन 5.3 टाइम है अभी। 5.1 चल रहा है ना, मतलब 2-3 2 महीने पकड़ लेते हैं अपन। 2 महीने में आर्कॉन आएगा। हेलो लेजेंड सेंपाई ब्रो, कैसा है? कैसा रहा दिन और कैसा है? We still need more information about that. そうだな。教えてくれて約束の時間まであと1日か。 चल भाई, ट्रैवलर को अगर ग्रैंडपा बना तो ना चाय खाएगी और एबिस बन जाओ। एबिस रहा बाजू। ओके बाजू वही बोला ना आया कि ट्रांसफर कर देंगे उसका बर्फ बना के। मर्सी बस इल्हू ब्रो, इल्हू क्या हो गया भाई? बस नॉर्मल खांसी जुकाम है कि कुछ सीरियस है? वैसे ठंडी का मौसम है, गरम ठंडा कर लिया होगा तूने, ऐसा लग रहा है। मैं तो अभी तक ठंडे पे शिफ्ट हूँ बोलना, जब जाके कुछ ज्यादा झटका लगेगा उस दिन गरम पे आ जाऊंगा। अभी तो फिलहाल ठंडे पे हूँ क्योंकि इतनी ठंडी नहीं है। wuthering waves left, wuthering waves है, अपडेट नहीं किया है मैंने, है वो अभी भी सिस्टम में है। यार मेरा पानी खत्म हो गया। फीमेल डॉक्टर के पास जाओ। नाइडा में कितना ईएम बेस्ट होगा? मैंने 800 तक है मेरी नाइडा पे। अच्छा तो होता है भाई मेरे 800 से 30 के आसपास चले जाता है। ब्लूम टीम पे हाँ मेरा भी 800 समथिंग है। 1000 कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। मेरा भी 874 क्या 874 डिफेंस था साला। रुक जा कहता था 955 है। 800 था। अरे मैंने वेपन चेंज किया, वेपन इधर उधर की शायद तक उससे हो गया। मैं आता 2 मिनट यार, मेरे पानी की बोतल लाता हूँ। मैं पानी प्यास लगी है मेरे को तो मैं आता हूँ। मेरी बोतल खाली हो चुकी है तो पानी भर के आता हूँ। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बस पानी भर के आ रहा हूँ। I can't tell you how happy I am after quitting wuthering waves. Now I have people, I have what people call wife. Live. भाई skip off finger. 5 live. Slip off finger, skip off finger. क्या चल रहा है किरण भाई? अरे जाकी भाई कैसा है ब्रो? फर्स्ट टाइम है इधर।
क्या चल रहा है? विच कैरेक्टर इज गुड, न्यूविलेट और आर्लिकिनो? न्यूविलेट और आर्लिकिनो? फिंगर्स आर वेट। थिएटर क्वेस्ट में कितना टाइम लगता है? थिएटर क्वेस्ट में कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए, मतलब कैरेक्टर्स ज़्यादा चाहिए और बने होने चाहिए, अच्छे से बराबर बिल्ड चाहिए, तो फिर हो ही जाता है। नवंबर हीट? नवंबर में कौन सी हीट भाई? आर्लिकिनो और न्यूविलेट में यार, आर्लिकिनो न्यूविलेट यार दोनों ही अच्छे हैं यार, लेकिन अगर एक ही चुनना है तेरे पास डेंड्रो के कैरेक्टर्स है वैसे, सॉरी डेंड्रो बोलता है इसको, न्यूविलेट समान कोई मुंबई में हीट है, हीट ही है। न्यूविलेट भी नहीं है ना आर्लिकिनो, दोनों भी नहीं है, दोनों में से एक ही ले सकता है। ए दोनों का बिल्ड, दोनों का बैनर एक साथ आ रहा है क्या भाई कि तू ऐसी चॉइस लगा रहा है? 5 बिल्ड कैरेक्टर्स तो है भाई, 5 से नहीं होगा यार, 5 से नहीं होगा, ज़्यादा कैरेक्टर सही है, 5 कैरेक्टर से कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे भाई। तेरे को एबिस में ही 5 कैरेक्टर से नहीं होगा, तू 4th फ्लोर में है तो आगे के फ्लोर में जाएगा तेरे को 6 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर लगेंगे एक ही फ्लोर पे। मेरे पास डेंड्रो कैरेक्टर नहीं है, मेरे पास सिर्फ रेडन काजुआ नाविया है। अच्छा डेंड्रो नहीं है भाई, नाहिडा के लिए जा, अगर नाहिडा नहीं है तो नाहिडा अच्छी है यार तेरी बहुत, अगर अभी भी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए आर्लिकिनो निकालू या न्यूविलेट निकालू? भाई ये आर्ली अगर महाविका के साथ आई तो मैं मार दूंगा किसी को। हार गया उस पे, अच्छा अभी गारंटीड है। न्यूलेट पे जाओ बोल रहा है एक बंदा भाई, नाइडा के लिए लोटस चाहिए तुम्हारा वर्ल्ड में। अच्छा आजा ना भाई, तेरे को वर्ल्ड में आके लोटस लेना है तो ले ले। What do you need, हाइड्रो डीपीएस और पावर डीपीएस? ये सही चीज है पूछने के लिए। एनी वन इज फाइन। न्यूविलेट लेना चाहिए, न्यूविलेट को बिल्ड करना थोड़ा इजी है, मतलब अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है तो। जैसे इसको भी तार दिया न्यूविलेट के, लेकिन जल्दी मिल जाएगा यार, इसके मेरे को मिले नहीं यार, अब टाइम बहुत लगता है। भाई मैं सबको न्यूविलेट निकालने क्यों बोल रहे हो? मैं भूल गया, मैं बैड एयर 56 में, एयर 56 है भाई, कोई भी नहीं। Hello Croito, thank you for subscribing bro, but you didn't message. Hey, thank you for subscribing Croito. Croito. Hey अपनी नाविया कहाँ जा रही है, सॉरी अपना कैरेक्टर कहाँ जा रहा है। मेरे पास आर्ली का सारे मटेरियल्स है लेवल अप न्यूविलेट का लिए, तो फार्म भी किया। कोई बेस्ट डीपीएस नहीं गेम में, इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स बिल्ड। जाकी भाई तेको न्यूविलेट और आर्लिकिनो में से दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? तेको दोनों में से जो कैरेक्टर कैसा अच्छा लगता है, मतलब कोई भी दिखने में खेलने में, मतलब दोनों का ट्रायल लेगा ना तू, तेको जो अच्छा लगा ना भाई वो निकाल। दोनों ही बहुत अच्छे कैरेक्टर है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये बेकार है, दोनों ही अच्छे कैरेक्टर भाई। मुझे लगा न्यू गेम का स्टार्ट कर दिया हूँ तुमने। आर्लिकिनो ना, आर्लिकिनो के लिए जा, फिर तू न्यूविलेट लेके क्या को बैठा है भाई, कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने का भाई। जाकी भाई तेको जो कैरेक्टर, मैं पता है मैं ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, अगर मेरा पूछेगा तो मैं देखता नहीं इसका बिल्ड कैसा है, इसका मतलब इसका मतलब वो देखकर लेता नहीं मैं, बस मेरे को अच्छा लगा मैं निकाल लेता हूँ।
そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも。हाँ कभी कभी मेरे को लगता है डैमेज का कि अच्छा लगा निकाल लेता हूँ कि वाटर कैनन्स अच्छी नहीं लगी बट डीपीएस अच्छा है। मुझे दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। आई सजेस्ट माविका आने वाली है तो आली के नो कितना यूज करोगे ये पता नहीं। हाँ आर्कॉन आ रही है तो भाई आर्कॉन भी एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आली के नो क्या पता तेरे को उससे ज्यादा मजा आएगा उसमें, क्योंकि मैं विश कर रहा हूँ आर्कॉन के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। तुम F2P हो या पे टू पी? मैं F2P ही हूँ यार, मैंने बहुत टाइम से अभी कुछ खर्चा नहीं किया यहाँ पे। मतलब मैं वो वॉकिंग वेलकिंग और वो लेता था, बैटल पास पहले लेता था, अभी कुछ लिया नहीं इतने में। माविका इज अ सब DPS। मैं तो रीरन पे लूंगा माविका को। तुम कभी कभी भाई। फिर डबल पायरो चाहिए तो आली क्यों ना नहीं, तो निवेद भी मस्त है। हाँ मजे समझ गया भाई। इसके लिए जाओ भाई, अगर तेरे को आली क्यों ना अच्छी लगी ना, जाओ उसके लिए। इतना सोच मत, जा विश कर ले ले। फिर बाद में तेरे को लगेगा यार उसके लिए विश कर लेना चाहिए था, नहीं ना वो इतना अच्छा लग रहा था यार वाला कैरेक्टर, ऐसा सोचेगा तू। आली के ना अच्छी लगे तेरे को पसंद है तो ले ले, अच्छा है कैरेक्टर, ऐसा नहीं कि कैरेक्टर अच्छा नहीं है। और कोई ऐसा मैं बोलूंगा नहीं कोई इससे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग जाकी भाई। मैं रोज स्ट्रीम करता हूँ वैसे, मतलब मैं बहुत टाइम से नहीं किया हूँ, कोई बोले उससे पहले मैं बोल देता हूँ, लेकिन आज से विघ्नेश रोज स्ट्रीम करेगा। ए मैं आता हूँ 2 मिनट पानी पी के। कब कब करते हो? मैं मतलब मैं दोपहर के 12 बजे के बाद फिर ऑनलाइन लाइन आता हूँ। आज मैं 12 बजे के आने वाला था लेकिन मेरा हुआ नहीं टाइम, लेकिन कल मैं ट्राई करूंगा 12 बजे का। और शाम को भी लाइव रहता हूँ मैं 6:30-7 बजे तक। वो कोई दूसरा गेम खेलते हैं, गेंशिन नहीं खेलते तब अपन। इस 38 के फ्रीना विथ पेंगुइन, वो गुड नहीं है क्या भाई? बहुत अच्छा है, गुड कैसे नहीं है, बहुत अच्छा है भाई। और पानी मतलब ये विंडो ना विंडो नहीं, मैं बॉटल भरने जा रहा हूँ भाई, बॉटल भरने मैं आ रहा हूँ यार। मैं बहुत देर से बैठा हूँ, प्यास लग रही है, मेरा गला से बुख रहा है। आता भाई मैं।子供たちは今頃どうしているだろうか。まあ、好きにすればいい。
私に報告か？聞こう。そのように私の瞳をじっと見つめるのはやめた方がいい。何を見てしまうとも限らないからね。私に報告か？
聞こう。ये भाई मैं बुआ नहीं खो दूंगा, रुक जा।子供たちは今頃どうしているだろうか。まあ好きにすればいい。हुआ कौन यार, मेरे को थोड़ा टाइम लगा। तंग मत कर। ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं बोला यार अभी जा ही रहा हूँ तो सब कुछ पूरे काम निपटा के आता हूँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा हल्का भी होके आ गया टंकी भरने से पहले खाली भी करके आ गया। नहीं तो फिर अलग गया रहता है यार, फिर बाद उससे पहले विंडो पे क्या है भाई, विंडो पे क्या है, विंडो पे नहीं। उस बार मैं बस विंडो बंद करने जा रहा था। ए भाई क्या करे तुमने भाई, ये क्यों ये कुएं पानी में नहीं आएगा भाई। Went river to get water। ना भाई ना, ऐसा कुछ नहीं है। विंडो क्या जोक है यार। एक बार मैं विंडो करने गया, बंद करने गया था बस, वो अलग था। और विंडो के साथ वॉशरूम में अलग करने गया था, वो अलग था। ये दोनों अलग था, दोनों मिक्स नहीं करा था मैंने, ठीक है। ये मिक्स इसने किया था, किरण ने मिक्स करा था, मैंने कुछ मिक्स नहीं किया था। ये दोनों मैंने अलग अलग बोला था क्लियरली। यार कॉल, हाँ हेलो दिया खाना ना, आओ आओ ऑलिव को दिया। बस पानी भरने गया था।
और बिस्किट का पैकेट लाया। बिस्किट थी नहीं कोई, एक बोबन का पैकेट दिखा, याद आया बोबन का पैकेट रखा था मैंने मेरे पास मेरे बेड पे बोलता हूँ, टेबल पे, ड्रॉर पे था, मिल गया। बस एक्सपायर नहीं है, पता नहीं कब लिया था, नहीं आ रहा मुझे। पैकेट बराबर तो लग रहा है। डार्क फैंटेसी वाला बोबन है। बर्बन एक बारिश हुई और इसको ठंडी का टाइम था यार, थोड़ा ठंडा मौसम था तब होगा। तुम्हारे बेड पे और मिलेगा खाने के पैकेट और ना नाम नहीं लेते, वो आखिरी वाली चीज और के बाद वाला नाम नहीं लेते वो चीज का ना, नहीं किया ना यार, बस विंडो बंद करने गया था, नहीं किया मैंने ऐसा कुछ। बाजू वाला देख लेंगे भाई। कोंबानवा, 会えて嬉しいよ。幽霊みたいに後ろから急にYes, いつもの癖で。本当。お前って謝ってनहीं おとなしそうに ये गलत साउंड कर रहा है, ऐसा नहीं। なんで変なことばっかするんだよ。君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。なんだよ。おいらの वो こと गलती से ばあちゃん निकल っ गया て呼 मुंह ぶ से। か。まあ、そう言えなくもないが。ああ。ये बंदे पे भरोसा कर सकते हैं? 誰もついてきていないみたいだ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強い。 पुराना दिखाना तुम्हारी ओके दिखाता हूँ। 危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。 सच कभी गलती से नहीं निकलता, そう गलती いっ से た人 झूठ 物と निकलता। は協力関係を結ぶべきであって敵にはなりたくない。 यार इससे मेरे को फंसा दिया ये बोल के, しかしこのまま लेकिन 何もし ऐसा なければ कुछ नहीं था। सच कभी गलती से नहीं निकलता, गलती से झूठ निकलता है। ये सच भी तो निकलता है, अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो गलती से सच निकल जाता है। もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知ればお前も俺の提案を前向きに考えたくなるかも。エンジン様の計画はもう知ってるんだろう。アビスを倒してナタを救うにはあと2人の英雄を待たないといけない。 अभी अभी बनाया, सही है यार। तेरा दिमाग इतना फास्ट चला। そこはいいか。もう知っちゃってるわけだし。 मेरी फुरीना दिखाता हूँ भाई, पेंगुइन भाई फुरीना दिखाता हूँ। 計画の進捗には常に注目している。もしものことがあればナタだけではない。当に他に方法がないのか。 लगता है फिलोसोफर बन जाऊंगा 別 मैं। の大応急策って。たとえ今の計画が失敗しナタを存続させるための方法だ。しかしその方法には悲惨な代償が伴う。からこそ彼女はそれを予備案にしたのだろう。 को फिलोसोफर शुगर होने मिली चाहिए। ためらい、恐怖。最も心配なのは多大なる責任が降りかかる中で彼女が悲惨な事実に向き合う。 मेरी एक थ्योरी है, ट्रैवलर के 予備案を ट्रैवलर 実行 थे する सिबलिंग 機をも逃し ने अननोन गॉड को डिफीट नाता को करते全滅 अबिस させることだ。 से आर्कॉन पर अटैक किया। だから彼女そうだぞ。証拠でもあるのか。そんな一方的な話をオイラたちがあの時神の心を奪やはりする。 I have a theory, traveler and his sibling あの are 件は married. 女皇陛下 नेक्स्ट स्टोरी में वॉइस लाइन होना चाहिए।
नेक्स्ट स्टोरी में वॉइस लाइन होना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? 神の आवाज नहीं आ रहा है क्या? めるべきだが इसमें थोड़ा सा मेरा ये हिल गया। 目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。お前が賛同してくれるならば今すぐにでも。 वो दो जन का वो केनेथ और उसका दोनों का भी रहेगा क्या? 誰か来る。 Someone's here. Captain disappeared. I guess. 何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって。 Chomps, it's your granny. 君のばあちゃんだけど。ストラリ二手に分かれようって決めた時には気づいてた。よくも私に黙ってファデュイと手を結んだわね。すぐ黙り込む。それで見逃してもらえるとでも思ってるの？ One punch granny. そういうわけでは。まだ強がる気？そうじゃなければなんだっていうの？ Yale quest. 後ろ。無知く。落ち着けよシトラリ。今回は収穫がなかったってわけじゃないだろ。戻ってからにしようぜ。な。いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。お仕置き。二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。行きましょう。 Okay. या कॉपीराइट का कोई इशू था क्या? वो उनके वॉइस में, इंग्लिश केस में पता नहीं, दिखा नहीं रहा कि उनका कुछ है, मतलब गेंशिन का कुछ लोचा है वहाँ पे उनके वॉइस एक्टर्स के साथ। नहीं मेरे को नहीं पता, मैं पूछ रहा बस, ऐसे कुछ इशू है क्या? मतलब उनके साथ कुछ चल रहा है, मतलब こんな子見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのかちゃんと説明し。あら？答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？ किरण एक्सप्लेन करना। हाँ उसको पता है शायद तुमको लग रहा है। よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？普段は聞き分けのいい子なのに、どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったなら、こんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわ！こんなところを見せてしまって申し訳ない。बहुत हो गया, बहुत हो गया। कंट्रोलर चेंज। इसमें चार्जिंग है क्या? लेकिन क्या पता, देख लेंगे। चार्जिंग चाहिए मेरे को, इसमें होनी चाहिए, चार्जिंग होनी चाहिए। अबे अपडेट नहीं है, अपडेट कर ले। कंट्रोलर के भी अपडेट आते हैं। एक बार एनालॉग पे तो गिरने दो, कंट्रोलर भूल जाओगे तुम यार। नया कंट्रोलर की याद आती है फिर। सारा ठीक करने में पैसा बहुत लगता है। काश वो ठीक करना मेरे को आता। मैंने खोल के तो रखा था यार, गलत से गलत पिन काट दिया था मैंने। गलत पिन कट गई थी मेरे हाथ से। फिर पता चल गया था अपने हाथ की बस का नहीं है ठीक करना। हाँ चार्जिंग है। थैंक यू चार्जिंग। दूसरे वाले को चार्जिंग लगा देते हैं। इसमें चार्जिंग लग गई, तू सटक ले रहा भाई। चार्जिंग आवाज नहीं है यार? इसमें भी तकलीफ है क्या? 君は優しい。普通の人ならとっくに逃げてるかも。 हाँ भाई वो दोनों की वॉइस क्यों नहीं है? कुछ इशू है क्या मतलब?
君たちね Between yourself and introducing me. ごめんよばあちゃん वो भी ग्रैनी बोली उसने पाइमॉन ने. まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。君たちはもう立派な大人で、 Old hag like ば me. あちゃんの言うことなんて聞いちゃいないの。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファづてにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。イファって誰だ？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだから、きっとろくな子じゃないわ。はあ、子供って大人になるとほらね、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。なんだかうちわの話題に入っちゃったな。全然わ。それは違うばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。この声はほらね、なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？ That's just an illusion. 本当に申し訳ない。あなたを救う責任は。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったらもうなんで急に遠くに行っちゃったんだ？ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？ああ、もうムカつく。今度は落ち着いてくれよ。でもオロルンはどうしていつも逃げるんだろうな。さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。問い詰められればいつかは口を割ってしまう。町までもうしばらくかかるから、ゆっくり歩いていきましょう。Paimon, Paimon, Paimon. एक और बार देख लेते हैं। हाँ भाई, 1 डे रिमेनिंग है। 1 डे रिमेनिंग है, तब जाके होगा भाई। वो कल कर लूँगा मैं वाले दूसरे अकाउंट। जितना हो सके उतना करेंगे, स्किप करते हुए। नहीं हुआ तो जान देंगे क्या हो रहा है। हेलो सोमेश भाई, कैसा है ब्रो? सोमेश भाई कैसा है? इवेंट कर दिया क्या? सब इवेंट नहीं किया मैंने, बस जो 1 दिन में जाने वाला इवेंट किया है, और थोड़ा सा बचा है वो इवेंट भी। और बस क्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मेरे को देखना था क्वेस्ट में क्या आया भाई। ずっと何も食べてないよな。気が緩むと一気にお腹が空いてきた気がするぞ。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。いいのか？おごってもらえるんだぞ。でもさっきからこいつ全然喋ってないよな。まあオイラたちは立派な冒険者だからな。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。オイラたちはあ、モラのことなんてどうだっていい。長いわかったから。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。गुड, आपका कैसा शुरू है? ये अच्छा है सब। मेरे को पहले टाइम लगा, क्या लिखा भाई इसमें? कैसा का शुरू है? मैं मराठी बहुत अलग बोलता हूँ। सही है, सब सही चल रहा है। इंग्लिश में वो है नहीं ना भाई। तगड़ा अच्छा है। यप, सॉरी, वो इंग्लिश में 2-3 जनों का वॉइस ओवर नहीं था ना, इसलिए मैंने हटा दिया। 何見てる
हाँ मैंने सॉरी मैं तुमसे बात करते करते ना कुछ कुछ स्किप कर देता, ध्यान नहीं आता था, इसलिए मेरे पास दूसरा अकाउंट है पता है। 顔がそっくりね。 Are they twins? But she is drunk. पीने के बाद ऐसे ही होता है क्या? किसी ने पिया है कभी? しかいないけど。あらどうして見間違えたのかしら。マスターおかわり。まさか酔ってるんじゃ。はい、ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。オイラたちを知ってもちろん。カチーナを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもん。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。पाइमॉन और 2-3 कैरेक्टर्स की है। おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当なら हाँ कुछ कुछ कैरेक्टर्स कह देगा ना, बस 2 की कैरेक्टर्स की नहीं है, लेकिन おばあちゃんは名園の主の有名人だからみんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあらチアンカ、私の前で悪口？悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。इंग्लिश कर दो, बोर हो रहा हूँ, इंग्लिश कर दो डबल। お得意さんになってくれるでしょ。मेरे को इतना बताओ अगर बीच में जो कट सीन है उसमें वो 3 कैरेक्टर की आवाज है क्या? मतलब कैरेक्टर्स की आवाज है कट सीन के बीच में? 見ててくれなくたってテーブルに吐いたりしない？じゃあその言葉を信じるわ。कट सीन के बीच में वो कैरेक्टर्स है क्या तीनों? हाँ कट सीन सबकी आवाज है। ओके सबकी आवाज है कट सीन में। ओके この黒曜石のシトラリと勝負したいの？おい、起きてるか？誰もいないところに向かって喋ってる。勝負してどうなるの？負ければ怖くなって भाई सबटाइटल पढ़ रहा हूँ नीचे में। から逃げるんでしょ？どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って、私のどこが妖怪よ？どこが妖怪に見えるの？ ये बंदी गई। ばあちゃんは妖怪じゃないぞ。 You are not a monster at all. 暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入りそう、君のことよ。 Yes, I'm a new kid. とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった？ ये पढ़कर やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう。 कुछ नहीं से कुछ अच्छा ही सोच के चेंज किया। हाँ यार उनकी आवाज नहीं आ रही थी ना तो मेरे को लग रहा था मेरा हेडफोन, क्या मेरा हेडफोन में प्रॉब्लम नहीं है? ये पीकर है क्या? हाँ भाई हाँ वो ड्रंक है वो, इसलिए वैसी हरकत कर रही है। まさか目を開けたまま Sleep with the eyes open. 漆黒の帳の中でゾウ。おばあちゃんは瞑想してるの。 Meditating? 飲みすぎるとこうなるだけで寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か？名園の主っていうかシトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。でもおばあちゃんにできることはなかなか真似できない。警戒。警戒の赤が昇る。
旅人パイモン。どうかしたのか? क्यों पिया उसने? कहाँ से पिया? अरे वो अपने को ट्रीट देना चाहती थी वो खाने की, तो वो खुद पीती है। ちょっと吐き気が उल्टी करने वाली है वो। ちょっと大丈夫？吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。本当よ。 अरे यार सोही कॉफी ओपी है। 大丈夫か? ちょっと歩いて呼吸を整えるか? はあ、話したいことはいっぱいあるんだけど。なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいい。君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか? そんなんじゃないの。 Osmanthus war in the Ventian zombie। こんなに長く生きてきても 3 hours की स्टोरी एक साथ में कर दी। 君実は。何？いい機会だし行っちゃおうぜ。You heard my mind. 私の心の声？気にしないでくれ。別に大したことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない。なんでそんなことが起こったの？声に出したのを聞かれちゃうの。私も心の中で家の鍵がかかってなくて、キャベツを届けてくれた人にそんなことまでしてた。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。外に出ましょう。絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざ。 Audio, sorry, आपने language. और कितना बड़ा? बहुत बड़ा क्वेस्ट है भाई ये दर्शन भाई, और बहुत बचा है क्वेस्ट ये। मतलब अभी तो बस मिडिल का चल रहा है ऐसा। इन्हें ड्रिंक कर ली है, फिर मेन कैरेक्टर को घर पे ड्रॉप करने पड़ता है। कुछ सुनी सुनी क्यों लग रही? मेरे को नहीं लग रही। मेरे को नहीं लग रही भाई। लड़की ये स्टोरी सुनी सुनी क्यों लग रही है? Liverian, very. मैंने इन लीव किया ना, ओके। मैं बोला अंकल के सर पे क्या निकला? They are about same age. Same age. Well, Yeah, great yep. view, right? Same age. I love coming here by myself. Wow, it's beautiful.
You're making me want to cry. Oh no. What do we do? Please I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me. Even after you helped me all this time. अभी इंग्लिश वाला सुन के मेरे को अलग लग रहा है, पता है? मैं जब से जापानीज वाला सुन रहा था तो. Let's just have a casual conversation. It's easy. Really? You don't seem like the kind of person who keeps... Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right. I don't usually open up to the people of my tribe like this. I'm just an eccentric old hag to them. But you're just a regular person. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eastley is a powerful figure. Be careful around her. That's what they'd say. Well, you are powerful. Are they... Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. What about you? Are you scared of me? Uh-huh. We don't find you scary at all. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like me. Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just pretend I never said. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. He thinks of you as his grand... Yes, but Auroran... Mawika already told you about her plan. And you've given so much help to Auroran and me. You deserve to learn the full truth. Auroran's Man character सब not कुछ like कर रहा other है. people. As I mentioned, he was abandoned as a अपनी child. बहन का पता लगाने के बारे में मालूम करने के लिए. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't devoured by some wild beast. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls, and in Auroran's incomplete soul, a possibility to turn Auroran into a vessel for lost souls. The ceremony would allow lost souls to gather within him. Poor act Auroran है. would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place. Wait, that doesn't sound right. Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. This loss of souls damages the Night Kingdom even further. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Auroran, would be sacrificed in the process. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. Next match में voice dialogue की size increase कर सकेंगे, जिससे सब talking fast हो जाएगी. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. Pathetic, isn't it? By not objecting, हेलो किरण, आर क्यों लिखा है भाई? तेरा अकाउंट वापस आ गया कि बस तूने ग्रे को, maybe they तेरे didn't ब्लू have को my ग्रे करके explicit आया है. approval. But it's not like... Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? By using a human life as... It's not right. So,
when I learned the ceremony had failed, the plan was never a secret. अभी तक रोना धोना अभी चल I रहा guess है I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Auroron would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. कौन सा आया वो? And he never really said anything to the contrary. अच्छा पीसी पे नहीं चल रहा है मतलब. But just as I was about to put all of it behind me, he asks this question. Would Natlan have been saved if the ceremony succeeded? Wait, but it's not his fault. He knows that, but he still feels guilty. Auroron has a strong ability to perceive souls, more than any of us. He understands just how dire the situation with ley lines has become. कमाल है 6 सब्सक्राइबर्स. अरे हाँ मैंने समांटो का मैसेज देखा नहीं है. सॉरी यार समांटो. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlan. I can only imagine what they told him. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Auroron in. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back. Yep, we have to convince him. You don't look so good, Sweet Lolly. नहीं वैसे कैप्टन अच्छा कैप्टन प्लेएबल होगा तुमको क्या लगता? Probably drank too much. उसका मास्क It's okay. The fresh air is doing me good. ना मेरे को नहीं लगता. ना ऐसे कलरफुल दिखाएंगे. I need to go home. I hit it a little too hard. You've helped me so much already. How do I even begin to thank you? How do I even begin to thank you? Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor, so you don't need to worry about us. Good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can figure out our next move in the morning. Friends. I like the sound of that. उसके सर के ऊपर वो क्या है मुझे कोई बताओ. Auroran's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. We should just go to her directly. But she's probably asleep. We can find her first thing in the morning. Go to bed, go to bed. Flickering and flickering and flickering. ये पाइमोन ट्रैवलर को खूब चांस बर्बाद कर रही थी. मेरे दिमाग में भी ऐसे कुछ आया था. मैंने कुछ बोला नहीं. वो लाइन फेमिलियर लग रही थी मेरे को. What's going on? किरण क्या किया पाइमोन ने? पाइमोन ने बोला we are friends, right? That's what friends do. You're already here. I was just about to come get you. Wow, you're up early. That's impressive, especially after all the drinking last night. Let's not bring up last night. I'm embarrassed about the whole thing. बताता हूँ लंच करके आ रहा हूँ. अरे वो बोलती है how could I ever repay you ऐसा something कुछ बोलती है वो. Anyway, I was also woken up by the commotion. Looks like all the warriors from the stadium are on the move. I heard many areas have been attacked by the Abyss, including the Masters of the Night Wind. The Abyss attacked again?
Are you sure you can handle it on your own? I'll be fine. We also have the support of the warriors stationed at the various outposts. Given the quick response, things shouldn't get too serious. The stadium could always use more manpower, so you should join the forces here. I'm done making excuses for him. He's not a child anymore. Stream कितना डिले है? He Stream needs to डिले take नहीं है बिल्कुल भी. responsibility for his actions. Stream का डिले बहुत कम है. सबसे कम वाला है. I was the one who vouched for उससे him. नीचे में So होता I ही need नहीं to है. report back to the speaker's chamber. मैंने वो I'll लेट accept देखा था however मैसेज they बस. choose to handle the अगर वो situation. मैं देखता, मैं ध्यान नहीं था मेरा, तो मैं देखता But नहीं. I should be able to देखा नहीं मैंने, convince ऐसा them to समझ let me लेता. go back to my tribe first to deal with the attack. डिले नहीं है. As for the ancient name, once we handle this crisis, I'll talk to Shilonen right away. Don't worry. I never forget a promise to a friend. Thank you. All right, I need to start heading back. कमीना 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 हट. She left in a मेरी hurry. The situation गिर was गया very यार, वो serious. गिर गया. मेरा बॉबन का पैकेट गिर गया मेरा. कितने गिरे पता नहीं नीचे यार. Hello there, are you crazy? Are you crazy? Looks like a lot भाई of का people are heading to the प्रोफाइल पिक stadium. देख यार. Let's see what's going on. Hello, are you crazy bro? How are you? First time यार. बाद में उठाता हूँ यार उसको. Traveler over here! Perfect. विलन है, तुम्हें ही A गलत दिख star रहा है. Outlander has appeared. Oh, you're all here. But ये तो मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला. मैंने बोला Star Outlander thing? बिल्लिया ही थोड़ा अलग दिख रही थी. बिल्लिया बिल्लिया. Just my way of saying how awesome you are. We've got a real emergency on our hands, so this is the perfect time for you to show off your skills. Alright, but can we get a quick rundown of the situation first? मुझे गलत दिख रहा है यार. Fine, fine. The Abyss suddenly attacked the Collective of Plenty. The Masters of the Night Discord में देखो. हाँ देखा भाई, देखा मैंने, देखा. मैंने number of zoom our करके camps देखा and था. outposts in the wild. Yes, and the attacks are increasing in frequency. The tribes have plenty of defenses, so they're safe for now, but I can't say the same for the adventurers and merchants stuck in the wild. Chaska and I have been searching for survivors and treating the wounded. We just got back, but we need to head out again soon. I plan on heading back to the Collective of Plenty, just in case my tribe needs me. What about you, Mualani? Where are you gonna go? I'll go help the Children of Echoes. They're the closest, so I can start fighting right away. What about you guys? We could go together. भाई बहुत क्रेजी पिक है. किरण भाई, आर यू क्रेजी का पिक देखा तो ना? क्या लगता है क्या है वो? Yeah, that does sound important. No worries. Just leave the Children of Echoes to us. पिक मस्त है भाई, खतरनाक. Who knows? Maybe yours truly will have the Abyss on the run by the time you're finished. That would be pretty great, actually. I hope my tribe gets through okay. It'll be fine. Your tribe doesn't do all that bodybuilding for nothing. Let's part ways here for now. And most importantly, be careful, everyone. Oh, and some of us need to avoid getting contaminated by dangerous-looking substances. That will make my job a lot easier. Koichi, do we really have to do this now? It's alright. She's just looking out for everyone. Alright, let's hurry up and talk to the Pyro Archon so we can help the others. हेलो ध्रुव भाई, कैसा है ब्रो? कैट्स है ना पिलो के बीच में मैं बैठी है.
किरण ये फैमिली फ्रेंडली है कोई सी के साथ कुछ होने वाला है पिक्चर में देखकर लग रहा है डर लगता है As you can see, ये डर नहीं things are सही not looking मतलब good वो right लग रहा है now. कुछ होगा People across Natlan are in danger. Look, I'm very interested in your recent adventures, but this is not a good time. So we'll have to keep our conversation short. That's all right. We're also in a hurry. We're gonna go help the children of Echoes after this. इसका तो वो है क्या बोलते हैं What? वो इमेज में मुझे पहले ही कैट दिखी तो वो अप्लाई हुआ मुझे So he thinks मुझे Natlan कैट is नहीं too दिखी risky. He thinks I'm being stubborn. I shouldn't underestimate the Fatui's That's all ability for to you. gather intelligence. The Gnosis does have that function, but there's more to the story. I will answer you honestly, but you must help me keep this a secret. I can use the power of the Gnosis to save Natlan, but it वैसे comes at a heavy गेस करो price. कौन हूँ लारी है भाई तू The लारी Gnosis would drain all the souls and memories from the Night Kingdom and weave them into a giant net. Wait, you can use souls to weave a net? But does that mean... Yes. It means sacrificing those souls in the process. Souls are just another form of life. The cruelty of this method is self-evident. The Night Kingdom not only houses the souls of the dead, but also our memories and legends. मगर तुम्हें ग्रीक Gnosis mythology means converting all three of into ether material और for the में net, पता चला है erasing our तो इस history गेम and का culture. फैमिली फ्रेंडली पैकेज हो जाएगा तुम्हारे वेब से The net can still become corroded. If we cannot find a way to repair the damaged ley lines before that happens, then all those sacrifices are for nothing. Given the enormity of the price, it's a solution I refuse to consider right now. I want us to win, but I also care about how we win, and what that means for us in the end. Now it's true, both plans come at a risk, but after weighing our options, this is our best bet. Natlan भाई is यहाँ unique बहन जो among भी the है nations ये of सब मत Tibet. कर अच्छा लगता है Given the ever-looming threat of the abyss, the Pyro Archons had to account लारी for the भाई worst-case देख कर scenario. देख कोई बोल रहा हूँ Having a contingency plan is our duty, not just to the people of वो Natlan, उतना but कुछ to लिखा नहीं है all उसमें who मतलब live on this एकदम continent. बेकार नहीं लिखा है Still, इसलिए मैंने सोचा उतना बुरा This नहीं has है always been a well-kept secret. I'm very curious how. Oh, one more thing? The captain said he found another way to solve the problem. Without the Gnosis, he should have no other option. But I see no reason for him to lie. Seems like our only path forward is to track him down, so he can answer that question for us. Judging by your expression, you must have doubted me, even if just for a second. Not even a little! We would never... mythology Talking about Traveler? Just as expected. I appreciate your YouTube में sincerity. वीडियो नहीं है Maybe it was out of caution, देख anxiety, आज or कैसी भाई simple हलारी भाई देख curiosity, but जा रहा हूँ know this. थोड़ा कम कर No भाई matter एकदम ही what, भयंकर our वाला मत goal ले कि यहाँ पे कोई और भी remains the देखता है same. ठीक है We both तो want मैं to save तकलीफ the में आना नहीं people चाहिए of this तो फिर मैं land. पक्का बैन करूँगा So now that you have your answer, do you still doubt me? You scared Paimon. You've really got a lot of guts, Traveler. That's a good thing. Oh, and feel free to call me Mawika. It's what all my friends call me, and I like it that way. As for the captain, the intelligence officers we assigned to the Fatui should be back soon. We'll get our answer then. That's great. Sounds like we just have to wait a little longer. इतना बुरा हो क्या चुभने लगा हो क्या Not just yet. Even though the Abyss is attacking several locations at once, I'm confident the warriors stationed in those areas can handle it. Don't worry. I just need to finish coordinating our available manpower, then I'll take a small team to handle the difficult locations. Wait, you're going to fight in person? Didn't you give up your power? That's true. I'm far less powerful than a god in my current state. But don't forget, I was an experienced and powerful warrior before I ever became the Pyro Archon.
No matter how you look at it, my duty is on the front क्या lines. पागल है क्या खिला रही भाई किसी लड़की का भाई भाई बस वो इल्यूजन है अगर ध्रुव भाई तेरे को पता नहीं है तो बता रहा हूँ I just think इसको we're जूम करके strength देख in पता चल जाएगा numbers. If the people feel emboldened, that's just a bonus. Anyway, even if we respond to these threats in time, बस चैट में क्या लिख रहे हैं उससे it's मतलब not a भाई permanent प्रोफाइल पिक solution in देखो the क्या long फर्क है run. I've considered moving my people to other nations, but given their close connection to the Night Kingdom, a forced evacuation would have devastating consequences. I've told the chiefs of each tribe to strengthen their defenses and advise people against leaving their settlements. Now I just need to find the right time to disclose the true nature of the crisis to the Missile people war of Natlan. आक्रमण Paimon's a little worried about how people will react. Yes, but that won't be the only response. And Alright, we should head out. Maybe we can join up with Milani. She can't be too far ahead. no need to worry about me. anyway you can just ignore me if you do find appropriate. It isn't insta comment. It isn't insta comment. Insta comment क्या मतलब भाई? ए इंस्टाग्राम वैसे मेरे को पता नहीं है सॉरी वैसे इंस्टाग्राम में कमेंट सेक्शन कुछ अलग है यूट्यूब के मुकाबले वहाँ पे खतरनाक बोलते हैं लोग मैंने सुना है Quick, over here, to safety. सेफ्टी पीछे से हम आ रहे थे Kachina, how many people do you have left? इंस्टा की कमेंट की बात मत करो क्यों क्या है वहाँ पे ए मैं इंस्टा यूज नहीं करता अगर पता नहीं होगा Situation. There's a trapped caravan that needs our help. We need to rescue them as soon as possible. We'll go together. Stay safe. We've got this. Stay safe, I got Letting brave names echo. यार मैं ट्रायंगल दबा रहा हूँ पता है बहुत देर से हेलो अभिषेक ब्रो कैसा है बहुत दिन बाद thought I was done for. I can't thank you. Don't worry about it. We're just glad you're okay. भाई आज कंप्लीट कर देना अकाउंट का कितना Your goods look fine too. कितना बड़ा है और कितना बचा है The पता है abyss कुछ isn't आइडिया after बताओ ना? Mora. That should be the last abyssal pylon near the Children of Echoes. ये प्यारे में पड़ जाओगे By the way, where's Seat Lolly? I'm not ready I thought she यार would come with you. इसलिए तो बोला अभिषेक भाई बहुत दिन बाद मेरे को टेडी आता है मुंह भूल गया था To help her tribe. She said we can deal with the ancient name later. Yeah, that makes sense. The attacks are more urgent. All right, this isn't a good place to talk. Let's head back to the tribe. टेडी भाई है टेडी भाई वाले अकाउंट से नहीं आया भाई एग्जाम्स की वजह से बिजी था कैसे गए एग्जाम्स खत्म हो गए कि बस थोड़ा अभी ब्रेक ले रहा है 2-3 दिन का मतलब 1-2 दिन का मतलब ऐसा ब्रेक है समथिंग कुछ प्रैक्टिकल वगैरह का Looks like a few people were hurt after all. Oh. The abyss threw a lot at us at once. I rushed out as soon as I heard the alarm, and there were already so many monsters. Before long, Kachina brought over a whole group of warriors, and just like that, we destroyed several pylons as a team. ठीक गए You mean एग्जाम the तो situation in the Night Kingdom, right?
Yeah, I feel the same way. ठीक गए We've managed to keep एकदम it a बढ़िया secret all this खतरनाक time, but more and more नहीं people are realizing something's wrong. It's impossible not to feel anxious when things are getting worse by the second, and all we can do is wait. That just means we need to buy the Pyro Archon more time. Keep pushing, everyone. Every battle is worth something. You really are an eternal optimist, Mualani. You always find a way to cheer people up. थी छोरी की एग्जाम Thank में थी you. I guess it's one of my better qualities. मेरी भी एग्जाम आने वाले हैं ऑल द बेस्ट आर यू क्रेजी क्रेजी लारी एग्जाम ठीक So, ही जाते specifics हैं aside, मार्क्स ही गंदे the होते Pyro हैं Archon confirmed the Gnosis can resolve the crisis, एग्जाम्स but it फालतू में comes at बदनाम a होती है huge price. And somehow the captain finds out about it, goes to fight the Pyro Archon, and calls her out for having a solution but refusing to use it. Honestly, if he has the same information as us, I can't really ना blame मेरे him. मार्क्स अच्छे ही होते हैं ये अच्छी बात है यार We talked to Malika before we left the stadium. According to her, the cost of the captain's plan is too high. And, well, it makes sense. If that was truly the better choice, she would have picked it. Yeah, I trust the Pyro Archon. When I was upset about Kachina's disappearance, she was really sincere and patient. Plus, she burned down all those precious mementos for Kachina. She's already proven how much she values even a single person's life. When it comes to कैल्शियम तो Natlan's बहुत करते survival, हैं मार्क्स के there's पर no way she आते would हैं hold back. पासिंग I agree. Maybe the captain जितने weighed the costs ही and came to his रहे own जाते हैं conclusion, but I'm sure we have different priorities. Life is important, सिग्नेचर वेपन but so are history and memory. का सिग्नेचर वेपन मिल गया वाह सही है भाई As Oh the no, Archon, she can't tell us Emu everything, Teddy but it Topper, seems like front she wasn't bencher. holding anything back this time. The next question is, if the captain found a new way to save यार मैं तो फ्रंट Natlan, बेंच पे बैठता था यार how तभी come मैं the टॉप नहीं था Pyro Archon has never heard of it? अब जोंगली लाऊंगा बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं अभिषेक भाई जोंगली लेगा तू चल देख तेरे को कौन सा पसंद आ रहा है बहुत सारे आ रहे हैं देखो आर्ली भी आ रही है निवलत भी आ रहा है बोलते हैं We still don't have enough information. Once we figure out what the Fatui are doing, we'll have our answer. पता नहीं क्या Let's head back then. पता नहीं क्या Malika said बट her intelligence मुलानी officer क्रीपी should लगती है return मुझे soon. क्यों किस बात के लिए With how many Fatui there are, someone's Normally bound to तो है give something away. टॉपर नहीं वो बट रोल Sounds नंबर good. 3 है I have a few theories of my own. With a bit more information, we just might get to the bottom of the whole thing. मेरा भी रोल नंबर 5 था यार जबरदस्ती आगे बैठना पड़ता था I was just about to ask. Count me in. लगती है If I was just a bit faster, we could have prevented a few निवलत people from मुझे getting hurt. एकदम बेकार लगता है People ओके who could help us in the next battle. आर्ली की ना भी आ रही है Register? Nah. I'll just follow you around. You know, go where you go, do what you do. You got it. Alright. See you all later. Let's get together and celebrate once this is over. Oh, you betcha! You betcha. Na 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 na. मुलानी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है ग्रेव सिचुएशन में भी स्माइल करती रहती है ग्रेव सिचुएशन में भी स्माइल करती रहती है और मैं यहाँ पे ग्रेव सिचुएशन में भी जोक मारता हूँ फटे हुए लोग जो जोक मारता है उसको लोग पागल बोलेंगे बात सही है I'm fine. No need to worry. They ran into the Fatui while out on a mission and decided to follow जोंगली के them. बाद पार और कौन भी ट्राई करूँगा अगर प्राइमोस बचे तो Calm down and let me explain. Here's what Here's happened. what happened. Watch out. It's the Fatui. Were they attacked by the Abyss? No, wait. अरे निवलत लवर्स कहाँ It गए looks like चार्ट they're में से protecting a group of मजा आया travelers. Over there. Do you see? You're right. Chili. That's a traveling group from Natlan.
Could they be trading for something? अभी होते तो Let's keep observing for now. सास का तो बिल्कुल बोल नहीं करूँगा. Given the appearance of abyss monsters all over Natlan, you should cancel your journey and seek. Thank you so much. I wish there was something we could give you. We don't expect anything. सास का बंदूक का रॉकेट बना के उड़ाती है. We were out on a mission and saw you being attacked. It was our decision to help. If you truly wish to repay the favor, you can keep this a secret. If anyone asks, we're not asking you to cover up our activities. We haven't done anything illegal. Our captain simply wishes to remain undisturbed. बट भी अच्छे काम कर रहे हैं. Nonetheless, या फिर ऊपर का दिखावा the है. decision remains yours. If we wanted to keep you quiet, we would have employed a harsher method. Got it. We'll get going now. सास का 4 स्टार हो गई Did you शायद. hear that? They mentioned a captain. Isn't that who the Pyro Archon is looking? Exactly. We could be still. There was no trade. They were just. I didn't believe the captain when he said he wanted to save Natlan. But based on what we just saw, it's possible he was telling the truth. Maybe we've been wrong about the Fatui this whole time. वो character. It's too early to say. Let's follow them and see what's really going on. अभी 5 स्टार है सास का. 5 स्टार है. So this is where they were headed. Looks tricky. It's heavily guarded on all sides. Koichi, wait for me here. I'll go in and check it out. Oh no, you don't. How are you planning और to get on through है all the 4 स्टार. guards? Look, I can use this terrain to my advantage. With our tribe's special way of getting around, I doubt they'll see me coming. We still can't see anything on the inside. What if you can't find cover? You won't have anyone to watch your back if you go in alone. The more heavily guarded the location, the more valuable the secrets. Even if the captain isn't here, we can still figure out what the Fatui are planning. That intel is worth the risk. Fine. You're not gonna listen to me anyway, so let me come with you. C6 या फिर R5 R2 या फिर क्यूला पुल करूँगा. निंगवान के साथ जो किया वो और किसी कैरेक्टर के साथ नहीं करेंगे वैसे I'm not sure you can say the same. At least right now. I can. You really believe that? Fine, don't believe me. But you can't honestly tell me infiltrating a heavily guarded Fatui hideout all on your own sounds more reasonable. You know, growing up, even if I insisted on doing something, it never gave you any trouble. I'm not sure you can say the same. All right. If we start arguing, this will never end. ईला केक इतना अच्छा लगता है तूने. सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ यहाँ पे. Guess that means I हाँ win. क्या हो गया आज? Don't worry, you're not the only capable young person from our tribe. I can handle उसने this. क्या बोली? अच्छा केपेबल बोली. मैं वो केकेबल सुनाई थी. वो यहाँ पे भी केक. We split up, communicate with क्या hand किया signals, उसके साथ? make I sure our started blind from spots are 1.0. covered, and support each other once we strike. Got your ropes? वो शायद तक 5 स्टार होने वाली शायद होनी चाहिए थी. ऐसा कुछ Yeah, था. let's go. ये मैंने गलत पढ़ा है. ऐसा कुछ नहीं है. Notified है तो. मैं साधु इंसान गाय समान. The Fatui have eyes all over this place. उसकी बहन पकड़ी तो नहीं जाएगी ये जिसके पास वो नहीं है. क्या बोलते हैं? विजन. Now. Go. ये वाली म्यूजिक सही लगती है. Not sure how many chances I'm gonna get. I need to act. It was before game launch. Singong was supposed to be 5 star, but at the time there. Good. I made it without getting caught.
I should get to that platform over there. She is a hidden 5-star actually. Koichi should have line of sight. I'll wait for her signal. मेरे को लगा मेरे को कंट्रोल करना है उसका बायने खुला. That's it. Now's my chance. It's no use staying in one place. I should keep moving. मेरी निगाह तो Looks like Chaska 30k is helping मारती me है by स्किल पर. keeping an eye on the Fatui movements. I'll wait for her signal. Time to move. E. That was close. अच्छा वो मेरे को लगा उसको किसी ने उठाया. I can't make it over in one go. I'll wait for my next chance. वैसे गेंशिन में Now's my chance. गेंशिन में बना ली मैंने तो. ओके I made it. That'll show my sister. पक्का कोई बंदा नहीं है वो. अभिषेक. The Fatui's For more occupying useless all the information best like this, subscribe to my locations. channel. If we could just get past them somehow. Wait, I've got it. Psychiatric. Huh? What's that noise? Did something explode? वीडियो कॉल के साथ बाप रे. It stinks! What the heck is that? What do you think you're doing? I could ask you the same thing. झगड़ा करा दिया भाई उन्होंने. Good, they're arguing. Looks like they just needed an excuse. They've probably had enough of this job already. The people on the hill. ये वो over there कैपिबारा है क्या वो? comrades. This is our कैपिबारा chance. कैपिबारा. Come get me, Chaska. I hope she gets this hand signal. That's Koichi's signal. Give me your hand, quick. Coming. I checked. और कौन serious हो रहा है Completely clear. इस It should lead us age to the में? deepest part of this place. अच्छा वैसे बोल रहा है तू. क्या पता भाई. होंगे कुछ. अपने को कुछ नहीं करना. अपना कोई लेना देना नहीं भाई ये सब चीजों से. Well, I was pretty helpful, right? You know, everyone usually jumps at the chance to work Biggest with me. breed of rats. Not my own sister, though. No, she avoids me like her life depends on it. I was wrong, Koichi. You've done well. Wait, you're just gonna admit it? Now I look like the mean one. Let's focus on the task at hand. We're in the heart of enemy territory. The more time we waste, the more dangerous this becomes. All right. If you're not gonna take the bait, then I'll drop it. Looks like the Fatui are here to dig something up. I'm surprised they mobilized this many people. I doubt it's because they're interested in our culture and history. It seems like they're looking for a dragon relic called the source mechanism. मैं आता नींद मार के. This is ancient. मिलते हैं भाई किरण. Barely any information survives to this day. पता नहीं तब तक मैं गेंशिन खेलते रहूंगा कि नहीं. अगर ये क्वेस्ट हो गया तो मैं गेंशिन बंद कर दूंगा. Why would this be the Fatui's target? Not bad. Looks like it's in good shape. This should be where ये क्वेस्ट हो गया था आर्कोन वाला. Took us long enough. Come on, let's get this thing back. Back? Back where? Should we keep following? You really want to keep going? Of course. We make a good team, don't you think? No reason to stop now. What was that sound? Uh-oh. We've been spotted. Time to go. Falling rock incoming!
Watch out for your gadget. Falling rock incoming. What? You'll regret that! After them! यार बंदी मदद करके गई है। क्वेस्ट तो आज होने से रहा, मिलता हूँ बाद We में। went back to observe सच some में more. होने से रहा। They'd collected several identical pieces of something. It looked like they were waiting though, so we decided to come back. So, Koichi got injured trying to get them off your tail? She pushed herself too hard and collapsed on the way back to the stadium. Well, I didn't cause you any trouble while we were fighting, right? So my perfect record remains. You've done very well. I could make a comment on knowing your limits, but it's not my place. I know. I'm already So, our current intel suggests the Fatui is after the source mechanism. The device is a complete mystery. Even to— I have no idea. But it's safe to assume the device could serve a similar purpose to the Gnosis. Shilonen, I need you to gather Quest is very every big. scholar in Natlan familiar with the अभी 2 घंटे का source. बचा है ना कि 1 घंटे का। I'll get right on it. Thank you both for your hard work. Koichi, it's time for you to get some Koichi. rest. Oh, and there are gifts from your patients waiting at the speaker's chamber. I've prepared a small gift of my own as a token of gratitude. I'll send it to your home along with the others. My patience. That's so nice of them. Guess that means I'm अभी तो doing पार्टी something शुरू हुई right. है। You don't need to give us anything, Archon. We were just doing our duty for Natlan. हो जाएगा, आज तो हो जाएगा। I should take Koichi home now. Well, if Koichi doesn't फिर want एल्डन to रिंग को आज finish बाय the बोल देंगे, हम source कोई प्रॉब्लम नहीं है, practice, एल्डन रिंग then- नहीं खेलेंगे। I accept. थैंक यू Thank you, आकॉन। Archon. What am I gonna do with you? There's some for the rest of you as well. They're one of my favorites too, so don't be shy. I'll start investigating the source mechanism right away. If I learn anything, you'll be the first to know. Yummy snacks! यमी। यार मेरे को लेकिन एक बार Take it easy. ना 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 Take it You easy. play Elden Ring? Yes, I do play other games. Genshin के अलावा भी दूसरे गेम्स खेलता हूँ मैं। कितने प्राइमस है? 45k प्राइमस बचे हैं मेरे पास अभी फिलहाल, तो भी विश नहीं कर रहा हूँ। Damn, you're still alive. Yes, I'm still alive, bro. Trinita. बॉस मैं सोच रहा था कि अभी तक कैसा है मेरा हो जाता क्वेस्ट तो अपन एल्डन रिंग खेलते हैं, लेकिन एल्डन रिंग खेलने नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेस्ट बहुत बड़ा है और ये क्वेस्ट कंप्लीट करने का सोचता हूँ और फिर एल्डन रिंग खेलेंगे। मैं प्लेस्टेशन में खेल रहा हूँ, ये बता देता हूँ। Fine in a day or two. पीसी नहीं है, No प्लेस्टेशन need में to खेल go रहा हूँ। all the way home. That's what you always say. Everything's no big deal until you collapse. What if the Abyss attacks again? You're saying if I let you rest in a hotel, you're not gonna rush out the minute you hear the alarm? I won't. Triple promise I won't. Mm-hmm. Fine. On the off chance something like that were to happen, अमीर लोग। I might. But I'm a doctor. ना भाई ना, I have a अमीर नहीं duty हूँ to मैं। help people in need, no matter how hard or tiring the अमीर work रहता ना हर एक gets. गेम खरीदता है ऐसे, लेकिन यार महंगे गेम बहुत है। 5000 के गेम I महंगे guess हैं you're भाई। right. But I don't जब have to सस्ते होते like तभी it. लेता हूँ यार मैं। यार हॉगवर्ट्स लेके 1500 में मिला तब जाके खुश होके लिया मैंने, नहीं तो वो गेम लेने का सोचा भी नहीं था मैंने। Trying to stop Chaska from doing something dangerous. How expensive is PlayStation? I do the same for anyone trying to put their life in danger. As a doctor, I don't want people to get hurt because of a rash decision. Then try to see things from my perspective. You clearly want to protect your patients. So can't you understand why एक your own मिनट, sister would Elden feel Ring, the Ghost of same way Tsushima, about you? वुकोंग, हॉगवर्ट्स सब है इसके पास, लेकिन ये खेलेगा क्या wuthering waves और गेंशिन, वो भी वर्टिकल स्ट्रीम पे। भाई मैंने सुन अभी देख, पहली बात मैंने सिर्फ एल्डन रिंग खरीदा है
और बाकी गेम्स मेरे को फ्री मिले और मैंने वर्टिकल पे ठीक है एक आध बार किया था और मैंने लेकिन यार ये सही बोल रहा है यार मैं तो नहीं कर सकता काउंटर नहीं कर रहा कुछ I disagree. I understand the risks and costs of my decisions. हेलो शैंक्स ब्रो कैसा है बहुत दिन बाद मिले हाँ जिंदा हो अभी भी Who wants to be like her? Overconfident, always making excuses when things go wrong. अगली बार कोई बड़ा गेम खेलूंगा ना तो पक्का वर्टिकल स्ट्रीम नहीं करूंगा मैं You think I don't have proof? Okay, don't get into another fight. Just pretend Paimon never said anything. नेक्स्ट वर्टिकल स्ट्रीम में किरण घर पे आ जाएगा तुम्हारे अगर वो दूसरी बार नहीं रही तो Don't worry, Paimon. You didn't do anything wrong. Arguing is just how we communicate. Neither of us जरा really इसका और takes वो it to स्टाइल heart. करो Plus, I guess we are similar in some ways. Maybe I rush into things without thinking, but I learned that from her. We're family. I can't help it if my older sister is a bad influence. It's surrounded by bad influence बोलना चाहिए ना is a bad influence Okay, you don't have to put it that way. भी आज भी ये गया था विंडोज क्या भाई कितना बुरा यार कितना बुरा So, you're all good now? Neither of us are really the type to back down, so we'll always have our differences. But still, we आज get ज्यादा along in टाइम our था own way. मैं पानी भरने गया था बस ओके Plus, I know you'll wake up one day and realize I was right all along. यार ये I just need to wait. ये फ्लैग का को रेस कर रही है भाई ये Be my guest. Come on, let's get you home. See you later, traveler. in ये बंदी Paimon. बहुत सारे फ्लैग रेस I'll कर be रही है back यहाँ once everything's settled at home. There's no rush. At least grab a nice meal with your family. Bye, you two. Take care of yourselves out there. Yep. We will. Those two will probably make up for real at some point, right? Well, we've learned a lot. Let's go over everything that we know so far. किरण मैं तो सोने जा रहा था क्या हो गया नींद मार कर आ रहा था तू नींद ही बोला था ना तूने कुछ मैं कुछ नहीं बोलता Sorry for popping up out of nowhere again. पेड़ों को पानी तो नहीं पड़ेगा ना Okay, I won't beat around the bush. Oh, and I'm sorry for interrupting your rest. I'll treat you to some charcoal grilled steak to make up for it. Awesome! Just give us your orders. Hey, friends don't order each other around. Friends Just don't here to order share each some other. news. Remember what we talked जाग about रहा before हूँ parting ways? Oh yeah, you mentioned how Auroron has always wanted to save Natlan, and थक्कल something क्यों about रहा his soul being है fragmented. नहीं मैं कुछ बोलने आ रहा था मेरे को हंसी आ गई एकदम से मैंने बोला Paimon and the Traveler discussed it after you left, and we think Auroron is probably back with the captain. हकलाता है ये What do you think? हकलाता बहुत दिन बाद I वर्ड agree सुना with your hypothesis. And just now, I confirmed it myself. Auroron came back. He helped the Masters of the Nightwind defend our camp. What? He came back? I told him to give up whatever he's doing, but he refused. He said they're just one step away from success, so there's no way he can back out now. बाय बाय सी यू लेटर ओके भाई मिलते हैं किरण भाई गुड नाइट कितने देर बाद उठने वाला है ऐसे 4 घंटे सोने का 5 घंटे Apparently, he came back to fulfill his duty to our tribe. When he left, he said it was because he still has a duty to Natlan as a whole. I'm surprised you let him go at all. I had to prioritize my tribe. Besides, the situation was intense. I couldn't focus on outside and inside threats at the same time. outside and Plus, inside he was on guard.
He knew I would try to go after him, so he made sure to keep his distance. I kept an eye out for a good opportunity, but it never came. All these years of calling me Granny, and I couldn't do a single thing for him in the end. Don't say that! Your tribe all raised him together, right? That couldn't have been easy. You're right. Seeing him come back reminded me of when he was little. Running around the tribe, dropping by random houses right and left. He's not only a child of the Masters of the Nightwind, but a child of Natlan. It's only natural for a child to want to do something for their family. Besides, Auroron is my apprentice. He might have a few tricks up his sleeve, but I guarantee I know every single one. Wait, what are you saying? Look. Remember how I said Auroron's soul is fragmented? And this gem is what makes the talisman work. It just so happens that Auroron is due for a gem replacement. Since I can't get close to him, I put the new gem in a supply bag and asked Aoife to bring it to him. You guys know Aoife, right? No? Well, he's a pretty famous vet around these parts. He's always bringing me all sorts of things, and he happens to be very good friends with Auroron. Auroron. Aoife doesn't know what's going on, so he agreed, no questions asked. Auroron would find the gem as soon as he opened the bag. He knows how important it is, so I knew he would make the switch. He probably suspected that I tampered with it. But here's the catch. The trick is on the bag. The moment— That's amazing! You can do something like that? Most people can't. But I can. That trick he used to bring you to the Night Kingdom isn't anything special, by the way. My technique is much more subtle. He won't notice anything. So in other words, we have a whole backup of Auroron's memories in this gem! The kid thinks he can take me on? Like I wasn't the one who taught him everything he knows? That's amazing, Seat Lolly! Let's take a look right away! Once we get to the bottom of this, we can finally track him down. Crazy number. First time देख रहा है फोटो लेने में बस ना. I know he thinks of me as his grandma. Huh, that's a tough question. Paimon doesn't have a grandma, so she's not the best person to ask. To be honest, I've always doubted my ability to look after him. I didn't stop the ceremony all those years ago, and now I'm useless again. But if I stop here, it will haunt me until I'm 500 years old. Every night I'll wake up in a fit of anger. Yeah, That's the right. first thing I do. First anger, then tears. Oh, wait! Who are you calling a crybaby? You're just making it worse, Traveler! I need to look at his memory. Even if he resents me, I don't care. And I won't blame him. You sure you'll be okay? We can come with you if you want. Did you just say you'll come with me? Is that okay? We have a pretty good reason to see it too, don't we? Because, right! You really mean it? Oh, fine. You can come. Just... Don't worry, we're professional! Alright, time to sneak into someone else's memory and engage in some... Unwanted spying. You heard it here first. Are you ready?
Hello Suzu Prog VIP. कैसा है bro? Hello Suzu, how are you bro? Look how good you're doing. You'll grow into nice big radishes in the future. And you? Aoife says you're taking up too much space, but I think you're a good tree. What do you think? वॉल्यूम अप करो ना थोड़ा वॉइस और गेम का. मेरा वॉल्यूम कैसा है अभी? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया मैंने मेरा. Good. How are you, Uncle Okanbi? अभी कैसा है मेरा वॉल्यूम? What you up to? गेम का ही बढ़ाओ. Your vegetables again? No, just बहुत है. some idle अभी कैसा है? conversation. Sounds fascinating. What did they say? Fascinating. They told me you were coming and that you would take some produce with you. Only if you're offering. By the way, I ran into Aoife yesterday. He told me Chaska's fostering a saurian at his place. Said the thing trampled over a part of your radish garden. I hope you two didn't get into a huge fight. No, don't worry. I'll find a way for him to make it up to me. I've already wrapped your share of the produce. Here you go. Wrap? You really knew I was coming. Light up the smoke and you can see the path through the shadows. That's what everyone says. Hey, have you seen that strange group of people that just appeared out of nowhere? I don't think so. It's the Fatui. Their leader seems like a big deal. He didn't bring many men with him, but they're all elite warriors. It seems like they're looking for if you run into them. They were looking for them, I think. Or he knows them. You're from the Masters of the Nightwind, are you not? Why do you live here alone? I enjoy living by myself out in the wild. I guess you're from the Fatui, the one everyone's calling a big deal. Not an inaccurate description. I'm looking for someone who may be known to you. Citlali is her name. Granny? What does an Outlander want with her? I've heard the name. You have business with her? There's no point to further questioning if you insist on hiding things from me. I shall seek answers elsewhere. Oh, he could tell I was lying and now he's leaving? He gave up just like that? Hey! At least tell me why you're looking for Citlali. यहाँ पे स्टोरी काफी स्लो है. It's none of your concern. I have my own means of tracking her down. Why are the Fatui looking for her? What does she have to do with them? I can't just let them go like this. I have to figure out what they're planning. बंदा मिशन पे है. They've just been studying the ley lines and asking for leads on Granny. I can definitely rule out some sort of invasion. The situation has seen no true improvement. The Pyro Archon did not fulfill her. My lord. यार वो अच्छे से छुप नहीं सकता था क्या? Ignore him. He is no threat. He knows I'm following him, but he doesn't seem to care. क्या पागल बनती है? But there's something unusual about him and also familiar in some way. I can't describe it. ये सीन मस्त है. My lord, I feel dizzy. A ley line disturbance. Certain presences have been forced to wander outside their rightful realm. That was a spell from the Masters of the Nightwind. How did he Yeah, know but you that? know, say news. Is he sending those escaped souls back into the ley lines? ये लोग कुछ नहीं कर सकता. हाँ वही. That so easily. वो कुछ कर नहीं सकता. Soulfaring is supposed to be extremely threat ऐसा difficult. बोलता ना वो. This could be related to why he's searching for Granny.
I feel much better. Thank you, my lord. या पूरा एक्ट भी हो सकता है वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है उसने बस अपना वाला पावर यूज किया और घुमा के दिखाने तमाम The abyss could attack at any moment. If you notice any irregularities, assume drill formation and be prepared to fight. However, there's no reason to overengage. Information is our first priority. Yes, sir. Why are the Fatui fighting against the abyss? फटुई पे भरोसा पागल समझे I've been following him this whole time and still they ignore me? Do they really not care? उनको पता है तो कुछ उखाड़ नहीं सकता उनका to him as the captain. Never heard of him before. And now he's headed to the stadium. That's unusual. What is he gonna do? You two, with me. Everyone else, wait here as instructed. Send word to the other teams to retreat immediately if this fails. Yes, sir. Sorry, yes, sir. He's going inside, but the Pyro Archon is in there. What does he want with her? Forgive me, my lord. Allow me to check one more time. Do you truly wish to do this? The time for idle observation is over. It now falls. This nation is out of time. Yes, sir. और फिर पारागन ने He just walked straight into the stadium. What is he gonna do? इसके ऊपर ही पावर लगेगा वो भी है They're both incredibly strong. How long will they have to fight until someone comes out on top? टॉप पे सिर्फ एक ही जन है वहाँ पे और उसका नाम है ट्रैवलर लेकिन जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे It's faint, like a soul's trying to escape. Where is it coming from? Is that why he's looking for Granny? If he dies here, then all clues will be lost. ये बंदे ने मैटर अपने हाथ पे लिया है अब पता नहीं ये मैटर संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time, and you're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here, didn't you? No need to force yourself. I've never seen anyone match the Pyro Archon in battle before. I didn't expect you to intervene at such a critical moment. You know I've been following you. Why didn't you stop me? When walking in the forest, it is only natural to encounter wild beasts. However, not every beast. And yet, one of those very beasts saved your life. Then speak. What do you— I didn't save you because I wanted something. My soul is more perceptive than others. I can sense that the ley lines are extremely weak. The questions you asked her just now, well, I've had very— So, you can tell the truth. That was quite a reckless decision to make. I'm not sure you realize that— There's no turning back for me now. What I did back there is going to get me in a lot of trouble. You attacked the Pyro Archon in broad daylight, and I used my spell to save you. A single glance was likely all it took for her to recognize my tribe. So, we're in the— Seem to care little from my thoughts. It's too late for that. Start from the beginning. Why are you looking for Sitlali? Explain your relation to her first. Sitlali is my elder and my teacher. She taught me every— If you truly wish to protect her, you should have let me perish at the Pyro Archon's hand. I wanted
do something to change Natlan for the better. Something What I on can accomplish in my own two hands. You're stranger than anyone I've ever met. But maybe, just maybe, you can show me the way. Strange. यार बंदा गड़बड़ करेगा. Is said to be the legendary Granny Eastsley, someone capable of communicating with the Wyab, and the Wyab are the key to information on the Night Kingdom. Why do you need knowledge on the Night Kingdom? That is not something you... Don't forget. कुछ चाहिए होगा ना कभी ने उसको और कुछ नहीं. Do you not believe the Fatui capable of betraying a debt? People can lie, but souls cannot. I can tell there's a weight to your soul, a sense of justice. Sense of justice. You may not live among your tribe, but you certainly know their tricks. I apologize for my rash judgment. You are more capable than I imagined. Let's go. We'll see if you have what it takes to join my plan. I see. Interesting approach. Worth trying, I think. Rather than weaving a net to protect the ley lines, this method would address the root problem by reconstructing the ley lines themselves. और गेम में इसकी गाने इसको कूट दे रही है. ट्रेलर में एकदम खतरनाक दिखाई क्या इसको और ऑन को? मैंने कुछ देखा ही नहीं ऐसा. Traveler, Paimon. Paimon's fine, just... Of course. I'm so mad at him. After everything, he still can't let go of the past. बंदी strong तो है बोलना. For some reason, he thinks he owes something to the people who cared for him. Stubborn, self-righteous fool. Where's that gonna get him? Now that he's all grown up, he thinks no one can tell him what to do? He thinks he can just run away whenever he wants. I'll show him. If he tries to run one more time, he's got another thing coming. Maybe stubbornness runs in the family. मतलब Like grandmother, like grandson, as they say. Is that supposed to be a compliment? That kid's got nothing on me. Anyway, back to what we just saw. I don't even... Yeah, the captain seriously wants to... What does it even mean? Something like the loom of fate, maybe? The loom of fate? Oh, it's kind of hard to explain. Basically, it's a device from Conrio that has unbelievable power. कुछ नहीं. स्टोरी में समझ आ जाएगा. Okay, okay. Wants to manipulate the ley lines. Everyone in Natlan will be affected. Oh, this is big. Try to see the balance. Which means the captain has been honest from the very beginning. Auroran's memory proves that. Why is he so obsessed with saving Natlan? Oh, we've got to tell Moika about this right away. Yes, she needs to know about this. वो है क्या वहाँ पे प्रेजेंट अभी? ये क्वेश्चन है. और है ना इसके बाद खत्म नहीं हुआ ना? हाँ है. ये एक्ट 4 आखिरी है कि इसके बाद भी एक और एक्ट है? अभी काफी सारा स्टोरी बाचा है. बाचा ये नाटलान का पूरा स्टोरी खत्म नहीं हुआ है ना? मतलब अभी नेक्स्ट अपडेट में आने का है ना? मतलब आएगा ना?
आने का ही होगा, कौन आया नहीं अभी तक, मेरे को लगता नहीं जल्दी खत्म कर देंगे। Take it easy. बस टेलीपोर्ट करना था मेरे को, मैं डायरी को ब्लैक डॉट पे भी टेलीपोर्ट कर सकता था। 5.3 में पायरो ट्रैवलर के साथ में खत्म होगा। Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. Sitlali. I've located the captain. Oh, really? That's great! We also just took a peek at Auroran's memories and just... all with his granny's permission, of course. Calm down, Paimon. I'll take it from here. Oh, skip this chit chat अपने लिए। So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ley lines. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. Is reconstructing the ley line? Yes. It's not a simple fix. It would mean sacrificing nearly everything contained within the current ley lines, very similar to the price of using a gnosis. If he activates the mechanism, it's all over. We need to mobilize our forces as soon as possible. But what forces do we have? Kanich, Shilonen, you two, and myself. All other warriors are working to push back the abyss on the front lines. But that's barely any people! Not to mention you lost your power! We have the Traveler captain on their side! Oh, maybe we really should get Sitlali to break Auroran's legs. That won't help us with the captain, I'm afraid. In any case, the Masters of the Nightwind are in urgent need of manpower. Sitlali, I was hoping you could head back and help defend the tribe. All right. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right. Back to the matter at hand. Let me grab Shilonen and Kanich. As you all know, Auroran is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. तो फिर ट्रैवलर को हल्के में ले रहे हैं। यार ट्रैवलर के साथ प्लॉट आर्मर है यार, तो ट्रैवलर को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। The source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. Story में I agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Shilonen, I need you to do what your tribe does best, and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it. Exactly. वो क्या बोल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। No one can create a distraction better than you, Kanich, not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the captain's defenses. Understood. Then we should head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. Thank you, everyone. You have my word. यार क्या होने वाला है? ऐसा बोली उसने भी, और टेंशन वाली बात है तो।
Boost, boost, boost. मैं वहां पे चल के जाने वाला था सच में। ये वहां पे टेलीपोर्ट पॉइंट है, बस दिख नहीं रहा है वो। All right, this is the place. Their tunnel must be behind that gathering of Fatui guards. Any of the nearby mountains could be a good infiltration point, but if we want to stay under the radar, we should approach from the side. There are only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them. सबको मेरे को मारना है। You'll get frostbite. Flash frost. ध्यान ही नहीं दिया मैंने किसको लेकर रखा है। All right, that's done. What do you think, Shilonin? Is this a good spot? Yeah, looks good. We'll take it from here. Digging. I can see the inside. Perfect. We'll keep going. All right. Please, take care. सर पे क्या था? हेलमेट था वो। हो जाएगा क्या? कौन है वहाँ? कौन छुप रहा है वहाँ पे? Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. You look super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. इनको मारना है ना? मारना ही लग रहा है। लाइव जा रही थी मेरी। Gotcha. Can't run from death. This spell is from the Masters of the Night Wind. It's Aurora. अगर कैप्टन है। These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. Quietly now. My guiding stars. Stars, shine for me. इस पे डालेगा।
मेरे को उसको स्टॉप करना है। पूरा उल्टा सीधा है वो। आई थिंक ऐसे ही कुछ होना चाहिए। अबे कमीना, उसको आने तक वेट करना पड़ता है। व्यू हिंट पे देख लिया मैंने गलती से। ना गलत है। बस थोड़ा सा आगे घुमाना है। जल्दी करो, इन सब में टाइम नहीं लगाना होता है। हाँ भाई, मैंने वो गलती से फर्स्ट टाइम वाला पूरा उधर उल्टा पुल्टा कर दिया था, इसलिए ऐसा हो गया। कैप्टन Cappuccino. This must be it. This must be it. अभी कितने घंटे का बचा है quest? The captain's here too. Perfect. Oh, they're here. Huh. I thought the Pyro Archon would choose a front. It doesn't matter. They're too late anyway. ये कहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना, देखना बहुत ठोकेंगे इसको बाद में। It's too late. We need to turn it off. I won't let you do this. The sound of... What was that sound? It was like a piercing cry. Now's अभी our बाकी है chance to काफी। turn off the device. Oh, Auroran? How did... His movements have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? This ends now. Huh? Something's wrong.
You are not Auroran. Who are you? Commander. You. So, you still recognize me, Commander? I'm glad. You see? You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost your chance. Even now, you're still the same as ever. His voice is completely different. Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. That must be why I've returned. For this moment. Please finish what you set out to do, Commander. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. He's already close to death. After all, his soul has been incomplete from the start. Someone said I'm close to death. Is it because of that noise just now? The piercing cry came from underground when I activated the device. What's down there? Natlan's ley lines must be hiding some kind of secret. Am I dying? Oh, no. It's too soon. Ah, Auroran, it's you. What'll it be today? Oh, why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Auroran, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. We just got a fresh batch. Can I get you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? Ask for anything you want. We've got plenty of ingredients. What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. A merchant, to be exact. Never thought about going into business yourself, my boy? You could travel all over. Our Auroran? A merchant? He's far too honest for that line of work. Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey on old-timers like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then... why did my birth... Oh, maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. So if I had succeeded back then, would the world have become a better place? Done spacing out, Auroran? Did you finish your homework? Yes, Granny. It's just... will learning all this really make me as strong as you? Of course not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my ability. Because you're a genius. You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them, and picked up a few tricks that they didn't want to touch. It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. I wasn't the one who brought it up. Anyway, class is canceled tomorrow. Go. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business, and they practically tremble in fear.
Not the most fun way to go about living one's life, I'd say. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says. But I never forced myself. I never even got the chance to try before it was all over. Hey, you zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? I'm not sure about that. Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Auroron, my man, come inside and give me a hand, would you? Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in one piece. A part of me has always been missing. That's why the other spirit said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes. Age coming now. And wait for death. It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I'm a warrior. Far stronger than a weakling like you. But still died. I need my body. I'm not weak. There's just a limit to what I can do. And that's exactly why your fantasy is so ridiculous. You really think a useless thing like you can save the world? Useless? यार इतनी जल्दी आर्गुमेंट हार रहा है भाई तू. Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Hmm? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. Just do what you want. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. No. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No! I won't die here! Auroron! Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end.
मेरे को लगा वो कमीना बीच में आएगा। His eyes are open! He's alive! Well done. You managed to do the impossible. Uh-huh. What do you mean? Don't try to talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroran as a comrade. He... I'm fine now. Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. That's no easy feat. The worst appears to be over. I'm sorry. We can talk about that later. Our plan. I'm sorry. You saved my life. And now? Auroran, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why no one is born a hero. And no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. The answer you seek. You are the inheritor of my name. The hero from the masters of the Nightwind, who shall fight for this generation. Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can take a lifetime like you. I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name. BD. Devotion. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth, having foretold his own death. The omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism, for at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sanhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. I am happy to see your plan advance one step further. Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom? I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human. So, was that what caused all his strange behavior earlier? मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन चालू है. No. How? नीचे के राउटर का वायर निकाल के देखो. टीवी पे लग नहीं रहा हूँ तो डायरेक्ट कनेक्शन करो.
this soul does not hail from that land or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night Kingdom. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right! You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid. Such as rebuilding the ley lines once more, at the cost of my own existence. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. Angels. But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. No wonder there are Seelies around here. A Seelie also helped us in the Night Kingdom. Few angels remain in Natlan, so the same is true of Seelies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. Moika, inheritor of Xbalanque's will, and leader of Natlan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken, and the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Say the word, and I will once again work to fulfill my mandate. You need only nod your head. For the sake— I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues, just like the consequences of using the Gnosis. That is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How— The situation hasn't gotten that dire yet. Why? Because I am a survivor of Conria. I've Conria? That's right. My family, my comrades, my homeland, were all lost to the Abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years.
You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings, their physical bodies the only connection to their former selves. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or, history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our... But as I was on the brink of death, I've been very fortunate to be well cared. No matter what path lies before us, we still have a destination. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessing. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I step... Even if you fail, you need only send someone. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me. You must have a profound connection to this land since you're so determined. But what are you really trying to protect? The land or its people? Pretty sure he wants to hear what you have to say, Traveler. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroran has inherited the memories of his forebearer, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under... Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life, but for now... All right, we should let everyone else know about the plan. Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's... Oof. You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. And they do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. The one you wish to know about? I call her the Ruler of Death. She helped Natlan establish the rules. It was also under her guidance that it was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade, which quite displeased the Almighty. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all. Self-pity? Please don't tell anyone I used that word. I'm just... You come to me with many questions, and you should be rewarded. I'm not familiar with that concept. Even I cannot create something from nothing. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option. You come to me with many questions. Phlogiston is Tavak's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm?
light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. You come to me with many questions. Ah, yes, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs. Young girl? What? You come to me with many questions. Ah, yes, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. Probably because the young girl. No matter. Young girl? What? इसकी बात कर रही जाता हूँ. Did I? You come to me with many questions. चलना है. Take it easy. In that case, allow me to formally welcome the we now face a common enemy. As for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. A magnanimous decision. We're back! Magnanimous. Seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. क्या 1000 points दिखा रहे हैं मेरे को भाई. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Aurora, we tracked down 3 scholars, Abarawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard. Seems like my own investigation. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, and if all else fails, we still have this plan as a last resort. But that means making everyone forget their past. We should... Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 5. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. I defended this land for quite some time, and, in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However... So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. It must be the mask. Even without the mask, my past appearance is long. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite... You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person,
He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Yes, you're the brother of the princess. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the princess saw me now, I doubt she would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed. And that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt... And I still lost. Still. It's a shame we never faced off 500 years ago. We could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. Her Majesty the Tsaritsa allows every Harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. Right! What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. Renova is a god whose existence predates any Archon. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The same principle applies to the Ruler of Death's power, with one notable distinction. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength, and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death. In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will When you put it that way, Paimon feels even more Alright, let's head back. Okay. Now that we're working together, we'll need to coordinate our efforts. I'll leave a... That will definitely help relieve some pressure. It's an order. Excellent. That hurts. क्या भाई क्या बहुत बड़ा है भाई इसके बाद एक और आना तकलीफ हो जाएगा आज नहीं हो रहा फिर ये बनते नहीं यार करेंगे It's definitely unusual and we should all be careful. खा क्या होगा फिर करेंगे If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, and what's someone's that? calling us. Sheena.
traveler? Take it easy. Weapon change कर रही हो? Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly at the forge. Well-made weapons and shields are vital for the survival of our people. I know we're under a lot of pressure. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't you all just take a break and I'll take care of the pieces. Hey, Shilona? Nothing I can handle. Just some rushed defective goods, that's all. Even the most skilled craftsmen make mistakes under pressure, and if you two want to avoid the same fate... You must be exhausted. Take it easy. Varian. Auroron. Granny? पड़ी. इसको तो पड़ी. नहीं पड़ी? What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now, where do I even begin? I'm sorry. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? Shoot. You couldn't wait to run off last time, and the time before that. Pretty sure I Hello Joey, apologized thanks for those subscribing times to too. my YouTube channel, bro. What Where are you, exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Joe, I think. Apologize to yourself for risking your life. Okay. I'm sorry. I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much. But I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. अभी A तक simple main thank part you नहीं isn't आया क्या? enough, but still. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. Anyway, don't feel Main too part कौन सा है? grateful. मेरे को क्या पता I यार? tampered with the bag to मैं copy तो a बस चल portion रहा of हूँ your story के साथ. memories. Oh, I और didn't मत बता notice. मेरे को, मैं देख लूँगा. Of course you didn't. You forget. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will. Huh. Not too shabby, grandson. Did the traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the talking. You're not off the hook just yet.
I told the traveler I was going to break your legs. 322 subs. हाँ I अभी meant किसी ने sub किया भाई. every part of it. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, a traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello. Yes. Looking after these little rascals is Yeah, rather yeah. exhausting. Taking care of the traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to इसकी thank बात सुनो. you, he can treat us all. Sounds great. We'll be there. वो बच तो गया यार पंच खाने से. मेरे को लगा अभी तो पेलते इसको, लेकिन नहीं, बच गया. बंदा बच गया. चल किस्मत अच्छी थी. हर जगह के बेड अच्छे रहते हैं. We should get some rest. Paimon has यार a feeling एनाजुमा we'll need it में for कहाँ सो रहे थे अपन? मेरे को याद नहीं आ रहा. एनाजुमा एक तो गया नया ready? स्टार्ट में. Yep. Let's ए go उसने meet भी the आप Lord बोला. of the Night. मैं तो अपने मर्जी से बोला. क्या कर रहे लोग? So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. Hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise than staying awake. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. But we ran into a problem. He's not from Natland, so there are no records of him in the Night Kingdom. I see. Mawika must अभी ये hold him in बोरिंग high पार्ट regard. खत्म होने वाला है. क्या होने It would वाला है? seem the two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do you believe this traveler to be deserving? Traveler to be deserving. Speak your mind. There are no others here. You are both my children. He is special. He saved Kachina and devoted himself to helping us avert this disaster. Natlan? Thank you, owes him a Stream debt. Elements, for your service. But बहुत that लेट debt करता है has not लेकिन been ठीक है. repaid, and with an ancient name, we can at least guarantee his safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate concepts throughout the Night Kingdom and condensing them into a heroic epic. Heroic epic. But Sounds nice. it takes time for the new concept to Heroic be integrated grade into weapon और that epic grade weapon को mix कर दिया उन्होंने. If Heroic the epic. ancient name is like a seed, then the life of the craftsman is the outer shell, serving as its protection. Once that process is complete, the seed will sprout, and having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task. And creating one for an outlander makes it even. Yes, because I believe forging this name will be well. We don't know how long we'll be able to hold back the. If giving up my life means that all the people of Natland can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. This
is a part of my duty. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it, because this could be the final step to victory. And you, Sidlali? The anxiety you feel. It's because you saw something, yes? You're not meant to see. Something you were not meant to see. So, you know. What is she talking about? मैंने फोन में एक्सप्लोर के नाम पे 5 प्राइमर्स के टेलीपोर्ट दिए. I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... using this power on the Pyro Archon has always been seen as a... And you did it anyway? What? Death. How? Shoot. A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained from the ruler of death. Considering its origins, the price of using that power... You're saying Malika is going to die in this war against the Abyss? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Sidlali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. जहाँ मौत लिखी होती है वहाँ मौत होती है. The ruler of death's power will allow Malika to triumph over the abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of death cares little for the time. इस मैच में और अभी सिर्फ पिटी में स्टार्ट मैं भी 65 पिटी पे हूँ. क्या कमी ना गिरी है इन्हें. Fate may be able to influence. न्यू मैप नहीं आया ना? But that is all the traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Malika knows about all this, doesn't she? Yes. I imagine she has long accepted this eventuality. Well, I can't. She's so strong. She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate, or... We shall have to wait and see. But I will curb my expectations. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment of absolute determination. We won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, we'll find a way to keep you alive. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the Abyss, and in the end, all will cease to exist. When you consider all of that, extending my life is meaningless. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, humanity will still do whatever it takes to survive today. Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right in esteeming you as special above others. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the traveler's experiences in this land, whether from the past or the future. With it, you can forge the ancient name you desire, and the traveler will also become a hero forever recorded in the memory of Natlan. Thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really? Thank you. Your thanks are unnecessary. This is time for you to leave. It's getting dark. I can't sleep with all the noise outside!
check it out. सीढ़ी से कौन उतरता है? Shilon and Lolly. We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. Just keep it with you during your time in Natlan. And eventually, it'll be full of your adventure. Really? Let Paimon see! Whoa, it's the two of us! And a sun in the middle. Oh, and that must be... Kachina? It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just... Sounds convenient! It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift. Oh, yeah. We'd feel... Oh, yeah. Don't worry, you two. It's... You know, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Just take it. Well, if you say... So soon? We can figure that out later. Take it easy. हाँ, ये भी क्वेस्ट है क्या? I see. I'll send reinforcements to those two locations. The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our... Understood. I'll spread the word. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes. It's not looking good. Let's Our forces have always go! been able to handle the sporadic attacks, but now there are more monsters than ever, and the attacks are more frequent. What about the scale? What areas are they targeting? All of Natlan. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? We won't last much longer, I know. What we're seeing now is the desperation of the Abyss. It knows we're only one hero. I don't have the strength to fight it right now. This is its best opportunity and its final chance. You're saying we just have to hold out for it? It'll be a long fight. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already left to rescue them, but they'll need reinforcements. All right. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. See, as an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle report. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. पायमन की वॉइस एक्टर की तारीफ करनी All right. पड़ेगी. No time to lose. Let's go! और कचीना की वॉइस. Where should we go? I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be... Can I leave them to you? Thank you. The hot air balloon is over there.
ये मेरे को लग रहा है कुछ होने वाला है, लग रहा है अभी ऐसी फीलिंग आ रही है। And we're off! Hey, this thing is pretty convenient. It's not only fast, but also saves us a lot of energy. मैप अच्छा पूरा इस वक्त रीजन दिखा रहे हैं नाटलान का। There are warriors fighting everywhere. Seems like chaos in the making. Good thing for those battle reports. ओ शूट, मैंने गलत कंट्रोलर लिया। मैं जाने का ट्राई कर रहा था, गिरने का, लेकिन गिर नहीं सकते। ओके ओके They must be trapped. Let's go help. मेरे को उतरने की इच्छा है, लेकिन उतर नहीं सकते ना। Reinforcements! Thank goodness! Gotcha. पास बच गया रे भाई, आया वो रेडार में आया, मेरे को लगा नहीं आएगा। Thank you for coming. We were almost at the breaking point. There were just too many monsters. They just kept coming, wave after wave. At least we got here in time. I know, but it's not that easy. A lot of people. Our cart was also attacked, and now our supplies are scattered everywhere. That's not important right now. We need to. I know, but these were medical supplies. What if they need them? It's them! Over here! We came to help, but looks like you don't need it. Now we can head straight to the next location. What other areas need... Here. Messengers from the Scions of the... If you see a messenger from the... Thanks! Now... Seems like you can hold your... Still looks like they could use some help here, though. It's all right. Don't delay your... But if we stay here too long, the monsters might come back. What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. अपने पे चॉइस है। Traveler, my mother's a doctor. I'm worried. Of course. Thank you. Take it easy. Do you get normal? Not at all. Oh, yeah. चॉइस बेस्ड, हाँ समझ गया। अपने अपने ऊपर है कि करना है, क्या करना है, लेकिन करना क्या है। Take it easy.
check the map. देखो वॉर में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। ये मैं देख रहा था क्या है वहां पे, बस मेरे को एक्सक्लेमेशन मार्क वाले पूरे खत्म करना है ना। अभी सिर्फ मेन वाले ये ऐसे ऐसे जो बताया उस पे करना है ना, कि इनकी पास जाना है मेरे को। देखो वॉर में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। उधर जाना है। Hey, Kanish just ran past. Kanish. He must be busy delivering messages. At least he didn't look hurt. बोल मत, उसकी आवाज यहाँ तक आने भी नहीं वाली। वैसे ही नॉर्मली उसकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ तक कैसे आएगी? This is it. Looks like a battle is in progress. Let's go help them. How much longer are these things gonna keep coming? We're reaching the breaking point! Oh, thank you so much. You came just in time. What's going on? We're on Yeah, seems like the Pyro Archon. You got here just in time. But what? wounded. This area was hit bad. We're housing the wounded in this house for now, but we're short on medicine. We don't know what to do next. We're sitting ducks if we stay here, but... Thank goodness you're here, though. You're right. That will take time, though. And some of the wounded can't walk. They might... Don't worry. Once we escort the first group, I'll call for reinforcements. That way, everyone can evacuate. Let's help them out here for now. Then we can head to the next. Oh, there's a messenger over there. Don't. Mommy can't go with you, my dear. She's hurt. Still. No, I won't go. Ah. Thanks for your help. Hang in there, you two. क्या चल रहा है यहाँ पे? Quick, over here. Follow me. Look, someone's surrounded. Quietly now. ऐसे में ऐलान का मजा आता है भाई। Thank you. Yeah, that was close. Thank you for coming all this way to help us, Doctor. Just doing my part. Doctor, wait, do you know Tapos? He's my son. What? No, he's fine. He's just worried about you. I see. I know it's dangerous to be out and about like this, but I just can't sit back and do nothing. How about this? I'll write to him and promise to team up with the next group of warriors I come across. I'll be safer that way. Sounds good. I'm sure he'll be relieved you're okay. Thank you for passing along. क्या? Free PlayStation Pro console available now. But 1 week to claim. What the hell? मेरे को नोटिफिकेशन आया, मैं देखना जरूरी था, फ्री लिखा था वहाँ पे। ये कौन सा मजाक चल रहा है मतलब भाई? Still no.
This is the place. Let's go help. Here comes the catch. Gotcha. Transfixed. अपनी शील्ड से बाहर आ कमी है तो यहाँ पे रहे। This is where busted. Gotcha. Not now. Oh, line to command. Everybody stand back. Busted. Game's up. Fun's over. Gotcha. एक को 3 जन मिलके मार रहे हैं, मारो ना कमी ना जल्दी। Thank you for coming. Fairly stable. What about the monster? Based on my that's why we sent. The messenger's here. Perfect. We were just waiting for the. There's so much that if you're not in a hurry. That's a decision. By the way, if you've got some time, I'd appreciate the. All right, let's. Witness my rise. Quietly now. Busted. Here comes the catch. Thanks to you, we managed to. Here's the current situation. If you have the मेरे को माउस की सेटिंग दिखा रहा था। Wow, there are so many people here. Looks like it really is getting too dangerous for people to stay out in the wild. Guess that means the situation isn't getting any better. Well, we'll just have to keep fighting. Quietly now. Busted. I'm going in. Transfixed. Things are about to get dicey. This is where you fall. Overruled. Oh, Kenichi, you're back! Yeah, it really feels like we're running short on people everywhere. Not that Paimon's complaining, it's...
Funny bug clinging to. Okay, that's enough out of you. मार पाए उसको. Yeah, she. Stretch your back, bro. Stretch your back. मेरे को 2 सेकंड दो थोड़ा stretch for me. To stretch my back. हाँ वो अच्छा लगा यार मजा आया. Good idea. Maybe we can see if the people around here need anything in the meantime. What do we need in the meantime? Looks like we're on the same page. Yep. There are a lot of people in here. Could they all be refugees? Oh, it's you two. Hey, you made a bit. Sure did. Plus, we made. It's so under tension. I managed to accept my fear, but I still want to ask you one last thing. Yeah, please. My life? Got it. Thank you again. My son wrote back to me and said things are under control on his anyway. My age me. आंटी को अजीब सा नहीं लगा कोई और जानवर बात कर रहा है आंटी से? Rest for a while. Want to get some rest, traveler? We have to head out again in a bit. Target acquired. Stars, shine for me. इतना मजा आता है मेरे को. Quietly now. Transfixed. Everlasting. हाँ मेरे को एलान का यूज करना था मैंने गलती से इसका कर दिया. Here comes the catch. कौन फटाके फोड़ रहा है यार? टाइम है कोई? There are too many of them. They just keep coming. Everybody stand back. Witness my rise. Don't be scared.
Oh shoot. इनका कमीना। नॉर्मल पीपल्स को तो ऐसे ही मार रहे हैं भाई वो लोग। वो कैरेक्टर प्लेबल रहा तो भाई क्या हो रहेगा क्या। Thanks. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame! Archon's on the case. What was that? वही क्या था वो। Laugh all you want, it's gonna eat you too. The fact that Deadpan Kanich is this nervous just goes to show how serious this really is. Everywhere. But the battle report said there are still people here who could use our help. So let's fight the monsters out. Gotcha. Quietly now. Everlasting as the moon. Stars, shine for me. My guiding stars. Gotcha. Transfixed. बस हो गया। Things are about to get dicey. और है कमीना। वहाँ पे लोग दिख रहे हैं। इसके नीचे छुपा है कोई। Over here! Come on, quick! Wake up! You gotta... Oh no! No! Don't come any closer! It's okay, sweetie. They're not monsters. I think they're here to help.
Thank you. What happened here? The Abyss had us surrounded. Luckily, these Fatui came to our rescue, and we started evacuating. But then that black fire shot out of the stadium, and that huge monstrosity appeared in the sky. Right after that, monsters suddenly... They couldn't fight them off, so they hit us here. Right. You need to get to the stadium. Thank you. Huh? Yeah. I'm on no. But anyway, right now, let's focus on getting them to the stadium. With any luck, there'll be an update waiting for us there. If not... This is war. Need the latest battle report, but as I understand, if you're free, please head. Look! Someone's still fighting! Laid bare. Busted. Gotcha. Have everybody stand back! Cole, mine's at the move. Take it easy. Game's up. Fun's over. पूरा एनर्जी में लिपटा हुआ है वो आधा करना है My turn. This is where you fall. It's you. यहाँ पे मर गए You came. After you left, some of them started evacuating the civilians, while the rest stayed behind to keep guard, but they're all dead. I'm the only survivor. We're done for now. The Abyss will attack again any minute. Hang in there. We'll think of something. Like what? None of the civilians have any combat experience. The monsters are gone for now, right? Get back inside! I know it's dangerous. That's what. Same. Huh? Can you spare some equipment for us? I've never been in a battle before, but I'm young and I can hold a weapon. That's gotta count for something. And I used to fight in the pilgrimage when I was a younger man. Admittedly, I never made it very far, but if you hand me a spear, I think the old... There are others willing to join us as well. I persuaded them to fight. We can't let the blood spilled by our warrior... We can't watch on as our heroes lose heart. We don't have much equipment left. Okay. With a few extra fighters, we should just... Everyone who's fighting? Be prepared. Yes, sir! Got it. Take our hot air balloon. You can use it to get to the stadium. I didn't have to play this scene when I No played. need. You'll have other people to save. Word? Okay, well... Try... Thank you, both. You've been a huge help. I am devastated by the deaths. We're not going down without a fight. Thanks. We will. I had a different one. कौन सा वाला? मतलब सब बच गए थे तेरे इसमें? तो मेरे को इनके साथ जाना है क्या?
नहीं, मैंने इसके पहले इनको रेस्क्यू किया मैंने, फिर इसके बाद जब एबिस का पूरा अटैक हुआ ऑल ऑन, वो फ्लेम डिसअपॉइंट ऐसा पूरा ब्लैक स्काई हो गया, उसके बाद का सीन है शायद तक। मैं जा नहीं सकता उनके साथ। मैं तो बराबर एक्सक्लेमेशन मार्क को फॉलो कर रहा हूँ यार, उसके अलावा कुछ किया नहीं मैंने। कुछ गलत किया मैंने, देखता। समझ नहीं आ रहा। Monsters everywhere you look and... Oh no! Looks like there's a Saurian corpse! Busted. Overruled. मेरा अलार्म ऑफ हुआ क्या? Gotcha. बहुत मरे भाई। Busted. The hearth. Now it's चॉइस बेस्ड है, अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है सब कुछ। teamwork is dreamwork. Gotcha. Things are about to get dicey. Busted. पता नहीं कहाँ फंस गया था। मतलब उनका मरना, मरेंगे कि बचेंगे अपने पे डिपेंड करता है यार। तो मैंने गलत चॉइसेस किया था। Gotcha. Game's up. Fun's over. Take it easy. Quietly now. Yup, okay. Guess you're the sole survivor, huh, buddy? There. Don't be scared. Head to the stadium. You're upset. Yeah, you're right. We have to keep going. The latest intel said the children of Echoes need support too. Let's... लेकिन जो एक्सक्लेमेशन मार्क थे वहीं पे तो गया यार मैंने उसके अलावा कुछ किया नहीं। अच्छा मैंने विदाउट टाइम पास किए, मैं तो इधर उधर कुछ घुमा नहीं बोलना ऐसा। These warriors are struggling. Quick, let's help them. Don't be scared. Go in. Take it easy. Busted. Quietly now. Things are about to get... What is going on? Background. यार कौन फोन कर रहा है? I hear children sing. Not now. Ah. Teamwork is dreamwork. दो मिनट रुक यार, मैं फोन लेकर आता हूँ। मेरे को ये फोन उठाना जरूरी है। हाँ हेलो। किया है ना मैंने। दो मिनट रुक यार।
क्या पता नहीं यार कहाँ आते अपन। Stars, shine for me. Take it easy. Quietly now. Here comes the catch. Busted. मेरे को इसको फोड़ना है ना। Quietly now. This is the second time you've had to come. Thanks to your efforts last time. But at this point, I think we're gonna have to cut our losses. Yeah, everyone needs to stick together. Best to regroup somewhere else. All right, time to evacuate. There's a volunteer unit here too. So first I need to ask them what... For anyone who still wants to fight on the front lines, those are the options. We're abandoning this base, and you're free to stay with the group. As of this moment, the Children of Echoes are reasonably well defended. Now then, anyone who wishes to keep fighting, show me... Did I not make myself clear? But if Natlan is destroyed, will there still be a home for us to return to? If anyone wants a future, it's on them to go out there and grab it. Period. No one wants to be that person who sat back. Very well. For Natlan. For Natlan. You heard them. This means we'll all be going to support the Children of Echoes. Great! Well, you all seem in good spirits, so that's encouraging. But still, please be careful. Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. Huh? Shoot! That creepy Abyss thing is raining down a dangerous-looking substance again! That's over towards people of the Springs territory. From what I've heard, their defenses have been Then let's head over and check on them! मेरे को हील करना है पहले। हाँ। तो क्या मेरे को 2 मिनट स्ट्रेच करने दे, मेरा पेट बहुत दर्द दे रही है। बहुत देर से बैठा हुआ यार समय। सिक्स स्टार 15 मिनट्स आओ मेरे बहुत दिन बाद इतने देर बैठा, मेरी पीठ दर्द दे रही है वो। थोड़ा रुकता हूँ। देख वहां पे जो एक साइड में जहाँ पे मरे तो मैं वो आउटकम चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता है? वो जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क रेड में दिख रहा था वहां पे मेरे को उसको प्रायोरिटी देकर उसके पास जाना था ना। ऐसा करना चाहिए था ना मेरे को। मैंने वो नहीं किया है कि नहीं?
एक जगह ही जा सकते हो, एक जगह ही जा सकते हो, तो फिर तू बोल रहा है ना कि मतलब चॉइस बेस्ड है, तो फिर मेरा आउटकम ऐसा मतलब यही आउटकम यही है क्या? मतलब स्टोरी के हिसाब से यही आउटकम आना चाहिए कि कुछ? अच्छा मतलब सबको बचा नहीं सकते, कुछ तो मरेगी ऐसा? I chose one side first and choose second. अच्छा तो मतलब एक साइड मैंने दूसरा जो साइड को मैंने बचाया, तो मतलब एक साइड मर गया और एक साइड बच गया, मैंने जिसको मैंने नहीं बचाया। दोनों को नहीं बचा सकता मैं। आ आ दोनों नहीं बचा सकते। मैं सोचा अभी से एकदम क्विट करके गेम बंद करके शुरू तो सोचा मैं। चल ठीक है, क्या कर सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लिख रहा था वहाँ हर जगह गया, और इन जगह तो जा नहीं सकते थे बोलना। हाँ चल लेट्स गो, पार्टी बदल लेता हूँ, इसका पूरा वो खत्म हो चुका है। किसको लेके जाते हैं? यहाँ का कुछ बताया नहीं उसने। दिमाग काम नहीं कर रहा है। नाविया ले गया था। Count me in. Step aside. Ito's back in town. Witness my magnificence. ये दोनों को इधर उधर करना था यार, चेंज करना भूल गया। चलो ना ना ये डेथ नंबर चेंज कर सकते हो अगर आप फास्ट करो तो। अच्छा लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता ना मैं, अभी सब कुछ चले गया हाथ से। यहाँ फास्ट आते तो ये लोग बच जाते हैं। अच्छा मैं वहां पे खड़ा था, उससे भी फर्क पड़ रहा है यार। मेरे को 2-3 बार फोन आया यार, मैं इधर उधर टाइम पास किया मैंने।
too many monsters. There are just too many. It's beyond anything we've seen before. Oh. ये वाला मिशन फेल होता है क्या? हाँ दर्शन, मिशन फेल होता है? नहीं होगा फेल। हाँ फेल हुआ रहता तो रीस्टार्ट कर रहे रहते तो अच्छे से कर लिया रहता अपन यार। Same content again. Do you wish to continue? Yes. नहीं यार रिस्टार्ट मत करना। मन कर रहा है यार, तू बोल रहा है स्लो किया है, मतलब फास्ट करूंगा तो आउटकम चेंज होगा। Traveler, this war is getting too much for my mind to take. Okay, let's do this! अभी मत करना, करो तो कब मैं करूं? अभी रहने दो, ऐसे बोल रहा, रहने दो। Oh, thank goodness, those people are still standing! The show begins! Let my name echo in song! Oni coming through! Bam! Huh! Cha! Cha! पाइमॉन है। Attaboy! A proper send-off! From the speed of watch out! Move out! You've got to get out of here! Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. But this thing, no one's seen anything like it before. It's like a part of that sky demon's body or something. Whatever it is, it seems like it can spawn abyssal pylons, and with them, a never-ending stream of abyss monsters. At this point,
Retreat looks like our best option. We're fighting a losing battle here. The stadium is our only hope. That's where the sacred flame is, which seems to be the one thing that well of abyssal energy is afraid of. The Pyro Archon is guarding the flame. As long as that continues, we still have hope. What's this? Water. And some snacks. You look like you need it. I'm guessing you've been supporting the fight all over the map? Sounds like you need a breather. We got enough people to hold our own here. And it's high time you took a break. Why don't you sit down and gather your strength for a minute? It's true. We've been fighting pretty much non-stop. What is it? Oh, you're right. It's your... Oh no, the monsters have already stormed in! Oh, it's you guys. Things are bad here. Something fell out of the sky that's impervious to our attacks. It's a good thing you did, otherwise we might not have made it in time. Kachina, he and I can deal with the remaining monsters and abyssal pylons. You should go catch up with the rest of the group before your parents start worrying about you. Stay safe, Kachina. कचीना की तो वॉइस लाइन सुनाई नहीं दे रहा, पता है मैं उसका पढ़ना भी भूल जा रहा. Come on, let's get this done. Bring it. Teamwork is dreamwork! Coming at ya! A proper send-off! From the Spina with love! Hey there! It's showtime! Let's roll! Watch out! Haha! Attack! That's the way! Coming at ya! Watch out! Strike a pose! Let the world collide! All right, let the mountain's veins boil! Watch out! Hey there! Hey there! Oh, coming through! क्या नाविया का क्रिट कहाँ गया? Attaboy! All right. Hear the echoes of the valley. Time to shine!
It's showtime! Yep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. Yeah, this is, good. We can evacuate shortly. I appreciate your help. How are things out there? Pretty... Some of the things I've seen, I don't know if I'll ever be able to get them out of my mind. Are we in Natlan doomed to this fate? I've never witnessed a full-scale abyss invasion before. I mean, I'd heard stories about the sky being painted black, but I always thought that was an exaggeration. Mawika has witnessed this all before, so she knew better than anyone the terror and despair an abyss invasion would bring. Yeah, and despite that, she's still facing it head-on. We've had to abandon our homes and chase the dying light of day, and maybe the only time we'll see the dawn again is in our dreams. But as long as there's even a sliver of hope, I am not gonna give up. We should catch up with the group. ये पार्ट से निकलते हैं तो फिर मैं निकलता हूँ यार. वो ईटों के पीछे वैसे रहता है, बस वो एनिमेशन रहता है ये. इसका अल्टीमेट यूज करने के बाद रहता है वो ज़्यादातर. China. What? Isn't that Chaska's tribe? She said she was gonna take Koichi home to rest for a while. But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. There is no spare manpower. At this, and with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there too. Then there'll be a battle on a scale much larger Story than ending पे है, anything खत्म we've करके seen जाना. so far. On the bright side, इसके बाद एक और part है. These aren't playing up at the moment. Means I can actually join in with the fighting. The crux of the issue is that the heart of the Abyss itself has joined the invasion. That's a power we just can't match. I have every faith in the courage of our people. The Natlanese will never give in to despair. But still, the fact is, our lives are more fragile than our spirits. Traveler Paimon knows what you're about to say. Yeah, Paimon sure is getting tired from all this flying, but it doesn't matter. Wherever you go, Paimon's going too. Yep, we'll leave the Children of Echoes to you guys. Flower Feather Clan, hang in there. We're coming. If there was ever a time to push ourselves to the limit, that time is now! अब करोगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा. रीस्टार्ट हो जाएगा तो कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पे देखते हैं. यार इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कुछ देखें. मैंने ये वाला वेपन कब दिया इसको?
Ah. What happened to her? She's covered in abyssal energy! Please, save her. How's that, Koichi? Koichi? Chaska, I used to think Mom and Dad were crazy for adopting you. I was the younger sibling, but I always felt like it was my job to help Mom and Dad take care of you. I thought I could set you free from the abyssal energy you struggled with. I guess I was pretty full of myself, huh? Thinking I could fix you when... well, we were always the same. Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. We'll be at the stadium in no time, okay? I'll carry you there. The abyssal contamination is gone now. Just rest, and you'll get better. I was always nagging you to slow down. Stop rushing headlong into things. I just didn't want anything to happen to you, or to anyone else because of you. I worried about you so much. But now, I realize I never really understood what it's like for you. The fact that you survived an abyssal contamination was a miracle. But it also left you in a constant state of agitation. The fact that we became family was another miracle. But with me worrying about you all the time, it feels like I just agitated you even further. No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. Do you hear me? All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. And I feel terrible because I really did want to get along as a family. It might take me some time, but I'll find a way to make it work. It's okay, Chaska. No need to apologize. You didn't do anything wrong. No one did. It's nobody's fault that things didn't turn out great. I get it now. So, no nagging from me this time. You keep forging ahead, sis. Never slow down, and never hold back. Spread your wings and fly free, like the fiercest kukasaur in the sky. Show the world who the bravest flower feather warrior is. Because that's who you are. And that's the sister I'm proud of. Koichi! Koichi! Koichi?
What happened? Okay, started where it left off. Okay, पूरा restart नहीं होता है. What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then a split second later, it disappeared. Koichi did say that Chaska needs to let कैसी us लगी leave abyssal now war? and then, बहुत लोग मरे यार. or she'll end up losing herself. But this time she wrestled back control. If only we were faster. Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for you. We could have gotten to her earlier, then you could have treated her before it was too... Wait. What's happening to Chaska? Final warrior. How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning, and each step forward has been an agonizing one. Maybe she would have been better off embracing her pain. But her journey goes on, and one question looms large in her mind. If she could rise above the layers of pain and ascend over the dark clouds of her mind, what then would she find? Maybe the glorious light of the sun, or maybe a dark, empty void. There is only one way to find out. She needs to spread her wings and soar to War अभी new बाकी है. heights. That is the true. मैंने वो कट सीन सेव किया है भाई. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured. And finally, transcended. क्या ये सब एक ऐसा No spoilers, of course. हाँ. Let's take Koichi somewhere safer. क्या सिर्फ दिख रहा है? ऐसा तो नहीं है भाई, सब बच चुके हैं. मतलब कोई मरा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अपन आगे देख रहे हैं. आप बताओ. हेलो हर्ष भाई, बहुत दिन. How much death count? देखा नहीं यार मैंने अभी. बहुत ज्यादा था इतना. Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. इसमें अलग डिसीजन से डेथ काउंट चेंज होता है. I'm sorry, Chaska. It's all right. भाई ये I'm far from the गैम्बलिंग only मेरे one going साथ through है this रोज right का. now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice, Archon, we need to hurry.
कहीं गया नहीं भाई, बस इधर ही हूँ। For this war to end. भाई ये क्या मुझे अभी थर्ड आईडी पे खेलना है ये आर्कन क्वेस्ट। भाई कहीं नहीं गया मैं। ओके डेथ काउंट दिखाओ, कैसे दिखाओ? 1897 ये टोटल वाला है कि एक्टिव मॉन्स्टर वाला? अच्छा वो तो एक्टिव मॉन्स्टर 1897 दिख रहा है। कम है अभी और बढ़ेगा वो? यार बहुत मरे यार, ये बोल रखते थे बचा सकता था, मैं बचा नहीं पाया। किधर से जाना है तुम्हें? हाँ कट सीन है, कट सीन है, कट सीन है तो बताओ, मैं एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। कट सीन है तो बताओ यार, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या लिखा है? डेथ काउंट दिखाओ। अच्छा कम है, अगर पाइमॉन चुप रहती तो 1000 लोग ज्यादा बचते हैं। कट सीन आने वाला है। ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया भाई, करा ना? हाँ चल स्टार्ट है। A bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. So ignite the spirit of victory for me. May no further lives be lost, and no one else made to suffer the loss of their loved ones. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. जापानीज कर लेना चाहिए था। Stone engraved in echoing peaks. अच्छा उनके दो जन की वॉइस नहीं दिखेंगे यार, छोड़ रहने दे, क्या कर सकता। Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. मैं नाइडा समान दिखता है, बस टैन स्किन है। Anointed with flames, she shone with the light of 1,000 stars. Now, guide me in my first step. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. Skip, yalla skip. कमीना skip का ऑप्शन नहीं दिया। My ये life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages, our moment has finally come. We unite as one. Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! War Mumbai. In
the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! मेरे को लगा फाइट सीन. Check map, click on any characters, and That click is on an outright character. scary level of power. So, from now on, all warriors will be able to resurrect themselves using the sacred flame. That's right. No more casualties. It's time to wipe the enemy off the face of the earth. And to reclaim our lost territory. सबके पास respawn point है अभी. हटना यार इसका. दिमाग खराब. वो बीच में बोलता नहीं है तो बीच में आ रहा हो. Paimon, traveler. I'm so grateful you got to us when you did. You gave Koichi the chance to say those words to me before the end. If I'd lost control out there in the wild, this counterattack might never have been possible. Probably best not to think about that. More importantly, how are you feeling now? Any better? Not really. But now's not the time to deal with it. In the spirit of VUCA, I have to rise above it. The conflict and suffering in me are there to test my character. My struggle will make me stronger. And make me the person Koichi believed I can be. All right, let's go show the Abyss what human beings are made of. They'll be sorry they messed with Natlan after we're through with them. Shower me with grit, a proper send-off from the Spina with love. Watch out! Burn that blast! Who wants some of this? Yes! See you at the rematch. कमी ना उसे 2 बार मारा. 2 सेकंड रुक मेरे को बैठना. क्या? नेम टारगेट ड्यूक क्या है भाई ये? भाई मेरा कैरेक्टर उड़ गया दूर से. Everybody stand back! Attack! Hey there! Coming at ya! Attack! ईटो गया नहीं, ईटो जिंदा है. ईटो को निकालूंगा नहीं मैं. वो अगर वो आया तो वो गया. इतना पक्का है. Strike a pose! Let's roll! Watch out! Oh, coming through! Attaboy! Is that all you got? Ooh, look at aerial support from Malika? Look how powerful she is now. It's borderline unfair. भाई नहीं जानता, बस भूल करके रखा है. भाई ईटो मैंने गलती से भूल गया था. ओके मैं अभी बताता हूँ. ईटो मेरे रेडार में था नहीं पुल करने के. मैं पेटी बिल्ड कर रहा था और ईटो मिल गया मुझे. That's the way. इसके अंदर नहीं जा सकता ना. Watch out! Hiya! Coming at ya! Attack! ऊपर देखूं. Way. Coming at ya! Use my power to destroy the Abyss tumors. Got it. Thanks for the backup.
ईटो मैंने भी गलती से पुल किया था लेकिन 30 पीटी उसको खेलना जानता हूँ अनलाइक सम पीपल ओके ओके Here we go. Oh, did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulani. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. रेड ऑन दे दे मुझे यार मैं थोड़ी बाट रहा हूँ मेरे पास नहीं है कुछ Freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. सुपर ओनी दिखाता हूँ A house coming in way too hot. Is it possible to mute him? Done. वो म्यूट पे ही है पाइमॉन Thank you. उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही Backup has arrived. All right, give him hell. Vengeance for Koichi. हटे नहीं गया वो इसका कमीना Teamwork is dreamwork. Strike a pose. Coming at ya. Hup. Attack! That's the way. Watch out! The enemy ranks are thinning. Time to double down. Use the Pyro Archon's power and show no mercy. My only regret is not pulling red horn. मतलब रेड हॉर्न के लिए तेरे पास प्राइमोस थे अब वैसे तूने गलती से पुल किया बोला ना तो क्या कर रही है बंदी Kachina, over here. आज पता नहीं यार कहाँ से इतने सारे व्यूअर्स आ रहे नहीं नॉर्मली तो 4-5-6 जन आए अपने नॉर्मली वाले लेकिन ये इतने सारे कहाँ से आए पता नहीं काउंट कितना दिख रहा है पता है यहाँ पे मेरे को 1518 दिख रहा है Granny, please go on ahead with the others. I just need some more time, I promise. टोटल 1518 दिख रहा है Oh, Roron! Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit! It's too dangerous! वजह से आया है सब मेरी ऑरा अलग है मेरी ऑरा ही अलग है तो वेपन बैनर फॉर इट कभी अभी रेडन आई तब फायर ऑफ ऑन Hey, you're back! That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to butcher a whole army of monsters. Everyone, death is now off the table. So charge! Let's give them everything we've got. मेरे को वो 4000 दिखा मेरी आंखें फट गई पता है The children of Echo's territory is secure. All monsters down. ये तो All बोल good नहीं here रही at the कुछ people of the springs too. We Masters of the Night Wind. वही are बोला also इसकी secure. आवाज को क्या हो गया Should I go support the Flower Feather clan? Things are still pretty rough over there. I'm already en route. No need. Already? But you were just at the stadium! Yeah, well, you have no idea how long I've been itching to bash some heads in. Oh! Fair enough. fair enough Ian-san, what should we do about the Collective of Plenty? Your home's a long ways away from the state. Oh, no need to worry. I just heard from Verisa. She says they're safe now.
मैक्सिमम कितना जा सकता है किसको पता है? सर्च कर ले भाई, गूगल पे सर्च करो क्या। हाईएस्ट डालते हैं, हाईएस्ट। रेडिट पे देख जा, रेडिट दिखा रहा है, रेडिट पोस्ट पे क्या स्पॉइलर है। इट कैन गो अराउंड 4K, हाईएस्ट 4K है और नॉर्मल 200K तक है। सॉरी 2K तक नॉर्मल है और 4K हाईएस्ट है। Yeah, their only game plan was to outnumber us, and that ain't gonna work now that we have the Ode of Resurrection on our side. इनसो आइकॉन क्वेस्ट में काजुआ वर्सेस रेडियन जैसा और मूवमेंट नहीं आया वापस गेम में। We ain't gonna let them get away with that. Friends, let's gather at the stadium. More abyss tumors have descended, all near the stadium. Let's split up and take them out. बस 300 कम थे 4000 हो जाते भाई। We need someone to guard the main entrance. एंड सिन्योरा डेथ, सिन्योरा तो भाई खतरनाक मरी थी। All right, this is the final battle. यार याला बोलूं नहीं दिखा मैं, जब भी बहुत तंग किया कमीनों ने। मेरे को लग रहा है कि इसको सच में फर्क नहीं पड़ रहा है। जला दिया मैं। कुछ करना नहीं है हमको, सब अपने आप हो रहा है। Who wants some of this? 4000 में सॉरी और 300 मर गए रहते तो 4000 हो गए रहते। these abyss monsters बाद में एबिस मॉन्स्टर को बाद में बताते हैं। बात सही है भाई, अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुमको बाद में अकेले में लेते हो, हर एक जगह जाके ढूंढ के मारेगा। ये वुल्फ वालों को तो पहले देखें। वो हिलिचर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, पता है क्या? They actually have designs of angels. Angels? रिकॉर्ड कर लिया भाई। काम है हाँ। फेक स्काई ईथर और लुमेन। बस अपने समान एक प्लेयर है जो सच्ची में दूसरे वर्ल्ड में डिसेंड करते हैं थ्रू गेम नेटवर्क, और मतलब ये सब कुछ रियल चल रहा है, सोचो। और हमने कहीं जाके लोगों को बचाया है।
वो अगर वो रेड वाले से अंदर जाती ना तो वो मेरे स्क्रीन से यहाँ पे आ जाते, पता है। अगर अंदर जाके ढूंढती तो रास्ता, यहाँ तक रास्ता मिल जाता उनको मेरी स्क्रीन तक का। लेकिन हम जिंदा है, डेवलपर ने होने नहीं दिया। Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious नाइट टाइम पे पीसेस victory. देख सकते हो मून के। It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. We emerge victorious from another crisis to declare, our beloved Natlan is saved! Woo! All right! Yoo-hoo! I must caution that this war is not yet over. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. For some reason, according to leaks, you can bike as a mobility option in a car. Oh man. तो कैसा लगा तुमको? सही था यार, लेकिन बहुत लोग मरे, अच्छा नहीं लग रहा था। Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. लोगों को The ऐसे abyssal ठोकते हैं यार, energy लेकिन there पता is नहीं है, too इससे मैं strong. थोड़ा अलग लगा। Contact with it would be instantly lethal to anyone else. Celestials refuse trouble. I'm sure you're all still fired up, and you must be eager to take the fight home to the enemy. But I must ask you to temper your ambitions. I will return victorious, for all of us. It's kind of a shame that we can't join him with a final showdown. Please, look at the bigger picture. Thanks to every one of you, we have already secured an enormous victory. Tonight, we should celebrate to our heart's content. I guess if our lives are no longer at risk, Death counter things इससे भी can ज़्यादा होगा। basically go back to normal, right? War. ना भाई। That's good enough for me. Beats having monsters everywhere. When the time comes, I will gather everyone here again. Now, let us also remember those who gave their lives fighting for our nation. Once the last dregs of the Abyss are wiped out, I intend to give them the grand funeral they deserve. An ancient name could never record the many who we lost. Man, thank you, But no Celestia, hero Vexa, of Nancy, Natlan thanks, should be Morvika, forgotten. and Purina dead, and needs them with the nails. If I may, वही मछली let's थी, लगता है पूरा let's have a हफ्ता moment of silence for the fallen. पड़ेगा, शांति अपना conquest. पूरा हफ्ता खेलना पड़ेगा। क्वेस्ट का टाइम धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। Lastly, there is one more person I must thank for his extraordinary support in our time of need, and that is the captain. Speaking in a personal capacity, I should like to offer my sincere congratulations on your victory. Well, everyone, please enjoy the victory feast. I hope it's a chance to relax your minds and rekindle your spirits, so that we may face what lies ahead with renewed vigor. I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. You remind me of the कहाँ से आया princess. भाई वो? Similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. I hope you will see her soon. Hey, Auroron! How are the Masters of the Nightwind doing? Granny Sea Lolly's been there the whole time, and she's a tough one. I think we should be fine. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. I should probably head back so I can pitch in. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। Do you need support from the Fatui? क्या पता उसका मास्क टूट जाएगा, उसका चेहरा दिखेगा, उसको कैसा मतलब दिखाए कि मतलब फिर बाद में हो जाएगा खेलने लायक, ऐसा कुछ।
Probably not. There are a lot of older शायद वो folks जूते in our पहना है इसलिए tribe, हाइट and बड़ी हो गई I शायद उसके suspect बिना they would जूते find your उतारे comrade's उसको गेम प्ले presence a रहेगा little distressing. Right, because often they look like a bunch of intimidating thugs. हाँ डांस लिप को भी जानता है ऐसा पता है तो डांस also लिप के in बारे my में बस tribe, सुना रहता है वो excessive use बोलता of है उससे elemental कभी मिला energy नहीं था बस is उसके bad बारे में for your सुना है eyesight. उसने ऐसा बोलता है Oh, right. Okay. डांस लिप ज़्यादा फेमस था मतलब You did a great job, Kachina. Oh, you're much more confident Captain now. will not be Seems like playable. winning the He's dying. pilgrimage gave you a real boost. हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसने बोला था उसकी बॉडी उससे भी बेकार शेप में है डांस लिप के मुकाबले I spoke to your mom and dad. लेकिन तभी भी वो They were आर्कॉन से singing लड़ता your वहाँ पे praises. खतरनाक They करके said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? उसका स्टोरी क्वेस्ट रहेगा शायद There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. Same situation for the Children of Echoes. चलाने लेके जाना है चलने उसके साथ वॉक के लिए जाना है यार इनका समझ में नहीं आ रहा Oh, that's a great idea. Let's hope that their अभी मेरे को भूख लग गई है पता है एक जन बचा है वॉकिंग कंट्रोल मिलेगा Unless you want to get punched in the face. What is it with you, Ahau? Why are you so incapable of being nice? capable of being nice if he's so strong how strong is the dance left वही तो क्या फिर dance left और कब आएगा भाई बहुत The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point. So क्या they पता didn't have देंगे as many देंगे कि भी monsters नहीं to deal देंगे with. From what I hear, they got अपनी off उम्मीद तोड़ relatively देंगे नहीं तो जितनी unscathed. उम्मीद जगाओगे कभी नहीं But it टेंशन might have वाली। been a different story if Chaska hadn't gotten there when she did. That's good to hear. All's well that ends well. Dance live with a name sword and hit each other. Ah, welcome. You seem a little out of sorts. I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Natland stretching out below me. Traveler की People sword dance everywhere, slip तो नहीं giving everything they had for a chance at victory. I just... If only I'd been quicker. Maybe they wouldn't have... And Koichi. Maybe she'd मतलब still... वो मिथोल ग्रेक के केस में बहुत कुछ बताया ना ये ईथा और स्काई दोनों का मेरे को देखना पड़ेगा डांस स्लिप स्वॉर्ड का नाम है I'm sorry. वो ईथा यूज तो नहीं करता था ऐसा तो Now नहीं is not the time for that. मतलब रियल में भी Fruit juice, right? Make it a large? True. My 500-year plan has almost come to fruition. स्वॉर्ड नहीं हो सकता ना लेकिन वो Just one last step उसका to go. ट्रैवल कंपेनियन था उसके बहन का या फिर भाई का जो भी बोल सकता Namely, है my final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so I'm not feeling a huge amount of pressure. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch. Are you always gonna have that kind of power from now on? Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to... Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. Correct. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all goes to plan, eternal peace. He's not gonna be playable like Sinara
We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. Anyway, there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful foes. मैं आया ऑफिस का काम करके। अरे भाई तू सोने गया था तो तेरी नींद हो गई? कितने देर सोया तू? Tirelessly supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? You know, it's that mindset that distinguishes the heroes in every story. They're the natural protagonists. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. You and I together, finally putting an end to— But I also don't want to take advantage of your good nature and ready— I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. My mind is— maybe I need another drink. And tell me what happened. I think final person. अपने को रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। I think there is an option. देख लेते हैं। मेरा कंट्रोलर ठीक हो जाएगा ना उस दिन। Hey, traveler, Paimon. There you are. I've been looking all over for you. उसका आवाज लेट आया कि मेरे को ऐसा लगा उसका आवाज लेट आया। What's up? Listen up. I have some— What? Are you serious? Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. But even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her. Okay, good. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power. But if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned drink. Go easy though, yep? Don't worry, I said a drink. That means just one. Last time भी उसने एक ही पी थी शायद तक, कि दो पी थी। एक ही कप देख रहा था वहाँ पे। कब चेंज भी तो। All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. What? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made the shot. The science of the canopy raised him tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. See this? I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Mollypo.
If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won, it's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer up. I'll get my own ancient name soon enough. And it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. What ancient name? Unless... Surely you don't mean Kiangozi? That was fantastic. I can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the Sacred Flame. And apparently it can change your personality. हर्ष भाई पहुंच ही गया है बस तू Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even if that job happens to be Archon. Just a little more, हाँ भाई. Come on, one more round. Continue. After the darkness will come the dawn. No one fights alone. No one fights alone. For Natlan! Look at the sky! It's getting brighter at last! We walk the righteous path, and the Pyro Archon will guide us. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargaining table. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No, a fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead, for only then can the price be paid. Those are the rules. Mine is a nation,
that will not yield to the Abyss. And it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of. Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do as I please as you might think. Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Xbalanque stole my power. That will not be a problem. Thank you. Come in. Nah. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? I'm surprised she was willing to help you. And by extension, me. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the Traveler still need one by this point? यहाँ पे रीलू और मंका का फोटो निकाला दोनों ट्विंस लगते हैं. That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness. बात तो सही है. अभी वो never known कमजोर है true तो उस पर peace. अटैक करना जरूरी है. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love you. Not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you. In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations. Good, but then I I will can join you in a promise battle. that it will work reliably on you. मेरे को नहीं लगता कोई है अपने पास ऑप्शन इसमें डिक्लाइन करने का. Whoa. Are we forgetting something here? What about Paimon? What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. वहाँ पे मैं स्क्रीन If you पॉज two भी नहीं go कर there सकता. पाइमॉन क्या together, करेगा अपन? You can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but... I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. मैंने कुछ अलग ही मीम If देख you रहा have हूँ. any other questions, please ask away. हाइट सेम है ना, थोड़ी सी छोटी है. No need to fret. I shall handle this. It's time to pull the trigger. Can't sleep? Let's go for a walk then. अच्छा उसके शोल्डर ज़्यादा अब वो देखते क्या हाइट बड़ी है उसकी. रेडियन से चेक करो और शिन्या. हाँ शियान क्लाउड रेट है ना. Stay close and दोनों की हाइट तो छोटी है. सॉरी मैंने पार्ट ही नहीं बदला.
क्लाउड इटेना में के बाद कंधे छोटे पड़ रहे हैं। उसकी हाइट बड़ी है, अब सच में बड़ी है उसकी हाइट। नहीं, इसके हील्स छोटे पड़ रहे हैं। ये बंदा बीच में आ रहा है। कभी ना ईटो खड़ा है वहां पे, देख। Let's finish this. भाई बहन तो दिखते हैं भाई ये दोनों। कपड़ों का स्टाइल भी थोड़ा डार्क में एक से ऐसे। जी भाई भी छोड़ा, मैं कुछ नहीं कर। इसलिए कॉलेज में पीछे बैठा था। ए भाई मैं कॉलेज जाता नहीं था। क्लोरीन है नहीं है बात। And the crowd goes wild. Wild. क्या करना है उसे? As I've said, if you have any other questions, please ask away. The work of rebuilding is underway, and people are flocking to join the effort. With everyone rallying together, I'm sure it won't be long before there's no trace left of the damage done by this war. The healing process, on the other hand, that's a bigger obstacle to overcome. Many are grieving, and there's simply no replacing the ones we lost. Just for that, As I the have. sun rises once more and we rediscover the ability to believe in the future, we must never forget their sacrifice. As I've said, if you have any other questions, please ask. False sky. I have heard. I think there's a lot of investigating to be done to understand what the fragments behind the sky are and why they were hidden in the first place. However, from what the Adventurers Guild tells me, neither the split sky phenomenon nor the fragments have ever been observed in any other. My guess is that the Heavenly Principles wants them kept a secret. I just hope they don't cause me any trouble over it. Oh, you should be fine. We did something much crazier back in Fontaine and we're still here. We are still here. Well, that's good to know. Anyway, the line I'm going with for the masses is astronomical anomaly. And I don't expect much of a backlash. Meanwhile, we can look into it at our own pace. As I've said, if you have any other questions, please ask away. That wasn't their souls we saw, but a snapshot of them in time. All the work of the ancient name engravers 500 years ago, who made some special modifications to their souls returned to the Night Kingdom long ago, and will have been reborn in Natland since, albeit in a different form. For all we know, they may have already lived many new lives by now, and so, even though we will never meet again, I think that gives another layer of meaning to the phrase "no one fights alone." As I've said, if you have any other questions, please. We have a temporary alliance, but I can tell that saving Natlan is not his only goal. Yeah, Paimon still doesn't get why saving Natlan would be so important to him in the first place. Unless he's just a good guy who wants to avoid another Conria. But somehow Paimon doubts it's that simple. I wouldn't worry too much. Based on all the interactions we've had with him and knowing more. Now, as I've said, if you have any other questions. I have no more questions. Leave the speaker chamber. The Outlander with deep ties to this land returns. And this time... The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the Ruler of Death. From what I know of her rules,
she will demand death in return. करती तो करना भी ऐसी I see. Fine. So, Natland still has a final battle to बात fight. तो सही है भाई. And I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natland's future, I need your help. किरण भाई वापस ले लेना बात, मतलब हाइड कर देना, नहीं तो कोई कमीरा आ जाएगा, झगड़ा करेगा अपन. पिली देवी मैं थोड़ी रहता हूँ. This story gonna be 24 hours. ये यहाँ पे कहाँ है? ट्रैवल क्रोनोसर्विस. चलो कुछ क्वेस्ट बचे हैं. मतलब टोटल कितना था मेरा डेथ काउंट, ऐसा पूछ रहे हैं. मैंने फोटो लिया है उसका. दिखाता हूँ. मेरा डेथ काउंट दिखाता हूँ है 1897 दिखा रहा है भाई. फाइनल तो यही था, इसके बाद कुछ दिखाया नहीं उसने. Don't underestimate the beetle. They can be some of the toughest little guys around. Yes, you can. Yes, you can. Want to know what's on this beetle's diet? Sweat and tears, that's what. That's how it gets stronger. I think we can all learn something from that. शायद किरण भाई. Best flavor in the world? The sweet, sweet taste of victory. And that's why I've never spent a single more on any of my snacks. I've won them all, fair and square. That's right. How many subs did you got today? I think 8. 14 थे, 13 थे शायद तक. 13. आठ या फिर 9 अगर 14 थे तो. Yup, pretty good. बहुत अच्छा है. Arataki numero uno ito here in the flesh. अरे हाँ, किरण ने भी एक नया सब्सक्राइब किया ना डबल फिर से. 8 मिले 8. 8 या फिर 9, क्योंकि 13 थे शायद तक. आई थिंक 13 या फिर 14 थे. अगर 13 थे तो 9 मिले, 14 थे तो 8 मिले. चलो यार मैं चाहता हूँ यार, भूख लगी है, खाना खाता हूँ मैं, फिर सोते हैं. कल मिलेंगे यार. वही 12 के बाद ही मिलूंगा तुमको थोड़ी देर में. 12 के बीच में मिल जाऊंगा. पुरीना बिल्ड देखना है. ऐसे भी ढंग से दिखेंगे अभी क्या वैसे. दिखा देता हूँ पुरीना. बॉडी बिल्डिंग. HP 44 के अराउंड है. मैं आला स्वॉर्ड यूज कर रहा हूँ, क्या रखा है. हाँ भाई वो खेलना है वो भी. ना C2 नहीं, C2 नहीं, C नहीं है कुछ भी. कॉन्स्टलेशन नहीं है.
उसको फंगस लग रहा है। ना 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 ना, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। तो चलो यार, मिलते हैं कल, मिलते हैं यार। मैं जा रहा हूँ, अभी थक गया मैं थोड़ी। क्रिट कम है ना, क्रिट अच्छा खासा ही है भाई। क्रिट रेट कम है बोल रहा है, 50 के आसपास है क्रिट रेट आई थिंक। चलो यार कल मिलते हैं यार, मेरे को आ रही है नींद और भूख। खाना खाता हूँ, सोता हूँ। तुम भी खाना खाओ यार। गुड नाइट यार, मिलते हैं कल। चलो यार मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, मिलते हैं।